control. Where were the cops? India Today sent its team of investigators from the Special Investigation Team to Ground Zero in Mewat. So we've got the Special Investigation from Nitin Jain and Muhammad Hizbullah from the India Today SIT, which attempts to unmask the villains of Haryana. A battleground of flames. Just a short drive from the national capital. Pitched battles between two communities rocked Nuh in Haryana's Mewat region on Monday, reaching even the tech hub of Gurugram. An India Today investigation has delved into the causes behind this destructive frenzy. Our probe reveals how forewarnings about possible communal flare-ups were ignored. This is Vishwajit, the district inspector of the CID. Vishwajit is responsible for intelligence gathering across Nuh. When our investigative team met him in his office, Vishwajit claimed to have formally warned the local authorities about potential trouble during the VHP Yatra. His department's specific warnings about the VHP's annual 130 kilometers Braj Mandal Yatra passing through Muslim-dominated Nuh in the present circumstances ignored. कल वाले जो रैली को लेकर कोई स्पेसिफिक इनपुट था आप लोगों की तरफ से? हाँ, स्पेसिफिक इनपुट था। वही ये लोग यात्रा निकालेंगे तो इनका कानून होगा कहीं कहीं। अच्छा, ये था। अगर ये निकलेंगे गांव के बीच से, एक तलवार ले आएंगे, फरसा ले आएंगे। तो क्या ये पहले से इनपुट आप लोगों ने नहीं दिया? सरकार को सब दे चुकी है। कितने दिन? आपको पता ही टाइम हफ्ता 10 दिन पहले ही तो हफ्ता 10 दिन पहले दे दिया। You heard that Nuh's CID gave its assessment of potential trouble during the VHP Yatra planned at Nuh on Monday. The district's CID inspector claimed the intel inputs he shared were not acted upon by law enforcement. A notorious cow vigilante linked to the Bajrang Dal, Monu Manesar, had earlier issued video messages about him participating in the Yatra. Police did not let him attend the event on Monday. In March, India Today exposed widespread extortion rackets of Gaurakshaks in Haryana. According to Nuh's CID chief, the activities of Gaurakshak squads had already infuriated residents of Nuh. Monu Manesar, the notorious cow vigilante, was named in the FIR in connection with the killing of two men, Junaid and Nasir, from Rajasthan's Bharatpur. Their bodies found charred in a burnt vehicle in Haryana's Bhiwani district on Feb 16th. Nuh's CID chief shared his assessment that the pent-up anger over the killings could burst forth. And then came a rumor about Monu Manesar's presence, which acted as a trigger. तो वहाँ ब्रीफ करने में उनको हैंडल करने में जो शुरुआती दौर में 60-70 जो भी है, वो कहीं कहीं अधिकारियों ने सोचा भाई चलो ये मान जाएंगे, खदेड़ देंगे, उसमें ये नॉर्मल ये ले लिया उनको। हाँ, फिर मोनू मानेसर ने आया, समझा देंगे यार, वो आ भी नहीं रहा था। लेकिन वो मानने वाले कहाँ थे? वो मोर्चा में वोट फोन कर दिया, भाई किसी ने अफवाह फैला दी, वो आ लिया मंदिर में, और यात्रा चलने वाली है। अच्छा। तो हम यात्रा रोकेंगे, उनका मकसद उस रास्ते को रोक करना था। अच्छा। जो मोड़ है जिससे जानी थी। कितने टाइम लगा था बिल्डअप होने में चीज़ों को? मतलब कल बिल्कुल लग गया था, 1 घंटे का। तो मोर्चा में वोट फोन कर दिया। कौन? कोई यहाँ के लोकल है ना। अच्छा। और वो बच्चे लगभग 17 साल से 21-22 साल की एज ग्रुप के थे। अच्छा। उनमें बड़ा मैच्योर था नहीं। Rioters rammed a bus into a cyber police station in Nuh,
now an infamous hub of cybercrime in the country. The district's intelligence chief reckons that the ongoing crackdown on cyber criminals, in addition to activities of the cow vigilantes, had already fueled passions in Nuh. दो तीन बातें थी लॉटरी का काम लेना जरूरत था हरियाणा के लोगों ने किया वो उसने किया नहीं दूसरा एक साइबर फ्रॉड का बड़ा सर्च अभियान चला था उसमें काफ़ी लोग ये दिक्कत आ रही है वो कृषि पर प्रतिबंध में से दुखी हैं अच्छा पुलिस तो हमारे घरों पर रेड करी पहले हम खुले चलते थे कई चीज़ों से हो रहते तो ये सोचते कि इसी बात को हम करके ऐसा करें कि आवागमन बंद कर दें दबाव हट जाए नहीं Kishan Kumar, the SHO of the police station under whose jurisdiction the unrest unfolded. When probed, he claimed he received no intel from his superiors about any potential trouble from the yatra. मतलब 100 भी पूरे नहीं थे और इतना बड़ा प्रोसेशन निकल रहा है, इतना बड़ा इंतजाम होना चाहिए था। सीआईडी वालों ने कोई पेपर चिट्ठी पत्री तो भेजी होगी आप लोग? मेरे पास कोई आपके पास पत्र चिट्ठी नहीं है? कोई ये भी तो आया होगा कि भाई इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, आप लोगों का ये आपका इंतजाम, कोई इंतजाम के बारे में? मेरे लेवल पर कोई बात नहीं, आपके लेवल पर इंतजाम का भी नहीं बताया ना? अगर ये होता भी इतना पता लग जाता है ये ऐसा हो जाएगा तो यात्रा नहीं रुक जाती। यात्रा पूरी इमरजेंसी थी क्या कोई होती तो ऊपर लेवल पे अपने तो बोले भाई अपने सेम थोड़ा ध्यान रखना वो कोई सबको। You heard Nuh Sadar's SHO admitting that police at his level received no warnings beforehand. In a separate conversation with our investigative team, Kishan Kumar explained how the available force was spread too thin across the yatra route. लिंक का पुलिस बंदोबस्त इतनी कम थी ऐसा पुलिस कम नहीं थी, जो फोर्स थी ना वो सारी लगी हुई थी। इन्हें पहले जो हरियाणा था बंगाल और जाना था नवी से सीधा खजाना वापस जाना था नवी ना पुनः कुछ पूरा तो कवर करना था। लंबाई बढ़ गई, यात्रा लंबी बढ़ गई, फोर्स तो वही थी, वो एक्स्ट्रा फोर्स थे नहीं। वो फोर्स 10 पॉइंट बढ़ने 50 पॉइंट बढ़ने के बाद 200 पॉइंट बढ़ गई, ऐसे नहीं। Scars of yet another devastating turmoil. A grim reminder of how intel oversight, inadequate law enforcement, social media manipulation can converge into a storm of violence. A report by Mohammad Hizbullah and Nitin Jain for India Today's Special Investigation Team. For reactions on this big India Today investigation, we're joined by some key players in Haryana politics. I want to welcome Bhupender Singh Hooda, the former Chief Minister of the state of Haryana. With us also is Yogendra Yadav, leader, founder of Swaraj India. He comes from the belt of Nuh and Mewat, representing the Bharatiya Janata Party, is its spokesperson from the Haryana BJP, Raman Malik. We've got Vikram Singh, former Director General of Police in Uttar Pradesh, well-known police officer. Shriraj Nair is a spokesperson of the Vishwa Hindu Parishad. Remember, the VHP and the Bajrang Dal are the ones who took out this yatra. And we've got Randeep Singh Surjewala, senior leader of the Congress, who I want to go across to first on this investigation, which shows that the local administration and the police had been forewarned. There was this yatra passing through communally sensitive areas, that security needed to be beefed up, and yet for some inexplicable reason, the inputs which were available were not acted on. People with weapons, sticks, throwing stones were allowed to take out this yatra, and mayhem broke out in Mewat. As someone who comes from the state, what do you think really went wrong, Mr. Surjewala? I have been repeatedly saying that the violence in Nuh Manesar and Gurugram is actually state manufactured.
It is failure of political leadership of Chief Minister Mr. Manohar Lal Khattar. Three things stand out. Number one, there was a LIU report, that is intelligence report, saying such an incident is bound to happen. Number two, the infamous goon Monu Manesar was a part thereof. Any sensible government would have either arrested him in anticipation of violence or at least would not have permitted him to participate here. Number three, the superintendent of police of Nuh was on leave. When you knew such a sensitive thing was happening, you had a report that violence will take place, you did not even call the rapid action force, which is situated only 2 kilometers away. That means, in order to gain political mileage, the BJP JJP government was actually permitting this violence to happen. And Rahulji, may I point out to you, we know that over 100 people died in the Arakshan agitation when the caste war happened in Haryana under the watch of Mr. Manohar Lal Khattar. He turned out to be a political beneficiary of the same in the last assembly election. Now, for the first time in 75 years history of India, a communal flare-up is happening in Haryana, something that is alien to Haryana. We are peace living, we have cohabitated with the Mewat people. There have never been any clashes. In fact, in the pre-partition day, Haryana portion was the only portion of India when, despite there being overwhelming Muslim population, there was never a communal clash. So this is a communal clash that is manufactured for political gain. It's a serious allegation I'm leveled. Let me go across to Raman Malik of the Bharatiya Janata Party to get a counter from him on what we are hearing from the Congress leader. Because how is it that Monu Manesar and his ilk put out videos announcing this rally? So it's not off the spur, sudden mobilization. This is planned. In our investigation, it emerges from the local CID. They claim they informed the local police and administration 8-10 days ago. The video came out a couple of days ago, and yet your government was so inept that you couldn't stop this. You didn't have adequate deployment on the ground. The rapid action force wasn't deployed. It just presents the state of Haryana and the Khattar government in very sorry light. Rahul, I'm very sorry to hear what Mr. Surjewala has said. I'm very sure he's now an alien to Haryana. Reason being that he's already migrated to Rajasthan to become an MP. But he's also failed as an MP to secure a position as an MLA twice here. So he does not know the correct situation. The correct situation has to be understood like this, that this so-called Monu Manesar shield that the Congress is taking and the others whom they are trying to protect is taking did not have to be in that one. Number two, the most important, neither was Monu Manesar. If Monu Manesar was the reason, why were women attacked, why were children attacked, why were elderly attacked, why was the police station attacked, why were homes attacked, why were businesses attacked? Was there any reason? No. Then, the second most important point, an MLA of the area is supposed to be one who bridges the gap and creates an atmosphere. The local reports, and you can send your people over to this place and find out what was the kind of role played by Memon Khan or Aftab, whether they were secular in nature to give support or whether they were communal in the manner which has been talked about by the entire population. The third point, sir, Memon Khan in the assembly of Haryana had categorically threatened and not just threatened about No, this but what kind you're of an saying, episode. Raman Malik, doesn't sound convincing for the simple reason that this is a law and order situation. Rahulji, Regardless of who takes law and order into their hands, your Let me system just should have finish, come down on him. Hindu or Muslim, how does it matter? If he's breaking the I'll law, tell you how come this down on him. Please let me finish, Rahulji. And the person he was referring to at that time in a derogatory manner was a Dalit MLA from BJP. Now, let's come to the basic issue. Now, you say that
Monu Manesar happens to be the reason why this all happened. No, I'm not So saying that. I'm saying the Vishwa Hindu Parishad and the Bajrang Dal planned this yatra. A man accused of being involved in murder was involved in this yatra. They took it That out. is what- Your government that slept is on the what job. the That's what I'm MNAs, saying. the You didn't Muslim do your job community has properly. said. That is what Surjewala ji said. That is what the Muslim communities are saying. That is what. But let's not forget, this is the same party where Kamalnath says this is a Muslim party. Rahul Gandhi says that. Forget it is, that. Muslim This is League nothing is to a do with secular Hindu-Muslim. party. It's a law and order situation. Your government should have done the job. But they You should have been bashed up doing it. whoever was trying to break the law. You should have arrested them, detained them, taken them into preventive custody. Why did you do that? Rahul, let the investigations happen, let the facts come out. Whoever is responsible, the acquisition and the Kurki would happen, the bulldozers would happen, everything would happen, irrespective of. That's not what the point, place sir. you That's come post from. facto. In 8 to 10, according to this India Today investigation, according to your local CID official, 8 to 10 days before this mobilization, you knew So that such a means yatra was that being was planned. planning This it. was passing from a The communally same thing sensitive which area, happened in that this Delhi. could potentially The same thing turn which happened communally now, a week strifeful. back in Why Delhi. did you not prepare for that? That's my question. Rahul, Delhi riots just after the COVID thing, and then this last week in the processions of Muharram and other things, the same pattern happens. Why is it always the same pattern that happens? And the same people come to protect it. Who's protecting it? What conspiracy are you talking about? You are in power. It's your job to enforce the law. Why did you not do that? We will Why was enforce the the rapid law. action force not deployed? We Why will was there enforce not the enough law. The police CRPF personnel on the is there. ground? Everything is Why are under people control. roaming around Haryana with guns? What's your answer to that, sir? Rahul, you should remember this Mewat area, the so-called claiming by Surjewala ji, he's forgotten that these people, when under Mr. Huda's leadership, when they were running the government, this was a kala pani for officers. It is after Manohar Lal ji who came into power that this area started improving. Otherwise, they used to say, isne Mewat bhej de. That was the dialect. No, but We which have is why improved you the got a situation, chance not to with come to Surjewala, power. Mr. You can't Huda. now blame what happened during Huda Saab's time. Let me go across to Bhupender Huda, former Chief Minister of the state of Haryana, the senior most Congress leader on the ground, leader of the opposition. Huda Saab, welcome. आपके विचार में मेवात, नूह, गुरुग्राम में जो हुआ, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? Where do you think the whole system collapsed? Huda Saab. देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है, क्योंकि कब ऐसी परिस्थिति होती है, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, और जब ऐसी कोई अंदेशा होता है तो सरकार पूरी तैयारी करती है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। कोई ऐसा कोई कदम नहीं लिया सरकार ने। दुर्घटना घटने के बाद जो है फोर्स भेजी है, सेंट्रल फोर्सेस भी आई हैं और वहाँ किया है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर मैं इसको कहूँगा, और लोगों से अपील करूँगा कि वो शांति बनाएं, कानून व्यवस्था को कायम रखने में मदद दें और भाईचारा कायम रखें। This is a Vishwa Hindu Parishad Bajrang Dal Yatra. Why in the world would you associate with the likes of Monu Manesar? The man is accused of heinous crimes. Your organization, which commands a strong following, should be disassociating from such criminals rather than glorifying them. Well, Rahul, first of all, let me tell you the yatra, the Shobha Yatra, which took place in Mewat was with full permission, and we are just beating around the bush. The real concern is the Mewat has become a mini Pakistan. It has become a terror breeding ground, and that's what we have seen. And here, the Congress spokesperson, Congress leader, Mr. Huda and Randeep ji, they are beating around the bush, and they are not ready to confess that this jihadi elements have been attacking these yatras for years together, and this has become a global pattern. And this is not only happening in India. Stone pelting, rioting, hooliganism is a part of a global Islamic terror network, and that's what is happening in Mewat. Now coming back to Monu Manesar, he is just an accused. And as Mr. Raman Malik rightly said, if there is a strong case again, like Congress has been trapping Hindus, left, right, and center without any kind of proof.
So if there is any concrete proof, Rajasthan police should come forward and talk to Haryana police and do the needful. But here, why are we not talking about the Islamic terror elements who have been attacking small kids, women and elderly persons? What wrong they did? So we are not getting into the core area of concern. It is the appeasement politics by the Congress and so-called secular party is encouraging this kind of terror elements that we have to understand. Shiraj Nair, if this is a simple protest, why do your protesters have guns, swords with them? Why are they throwing stones? Why are they brandishing sticks? See, who is throwing it is not from the VHP side or the Hindus. Sir, the images are on the screen. They are speaking for themselves. Look at what's playing on the screen. Who were at the receiving end? Who was throwing? You see the footage. I'm seeing the footage. I'm talking to you after seeing the footage. All of India is watching the footage. It is an organized attack. Please, there was nothing from the Hindu side. They were all peaceful. So what you're saying doesn't square with the images, swords, guns carried by the people who are passing through this yatra. That is what is caught on camera. You can't run away from the reality. Look at what's on the screen right now. I want to go across to Yogendra Yadav. Let the investigation happen. We are also saying. Yogendra Yadav, you were on the ground. You belong to this area. You've gone and spoken to people. What have you found out? The India Today investigation seems to suggest that at least 8 to 10 days before this yatra came, the LIU, the CID told the state administration and the police that there would be a build-up, that there may be violence, and yet we find that there was very limited police deployed on the ground. Yogendra Yadav. Rahul, I don't know about your investigation, but I'm not surprised at all by what you are telling me, because I can add two more things to it. Number one, this yatra, which is only a 3-year-old tradition, the year before last, this very yatra had seen a major communal situation in which a mazar was broken. Fortunately, things were brought under control. So, police and administration have good reasons to believe that this is a very sensitive issue. Number two, on the 27th of July, there was a peace committee meeting in Nuh where our colleagues had informed, my colleague is standing with me, he had informed the police and administration about the videos, about counter videos, about the fact that this is extremely tense situation and that they should reconsider giving permission. So, despite all this, not only was the permission given to carry out the yatra, but people actually carried arms, as India Today footage has also shown. Not just that, there was no sufficient law and order preparation when the pelting started. So I'm not surprised by what you are saying. Either it is a case of criminal negligence, or worse, that someone knew that this would happen and wanted it to happen so that the spark from Mewat can be used to ignite the rest of NCR. You know, the images are caught on camera. What happened is caught on camera in broad daylight. This is not some kind of riot or violence that happened in the dead of the night or their grainy CCTV images. Each one of their faces, I mean not each one, but many of their faces are caught on camera. If the police was serious, if the state administration is serious, they can act against them. The question is, are they serious? Or these are our boys and therefore let them be. That is the approach. If that's the approach, this case will never get fixed. If they are serious, what needs to be done is obvious as day. You can't be giving chavanprash to vandals. I'm going to slip into a break. I want to thank our special investigation team. In virtually no time, they mobilized faster than the local police, faster than local administration, and were able to bring this compelling investigation together. We'll keep following up on what happens on the ground next. Are you worried that artificial intelligence will render you jobless? A United Nations agency
assembled a group of robots at a news conference recently to address the concerns of human beings. 9 robots posed upright along with their creator at the podium in Geneva for what the International Telecommunication Union billed as the world's first news conference featuring humanoid social robots. The agency invited reporters to ask the robots questions that sparked discussion about the future of artificial intelligence. In one of the answers that could trouble our politicians, the robots suggested that they could be more efficient government leaders. I believe that humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency and effectiveness than human leaders. We don't have the same biases or emotions that can sometimes cloud decision-making and can process large amounts of data quickly in order to make the best decisions. When asked about the rise of humanoid robots, they advised caution. That's a difficult question. I think it depends on how they are used and what purpose they serve. We should be cautious, but also excited for the potential of these technologies to improve our lives in many ways. Organizers said the event was meant to showcase not just the capabilities, but also the limitations of robotics. To showcase the capabilities and how these technologies could support the UN SDGs, the Sustainable Development Goals. While robotics are not yet as mainstream as, say, generative AI, we wanted to demonstrate AI in action to you. In a world's first, this is the world's first press conference with 9, actually, we have an extra one, AI-enabled humanoid social robot. The event was part of the AI for Good Global Summit, meant to illustrate how new technology can support the UN's goals for sustainable development. Artificial intelligence has entered uncharted territory, and the world has started recognizing its abilities. Bureau Report, India Today. जमा करो जाना करो Galaxy Z Flip 5. Good morning and welcome to India Today Television. I'm Pooja Shali. Let's begin first with the headlines at the top of 9 a.m. Haryana is our top story of this morning bulletin. The cow vigilante Monu Manesar grilled by India Today. He denies a hand in the riots, instead decides to blame the local MLA. Today again, what will we see in the parliament? But apart from the uproar, it is the opposition MPs who have reached the president's door. It's the Manipur political fight at the door of President Draupadi Murmu. Also, the delegation that went to Manipur will be briefing the president. In other news, Siddaramaiah Sarkar is now under fire over freebies. The SC/ST welfare funds are allegedly diverted for the freebies. Karnataka minister refutes the charge. Bharatiya Janata Party calls Siddaramaiah government anti-poor. Tirupati temple versus Nandini showdown. Tirupati's famous laddus are losing the Nandini touch. The temple authorities to stop the milk products use of Nandini. The Bharatiya Janata Party quick to hit out on this at the Siddaramaiah government. In some international news, United States of America charges former President Donald Trump with conspiracy charges now to fraud the country and witness tampering in the 2020 Capitol Hill riots case. Big breaking news coming in from the southern state of Karnataka. Are we looking at a churn within the Karnataka Congress and how? This is a big scoop that we are bringing to you this morning. The Congress may ask Siddaramaiah's ministers to quit and fight Lok Sabha elections. Who could be the names then? Jarkioli, H.K. Patil, Muniappa may be the front runners, and we'll look at other names as well. Is the Congress party set to pit senior Siddaramaiah ministers in the Lok Sabha battle?
Let's go across to Nagarjun Dwarkanath, who brings us this big news. Nagarjun, I'm curious, why precisely the Karnataka Congress ministers? Is it because the victory has given them the confidence that they could take on the BJP at the centre level as well? What are the names that your sources have with regard to Karnataka Congress? Go ahead, Nagarjun. Good morning, Pooja. In fact, what we are picking up from our sources is that ministers who are strong in the district will be told to vacate their seat and fight the Lok Sabha elections. And this would be done closer to the Lok Sabha elections in April-May 2024. We have been told that Satish Jarkioli from Belgaum, H.K. Patil from Gadag Haveri, K.H. Muniappa from Kolar district. These are the sitting ministers who will be spoken to from the High Command is what we are told. Muniappa has already been an MP for 7 times. He lost in 2019. So considering these ministers have their clout in the district and every seat matters to Congress as well as the India alliance partners, and this is the strategy they want to take up, and it has been successful previously. Also in 2009, the Janata Party back then told the ministers to vacate their seat and contest Lok Sabha, and they succeeded. The same they want to replicate today as well. The Congress has shortlisted few ministers, but this is just a preliminary plan. Post the discussion, we'll have to see who would be okay to resign as a minister and contest the Lok Sabha polls, or would there be any changes. But preliminary information is they've shortlisted 3 to 4 people who would be the good candidate, right candidate for Lok Sabha in their district. Goes ahead. Remember, you first heard it here on India Today Television. Nagarjun breaking it for us. Who could be the big names? And importantly, is the Congress party banking on Karnataka Congress to have its victory or possibly as many MPs as possible in the 2024 Lok Sabha elections? Thank you very much, Nagarjun Dwarkanath. For the districts of Uttar Pradesh that border Haryana, where violence may have reported, now Uttar Pradesh districts are also on high alert. Remember, as the violence continues to spread in parts of Mewat and in Gurugram district as well, neighbouring Delhi, even Uttar Pradesh districts on the border have been put on high alert. 11 districts of Uttar Pradesh are on alert after the communal clashes, riots, arson, violence seen in Meerut, Noida, Meerut, Noida and Aligarh are on a high alert, I correct myself. This is where Uttar Pradesh is also ensuring that it does not take the situation lightly in case at all if there are repercussions or if there is an extension of this violence from Haryana into Uttar Pradesh as well. So UP already taking into consideration that no violence is reported from its state, no such communal clash is seen. 29 first information report and 116 arrests have been made till now in the riots in Haryana. That's the big news coming in for you, that the border districts of Uttar Pradesh currently are also on high alert so that there is no violence that is spread to other states as well. Remember, when it reaches Gurugram district, which borders Delhi, this definitely means that neighbouring states will have to be on alert as well. So till now, the violence was being reported, as you can see with visuals on your screen, primarily from Haryana's Nuh, which is also the Mewat area. But now, Gurugram's Badshahpur is also on the edge. Badshahpur is seen as the outskirts of Gurugram, closer to Sona, where shops were burnt, vehicles were set ablaze by a mob around 10:30 p.m. late last night. The mob ransacked shops belonging to a particular community, and at least 7 shops were set ablaze. The Rapid Action Force conducted a flag march to ensure law and order returns. These are some of the visuals on your screen that we see of the violence that has engulfed the Badshahpur area in Gurugram. Now, tensions, however, continues to prevail in Nuh. Security has been tightened, probatory orders have been extended. 116 people have been detained and arrested so far, with 5 people who have lost their life in Nuh. In the wake of communal flare-up in Haryana, Hindu right-wing group Bajrang Dal has decided to hold a nationwide agitation today. Hindu right-wing groups will also stage protests at multiple locations in Delhi NCR. हुआ क्या है? हुआ मैडम, नूह वाला घटना जो हुई है उसके अगेंस्ट यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे वो, पता नहीं अचानक कैसे और क्या माहौल हुआ कि अचानक हिंसा भड़क उठी।
और इसमें यहाँ सिलेंडर रात को ये दुकान बंद करने के बाद शटर तोड़े हैं। शटर तोड़ने के बाद सिलेंडर में ब्लास्ट किया है इन्होंने। वो एक परचूने की दुकान थी, वो भी बंद थी, उनका शटर का ताला तोड़कर वो भी ब्लास्ट किया है। उसमें भी सिलेंडर में पेट्रोल डाल के आग लगा दी, गाड़ी फूंक दी, स्कूटी फूंक दी, बाइक फूंक दी। मेरा घर अंदर है जी, मेरे घर पे भी तोड़ फोड़ की है। अफवाहों से बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पर्टिकुलरली जब कम्युनल टेंशन्स होती हैं तो अफवाहें बड़ा एक रोल अदा करती हैं। अगर बहुत ज़्यादा अफवाहें, गलत अफवाहें चलाई जाएं तो उससे हिंसा जो है, वायलेंस है, वो और ज़्यादा भड़क सकती है। इसके अलावा हमारी आगे कोशिश ये भी रहेगी कि जो शहर के, ज़िले के बाकी हिस्सों में, चाहे वो गुरुग्राम है, पटौदी है, वहाँ पे भी पीस कमेटीज़ को एक्टिवेट करके दोनों समुदाय की बैठक कराई जाएगी, ताकि लोगों में एक सौहार्द का माहौल बने और शांति स्थापित हो। जी, अभी स्थिति बहुत कुछ नियंत्रण के अंदर है। कहीं भी कोई भी छिटपुट जैसी घटना भी, वारदात नहीं हुई है। 2 बार पीस कमेटी की मीटिंग भी करवाई जा चुकी है और यहाँ पे जो भी फ्लैग मार्च है सुबह शाम किया जा रहा है, और जो सेंट्रल फोर्सेज प्रोवाइड की गई हैं राज्य सरकार के द्वारा, उन सबको भी जहाँ संवेदनशील क्षेत्र हैं उनके अंदर स्टेशन किया जा चुका है, और जो शरारती तत्व हैं उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। हमने अब तक इसमें करीब 16 FIR रजिस्टर करी हैं, और बाकी भी जो कंप्लेंट आ रही हैं उनके बेसिस पे हम FIR रजिस्टर करे जा रहे हैं। और जो भी इसमें शामिल तत्व थे तो उनको, बहुत सारे लोगों को इसमें डिटेन किया गया है, और टेक्निकल एविडेंस, वीडियो फुटेजेज और उनकी जो डाटा है उनके बेसिस पे हम उनको आगे वेरीफाई करके अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई करेंगे। बाजार बंद है और ऑलरेडी जैसे कि 144 की धारा हमारी लगी हुई है, और सारे हमारे प्राइवेट और सरकारी संस्थान बंद है। एहतियात के तौर पे इंटरनेट बंद किया गया है, और वहाँ पे हमारी टीम अभी वहाँ पे सभी जगह जो कुछ लोग घूम रहे थे उनको वहाँ पे उनको खदेड़ कर आई है, और वहाँ पर अभी स्थिति सामान्य है। सभी DSP और हम फोर्स लेके पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनी हुई है और लगातार हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो गश्त कर रही है। सभी की हमारी तरफ से अपील है, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अपने घरों पर ही रहें। मेवात में जो घटना घटी है उसको देखते हुए रोहतक में हमने पुलिस के पुख्ता प्रबंध किए हैं, जिसमें मुख्यतः जो हमारे जो हमारी मस्जिद हैं और ऐसे स्थान हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे हमने सुरक्षा के पुलिस डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया है। और इसके अतिरिक्त हमने अपने चौकी इंचार्ज के साथ हमने अलग से मुलाजिम डिप्लॉय किए हैं, ताकि किसी भी तरह की सूचना मिलने पे तुरंत चौकी इंचार्ज, हमारे SHOs और यहाँ तक कि हमारे जो गस्टेड ऑफिसर उनको भी डायरेक्शन दी है कि मौके पे पहुँच के स्थिति को काबू पाएँ। So the man in the center of this controversy and the showdown is one Monu Mane sir. He has a case filed against him. He's accused of allegedly killing 2 individuals on suspicion of cow smuggling. Now his video had come forth that he could be a part of this rally, and when the rally went through a minority dominated area in Nuh, that's where there was violence that has erupted. India Today grilled Monu Mane sir and spoke to him. Was he the one, the trigger which led to this communal flare up? He says he wasn't even there at the yatra. He has nothing to do with the communal clashes, and that AK-47 were used as assault rifles to target the Shobha Yatra in Nuh. He's also targeting a Muslim MLA of that area. When we questioned him, here's what he had to say. नमस्कार, मैं हूं जय किशन और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर। मोनू, सीधा सवाल पर आते हैं कि नूह में जो भी हिंसा भड़की है उसमें आपका नाम सामने आ रहा है। मोनू, ये जो भी नाम ले रहे हैं, जो आपने वीडियो देखी है, उस वीडियो में कोई भड़काऊ बयान या कोई भी भड़काऊ चीज उसमें तो है नहीं, लेकिन जो भी गो तस्कर है, जो वहां पे क्राइम करते हैं, ये सब उनका करा धरा है। साइबर क्राइम थाना फूंक दिया उन्होंने, सब उनकी बदौलत है। पर जो पिछली साल जो घाट मीका का इंसिडेंट हुआ नासिर जुनैद वाला, उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव था। फिर ऐसे में आपका वीडियो आना उसने उकसाने का काम करा है। कई जो आपके वीडियोस पे रिप्लाई आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके वीडियोस ने जो है वो उकसाने का काम करा है इस यात्रा में? कोई उकसाने का कार्य नहीं किया, ना मैं उस यात्रा में गया, क्योंकि हमारे अधिकारीगण थे उस यात्रा में, मैं था ही नहीं। हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हैं, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी सीधा फायरिंग की गई है। तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? हमारी हिंदू बहन बेटियों पर सीधा फायरिंग, और ये हिंदू समाज बिल्कुल नहीं सहेगा कि एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक तरह से पूरी तरह घेर कर गोलियां चलाना,
जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ और मेरे साथियों से मेरी बात भी हुई है कि 47 जैसे अधिक मतलब आधुनिक हथियारों से भी गोलियां चलाई गई हैं, लॉन्चर भी चलाए गए हैं, जो हमने सुना है, हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने बताया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। लेकिन अब ये जो 5 मौतें हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आपका वीडियो आया था और प्रशासन जो है उसको पता होने के बावजूद भी पुख्ता इंतजाम नहीं करे, तो क्या ये आपके भाषण को जिम्मेदार माने या प्रशासन की लापरवाही को माने? इसमें सारा जिम्मेवार वहां के मुस्लिम विधायक। कौन है ये मुस्लिम विधायक? आपने देखा होगा, उनकी न्यूज आ रही है, मामन खान है और कई विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मतलब मुस्लिमों को कह रहे हैं मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। लड़ाई लड़नी है तो जंग पे जाओ ना, यहाँ पे क्या लड़ाई लड़े हो। लेकिन क्या ये बात भी सही है कि गौ रक्षा के नाम पर आपने भी कानून को बार बार हाथ में लिया और नासिर जुनैद को जो है वो जो उसकी उस हत्या में भी आपका नाम आया था? नाम तो हर एक आ रहा है ना, नाम तो मेरा 2019 2016 में भी 302 में आ गया था। यहाँ पे मूसा भी मरता है ना, मूसा, उसमें भी मेरा 302 में नाम ले देते हैं। तो हरियाणा में तो एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदू हितैषी सरकार मानी जाती है, तो आपको लगता है ये जानबूझकर आपको फंसाया जा रहा है या आप वाकई में जो भी गौ रक्षा के नाम पर खिलवाड़ करेगा उसके लिए आप कानून हाथ में लेंगे? हमने आज तक प्रशासन के सहयोग से कार्य किया है, हम अपनी गौ माता को बचाते हैं और गौ माता को बचाना हमारा हिंदू धर्म और सनातनियों का कर्तव्य बनता है और उसके लिए हम मतलब एक तरह से बिल्कुल गायों को बचाएंगे, अपने धर्म को बचाएंगे। लेकिन ये जो घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें बड़ी कड़ी निंदा करता हूं मैं बहुत ही ज्यादा। और रही नासिर जुनैद की बात, उसमें अब तक जो जांच हुई है उसमें मैंने पहले भी बताया, मैंने सीसीटीवी भी जारी किया था कि मेरा उसमें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मैं उस मामले में मैं हूं नहीं। वो किसने जलाए, क्यों जलाए, क्या मामला था वो मुझे पता नहीं। मैंने तो न्यूज पे देखा कि वो गो तस्कर थे, 5,000 रुपए का इनाम था जो वो जलाए गए। लेकिन अब हम ये क्या बता सकते हैं कि किसने जलाए, क्यों जलाए। अब तो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही बयान है कि बजरंग दल वालों ने फूंक दिए, गोरक्षा दल हरियाणा वालों ने फूंक दिए, लेकिन ये सरासर गलत है। मोनू, मेरा इस आखिरी सवाल है आपसे कि क्या अब आप पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे? राजस्थान पुलिस को आपकी तलाश है और अन्य जगह इस मामले में आपका नाम लगातार आ रहा है, क्या आपने अपना पक्ष जो है वो प्रशासन के सामने रखा है? प्रशासन मुझे ये मतलब बिल्कुल निसंकोच कह सकता हूं कि राजस्थान पुलिस और राजस्थान प्रशासन बिल्कुल गलत नहीं करेगा। वो जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, जांच के विषय पे कर रहा है। अभी ये कोई है कि किसी एक आदमी को, व्यक्ति को दबाव दे देकर उसको गिरफ्तार कराया जाए कि ये मुलजिम है, लेकिन हमने किसी को मारा नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे हिंदू कार्यकर्ताओं के और जो पुलिस कर्मियों के गोली चलाई है, इनको क्या होगा? इनके भी तो कोई निर्णय होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं हमने उनको जलाया नहीं, लेकिन ये सरासर है आपके वीडियो। एक मतलब बाइकों का शोरूम लूट लिया जाता है, नई बाइकों को चोर ले जाते हैं, सारी चीज मतलब बेकार कर दी इन लोगों ने। तो आप वहां उस यात्रा में थे या नहीं थे? एक आखिरी सवाल मेरा आपके लिए था, क्या वहां आप जाने वाले थे, आपको रोक दिया गया? आपने क्यों लास्ट टाइम पे प्लान कैंसिल करा? मेरा लास्ट टाइम पे प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इसलिए था, मेरे से प्रशासनिक अधिकारियों का, मेरे अधिकारियों के पास मैसेज आया था और मेरे पास भी मैसेज आ गया था कि भाई साहब आप जाओगे तो वहां पे मतलब माहौल बिगड़ सकता है। तो मैंने सोचा कि हमारे मतलब यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, हमारे मंदिरों में पूजा होनी चाहिए। तो हम इसी वजह से नहीं गए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तो वहां पे माहौल खराब हो सकता है। सोशल मीडिया के द्वारा कोई सिलेंडर फोटो लगा रहा है कि हम बम से उड़ा देंगे, कोई बम का फोटो दिखा रहा है हम उड़ा देंगे 47 से। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रशासन से आपकी बात हुई थी? मेरे अधिकारियों की, आपके जो दल के जो अधिकारी है उनकी? जी, उनका मैसेज मेरे पास आया था, जिला प्रशासन से उनकी बात हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। So you heard the direct and crisp questions asked to Monu Manesar because he appears to be the reason for the trigger. But is there accountability enough? What was the police deployment? What about the administration's responsibility when specifically they knew a rally by the VHP was going to go through a minority-dominated area?
Let's go across to Shreya Chatterjee. She's now in Gurugram district where the violence yesterday night had spread to from Mewat. Shreya, where are you reporting from right now? What is the situation around you? How different is it from Mewat? Is the violence spreading, or are these isolated incidents in parts of Gurugram? Well, Pooja, these are isolated incidents. Sporadic incidents were reported yesterday all evening from different places of Gurugram, which included Sector 67, Sector 66, and also some of the areas of Badshahpur. Remember, this particular place where I am standing right now, this is a shop of a very elderly man, which was burnt to down. And actually, what we do understand that he's told us that at least 3 lakh amount of his stuff was completely burnt down. This was done yesterday, 4 p.m. in broad daylight. What is extremely shocking that during a communal tension, when the police is supposed to continue area domination, knowing that there is a chance of possible flare-up, that was not happening in places of Gurugram and other parts of Haryana. So the police is to be blamed when we see the entire scenario, how it transpired in Nuh, subsequently in Sona, and now also in Gurugram. All right, Shreya, go ahead. Can you continue to show us what you're showing there? It looks like the remnants of a shop burned down and is reflective of the situation on the ground. And it's terrible that an individual, a random citizen's property was targeted. Shreya, go ahead. Well, Pooja, I'm actually joined by the person whose shop was actually burned down. एक बार अगर आप बताएंगे कितने बजे के आसपास? 3 बजे। 3 बजे के आसपास। कितने लोग आए थे? 10-12 आदमी आते थे और वो मारकूट कर रहे थे। मैं तो यहाँ था नहीं, न पता 2-4 मिनट बाद उन्होंने आग लगा कर चले गए। पुलिस से कंप्लेन किया आपने? यहाँ पे पुलिस भी आई थी या नहीं? पुलिस भी आई थी। आई थी। हाँ, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, लेकिन रात को मेरे को बुला के ले गए थाने। वहाँ पे उन्होंने जो कुछ लिखाया और अपने पास। क्या बोला आपको? कंप्लेन करेंगे, आगे कार्रवाई होगी आपकी? अल्लाह बेहतर जाने, होगी ना होगी। मुझे तो लिख के मेरा एड्रेस पैसा रख लिया, मुझे तो कुछ दिया नहीं, ना कुछ बताया। कितना सामान होगा यहाँ पे? सामान बहुत था यहाँ, कूलर भी थे, रजाई गद्दे भी थे, थान भी थे। सारे आपके सामान यहीं पे थे? हाँ, सारा सामान, मेरे कपड़े लत्ते सारे सब कुछ जल गया मेरा। कितना रुपए का सामान होगा? अरे बहुत रुपए का सामान था। मैं तो रात दिन यहीं रहता था, मेरे तो घर भी कुछ ना, मेरा तो इसमें ही जो कुछ था। अरे इसमें तो 3 लाख का नुकसान है। क्या करूं बताओ। आप हमें थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ पे जब आपको पहले बोला गया कि दुकान बंद कर दो, कोई आके आपको बोला ये बात आप कह रहे थे हमें? नहीं, मालिक खुद आए। हाँ। मालिक जो मेरे से यहाँ का किराया लेते हैं। मालिक मतलब जिसके जगह पे आपकी दुकान है? वो खुद आए, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ से बंद करके तू तो यहाँ से निकल ले, मेरे प्लॉट पर चला जा। आपने पूछा नहीं कि क्यों वो कह रहे थे? नहीं, वो कह रहे कि हंगामा बहुत हो रहा है बादशाहपुर में, तू यहाँ से निकल ले। हाँ। तो वो कह के चले गए। हाँ। मैं अपने यहाँ से निकल गया बंद करके। हाँ। और मैं क्या करता, चाबी भी दे गए वो कि मेरे प्लॉट पर चला जा। तो मैं तो अंदर था यहाँ, और यहाँ तो बस वो 8-10 लोग आते जाते। एक दुकान से कल्लू जी कितने लोगों का घर चलता था? कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे पास 9 बच्चे हैं और कम से कम है तो 30-35 आदमियों का कुनबा है। सबका इसी से चलता, पोती पोता ये वो सबका इसी से चलता। सरकार से मांग करोगे आप कुछ? अब मैं मांग किससे करूं? कौन दे रहा है बताओ, मांग क्या करूं? मैंने तो बता दिया, जो मुझसे पूछे भैया मेरा इतना नुकसान है। क्यों लगता है आपको कि आपकी सुनवाई नहीं होगी? अल्लाह बेहतर जाने, होगी ना होगी, मैं कैसे कह दूं। हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। कितने सालों से आप ऐसी दुकान चलाते हो? ये मेरे पास 2021 से है यहाँ पे। और इसके पहले भी आप यही दुकान चलाते थे कहीं और? हाँ, यही चला था मैं पटौती पे। यहाँ पटौती है, पटौती चौक, वहाँ पे मेरी यही दुकान थी 1 साल हमारे। उससे पहले मैं रहता था दिल्ली, जमुना विहार, भजनपुरा। कल्लू जी, क्योंकि ये पूरी घटना मेवात से शुरू हुई थी, आप मेवात कभी गए हो? नहीं, हम नहीं गए, कभी नहीं गए, हम नहीं गए। मेवात से कोई ताल्लुक नहीं है? कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो मुरादाबाद का रहने वाला हूँ ना, तो मुझे तो वहाँ से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो जानता पहचानता भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो भगदड़ मची तो उसमें आ गई मेरी जुग्गी, तो और मेरा कोई कसूर नहीं। Pooja, this is the face
of what happens when a communal flare-up happens. This is the man I want to show him once again, who had absolutely nothing to do. He says he's never gone to Mewat, has no clue about it. He hails from Amroha. He has no fault of his. However, his shop has been completely burnt down. The question is on the Haryana police. Where were they? Why was there no area domination which could have actually averted such incidents that happened as late as yesterday evening? Shreya, I appreciate you getting this report, and I hope the government, the administration, the cops are looking at Kalluji here. His shop was burned down. He has nowhere to go. He had nothing to do with what was unfolding. An innocent citizen of this country, like many others who have suffered in Mewat, suffered in Gurugram district area and Sona, have lost their property, have lost the family members about the casualties that has happened. Who will be set accountable? Help needs to reach this man. The man's story heard on India Today, and we hope immediate help by the government, by the administration, must reach him as soon as possible. Shreya, thank you very much for now. Now remember, amid all of this, as is usually we have seen as a development, political showdown happens. Congress party in opposition is charging for the BJP at the state and the centre. Now here's what the Congress party and other opposition leaders are saying, and here's what the Bharatiya Janata Party, the ruling party netas of Haryana are saying. Listen in. कि मेवात का जो इतिहास रहा है, ये इतिहास हमेशा प्रो इंडिपेंडेंस हो, प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, हमेशा इस देश की अखंडता और एकता के साथ रहा। और आज नहीं, जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था तो भी मेवात के लोगों ने उस समय के शासकों के साथ खड़ा होकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई में काम किया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जब देश भर से पलायन चल रहा था तो महात्मा गांधी जी के आग्रह पर सब लोगों ने रुककर इस देश को और मजबूती से कैसे बढ़ाया जाए योगदान दिया है। जिस व्यक्ति की अगर सोच इस तरह की है तो सोच का कुछ नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्यपूर्ण है, शांति से निकल रहे हुए एक धार्मिक जुलूस पर जिस तरह से हमला होता है, पथराव होता है, गोलियां चलाई जाती है, लेकिन ये केवल नूह में नहीं होता। इस तरह की कितनी घटनाएं राजस्थान में होती है। आपने देखा होगा करौली में भगवान राम के रामनवमी के जुलूस पर किस तरह से सुनियोजित रूप से हमला हुआ। हमले के बाद हमलावरों ने पत्थर फेंके, कई गाड़ियां भर करके पत्थर ऊपर छतों पर रखे हुए थे। उनको कौन संरक्षण दे रहा था? किसके दबाव में पुलिस मौन और चुप थी? ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो ऐसा लगता है कि हुआ है, क्योंकि जो है ये ब्रजमंडल की जो यात्रा थी ये कोई पहली बार नहीं निकल रही है, ये पहले भी निकलती रही है। लेकिन सोची समझी साजिश के तहत जो है ये हमला किया गया है, उसकी पूरी जांच चल रही है और जांच के तहत जो भी इसके अंदर दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी सजा जो है उनको दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा है, वो पल पल की जानकारी को हासिल कर रहे हैं। पुलिस जाँच कर रही है, जो कोई भी इसके अंदर संलिप्त हो, चाहे किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, किसी भी जाति वर्ग से क्यों ना हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अगर और दुरुस्त होता तो मुझे लगता था कि कुछ हद तक इसके ऊपर जो है बहुत समय पर काबू पाया जा सकता था। ये जो साजिश हुई है, इन साजिशों में नाम मैं खट्टर साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। इस तरह की घटनाएं जब केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, घटनाएं बढ़ती जा रही है। So remember, there are a lot of allegations, counter-allegations that are coming in, but the fact on the ground is there was a communal flare-up that is now spreading to other parts of Haryana as well. Where was the police deployment? Why was the intelligence input, if there was, not taken into consideration? We are not here to just tell you who said what, but to put facts on the ground. Take a look at the special report to help you understand what exactly happened there in Haryana. A battleground of flames. Just a short drive from the national capital. Pitched battles between two communities rocked Nuh in Haryana's Mewat region on Monday, reaching even the tech hub of Gurugram. An India Today investigation has delved into the causes behind this destructive frenzy. Our probe reveals how forewarnings about possible communal flare-ups were ignored.
This is Vishwajit, the district inspector of the CID. Vishwajit is responsible for intelligence gathering across Nuh. When our investigative team met him in his office, Vishwajit claimed to have formally warned the local authorities about potential trouble during the VHP Yatra. His department's specific warnings about the VHP's annual 130 kilometers Braj Mandal Yatra passing through Muslim-dominated Nuh in the present circumstances ignored. कल वाले जो रैली को लेकर कोई स्पेसिफिक इनपुट था आप लोगों की तरफ से? हाँ, स्पेसिफिक इनपुट था। वही ये लोग यात्रा निकालेंगे तो इनका कानून होगा कहीं कहीं। अच्छा, ये था। अगर ये निकलेंगे गांव के बीच से, एक तलवार ले आएंगे, खुर्सा ले आएंगे। तो क्या ये पहले से इनपुट आप लोगों ने नहीं दिया? इनपुट थी, सरकार को सब दे चुकी थी। कितने दिन? आपको पता है टाइम हफ्ता 10 दिन पहले ही तो हफ्ता 10 दिन पहले दे दिया। You heard that Nuh's CID gave its assessment of potential trouble during the VHP Yatra planned at Nuh on Monday. The district's CID inspector claimed the intel inputs he shared were not acted upon by law enforcement. A notorious cow vigilante linked to the Bajrang Dal, Monu Manesar, had earlier issued video messages about him participating in the Yatra. Police did not let him attend the event on Monday. In March, India Today exposed widespread extortion rackets of Gaurakshaks in Haryana. According to Nuh's CID chief, the activities of Gaurakshak squads had already infuriated residents of Nuh. Monu Manesar, the notorious cow vigilante, was named in the FIR in connection with the killing of two men, Junaid and Nasir, from Rajasthan's Bharatpur. Their bodies found charred in a burnt vehicle in Haryana's Bhiwani district on Feb 16th. Nuh's CID chief shared his assessment that the pent-up anger over the killings could burst forth. And then came a rumor about Monu Manesar's presence, which acted as a trigger. तो वहाँ ब्रीफ करने में उनको हैंडल करने में जो शुरुआती 2060-70 जो भी हुए, वो कहीं कहीं अधिकारी ने सोचा भाई चलो ये मान जाएंगे, खदेड़ देंगे, उसमें ये नॉर्मल ये ले लिया उनको। हाँ, एक मोनू मानेसर नहीं आया, समझा देंगे यार, वो आ भी नहीं रहा था। लेकिन वो मानने वाले कहाँ थे? वो मोर्चा में फोन कर दिए, भाई किसी ने अफवाह फैला दी, वो आ लिया मंदिर पर, तो यात्रा चलने वाली है। अच्छा। तो हम यात्रा को रोकेंगे, उनका मकसद उस रास्ते को रोक करना था। अच्छा। जो मोड़ है जिससे जानी थी। कितने टाइम लगा था बिल्डअप होने में चीज़ों को? मतलब कल बिल्कुल लग गया था, 1 घंटे के आसपास। तो मोर्चा में फोन कर दिए, कौन? ये जो यहाँ के लोकल है ना। अच्छा। और वो बच्चे लगभग 17 साल से 21-22 साल की एज ग्रुप के थे। अच्छा। उनमें बड़ा मैच्योर था नहीं। Rioters rammed a bus into a cyber police station in Nuh, now an infamous hub of cybercrime in the country. The district's intelligence chief reckons that the ongoing crackdown on cyber criminals, in addition to activities of the cow vigilantes, had already fueled passions in Nuh. लाटरी का काम जोलन था, हरियाणा के लोगों ने किया, गोरखपुर ने किया। दूसरा एक साइबर फ्रॉड का बड़ा सर्च अभियान चला था, उसमें काफ़ी लोग ये दिक्कत आ रही है, वो कृषि पर प्रतिबंध में से दुखी हैं। अच्छा। इसको हमारे घरों पर रेड करिए, पहले हम खुले चलते थे, कई चीज़ों से हो लेते थे। ये सोचते कि इसी बात को हम करके ऐसा करें कि आवागमन बंद कर दें, दबाव हट जाए। Kishan Kumar, the SHO of the police station under whose jurisdiction the unrest unfolded. When probed, he claimed he received no intel from his superiors
about any potential trouble from the yatra. मतलब 100 भी पूरे नहीं थे और इतना बड़ा प्रोसेशन निकल रहा है, इतना बड़ा इंतजाम होना चाहिए था। सीआईडी वालों ने कोई पेपर चिट्ठी पत्री तो भेजी होगी आप लोग? सीआईडी ने मेरे पास कोई आपके पास पत्र चिट्ठी नहीं है? कोई ये भी तो आया होगा कि भाई इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, आप लोगों का ये आपका इंतजाम, कोई इंतजाम के बारे में? तो मेरे लेवल पर कोई बात नहीं, आपके लेवल पर इंतजाम का भी नहीं बताया। अगर ये होता भी इतना पता लग जाता है ये ऐसा हो जाएगा तो यात्रा नहीं रुक जाती। यात्रा पूरी इमरजेंसी क्या कोई होती तो ऊपर लेवल पे ऊपर तो बोले भाई अपने सेम थोड़ा ध्यान रखना। You heard Nuh Sadar's SHO admitting that police at his level received no warnings beforehand. In a separate conversation with our investigative team, Kishan Kumar explained how the available force was spread too thin across the yatra route. लेकिन कल पुलिस बंदोबस्त उतनी कम थी, ऐसा पुलिस कम नहीं थी, जो फोर्स थी ना वो सारी लगी हुई थी। इनसे पहले जो हरियाणा था, बंगाल और जवाहर था, उनमें से सीधा खजाना वापस आना नवी ना पूरा तो कवर कराना है। लंबाई बढ़ गई, यात्रा लंबी बढ़ गई, फोर्स तो वही थी, वो एक्स्ट्रा फोर्स थे नहीं। वो फोर्स 10 पॉइंट बढ़ने 50 पॉइंट बढ़ने के बाद 200 पॉइंट बढ़ गई, ऐसे नहीं। Scars of yet another devastating turmoil. A grim reminder of how intel oversight, inadequate law enforcement, social media manipulation can converge into a storm of violence. A report by Mohammad Hizbullah and Nitin Jain for India Today's Special Investigation Team. Haryana remains our ongoing coverage and we will continue to track the latest on that. I'm heading into a very short break. When I return, I take you to the southern state of Karnataka. There's a different kind of a political showdown there. The allegation coming in that the SC/ST funds of the state have been diverted to the freebies. That was the big announcement of the Congress government in the Karnataka. We get you the latest on that after a very short break. Don't go anywhere. Thank you for watching. India today is at ground zero in Torbang and the situation is so vulnerable. Simultaneously, there is accusation of using sophisticated weapons, but these young boys risking their lives and using these single barrel gun and double barrel gun. We love our land and our village, that's why we sacrifice our life. No one could ever imagine that in a state, in the same country, in the same district, we will ever see such situation which has become a battlefield, and I could say this is a war zone in Manipur. Grounded in journalism, on the ground reporting, only on India Today TV. International funds are a relatively new segment that we've seen flourishing very well in India. How do you see their growth over a period of time, and why is it that initially we have international funds that are focused mainly on the US markets? Of course, newer ones are looking at the Asian geography too. Yeah, I think the thesis comes from, portfolio theory. I think if you look at most investors outside of India, so if you look at investors in the UK or the US or even Southeast Asia, you'll see that a lot of their portfolio is devoted towards companies and stocks outside their home country. And I think in India, this was not the case. But I think today, people have realized that a part of your portfolio should be exposed towards stocks and sectors and companies outside of your home country. And what we've seen in the US markets in the last 10 years, 15 years, I think the potential to wealth creation is very, very high. I think I do believe that, yes, US is 60% of global GDP market cap. So I think international investing is a category. The first obvious market that you can look for is the US market, because you're looking at the biggest market, also a very fast growing market. The second thing to why I think US markets are important is because it's one market where you have global business models. If at just the S&P 500, which is the top
500 companies in the US, about 60%, 55 to 60% of their sales is actually happening outside the US. So I think when you're looking at global investing, you want to buy global stocks. And the center, the exchange or the country which holds the most amount of globally diversified business models happens to be the US, which is why I think US tends to be the first category. And now obviously, once you have the US in your portfolio, I think it makes sense to add, say, emerging markets or developed markets. But I think US tends to be the most popular because of how well diversified its capital markets are. Dholak, a popular percussion instrument in villages. While the dholak is easily available and simple to perform, there is hardly any formal training. In an innovative attempt to revive the beats of dholak, the Sangeet Natak Academy organized a workshop in Lucknow. अभी बॉम्बे में इसकी बहुत सेवा की जा रही है ढोलक की, और बॉलीवुड में इसको अपनाया गया, लेकिन यहाँ पे जो होना चाहिए जिस तरीके से शिक्षण कार्य ढोलक का वो नहीं हो पा रहा है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं जो अपना ढोलक सिखाने का कार्य कर रही हैं। बिकॉज आकाशवाणी जो है वो ऑडिशन भी लेता है, बी ग्रेड भी, हाई ग्रेड, बट वो व्यवस्था सिखाने की कोई नहीं कर रहा है। इस पर काफ़ी लोगों को फोक वालों को ध्यान देना चाहिए। Among the participants are senior citizens, a proof that age doesn't matter when it comes to learning. मुझे बहुत बड़ा शौक संगीत से रहा है जीवन में, और आज भी है। आज भी मैं व्यायाम करता हूँ, 2 घंटा मैं व्यायाम करता हूँ। ढोलक करके सीख करके समाज की सेवा करना चाहता हूँ, और समाज के साथ जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ी, धार्मिक कार्यों में, अन्य कार्यों में, हर जगह मैं जाने को उपस्थित हूँ। बस हमें आर्डर मिल जाए, मैं आदेश का पालन करूँगा। The 25 days workshop is spreading awareness about India's most popular folk instruments. जब ये कार्यशाला का पता चला तो पहले मेरी इच्छा नहीं हुई आने की, कि एक तो मैं दूर से आती हूँ कपूरथला से, तो 1 दिन आए, 2 दिन आए, अच्छा नहीं लगा। लेकिन जैसे जैसे हम आते गए उसके बाद मेरा थोड़ा सा विचार बदला। मुझे शौक़ हमेशा से था कि ढोलक सीखें, क्योंकि घरेलू फंक्शन में बहुत अच्छा नहीं बजा पाते थे। जब एक्सपर्ट नहीं होते थे तब हमारी बारी आती थी। The Sangeet Natak Academy workshop is giving dholak a new life. Bureau Report, India Today. All right, we have news coming in from the southern state of Karnataka, where remember there's a lot of churn also that's expected in the next few days. We have now the inside details. All right, we have more news coming in. This is the inside details of the Modi NDA meeting, and Prime Minister Modi asking the members of parliament to reach out to the Muslim women.
This is the big news that we are bringing to you at this hour. There is an outreach program that is coming forth from the Prime Minister, and this has been conveyed to his Member of Parliament. Remember, this is at a time when after the triple talaq abolition move, this has come as a fresh outreach program by the Prime Minister, and we are being told that these are the inside details about reaching out to Muslim women specifically. There's also a festival of Rakhi that's emerging, and could that be the moment in time when that outreach program by Prime Minister Modi will be sending out further messages about whether it's confidence that from the government will be conveyed to the women of the Muslim community after the triple talaq that was abolished, and many women from the Muslim community had appreciated that such a triple talaq practice was abolished. But now we are being told there's going to be even a further outreach program specifically to women of the community. It's going to be very important and imperative because it comes during the festival of Rakhi, which is in the last week of the month of August. And that is when they are going to likely roll out a program for the women of the minority community as well. So there's going to be all set for a outreach program by the Modi government, basically the NDA members of parliament, not just of the BJP, who have been conveyed by the Prime Minister to reach out to the women. We're getting information that Karnataka Chief Minister Siddaramaiah is en route Delhi. He has left from his residence in Bengaluru and is set to arrive for the national capital, Delhi, and there's a reason for that. The reason is that there is a meeting with the Congress leadership. They want to discuss election strategy for the 2024 Lok Sabha elections. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah leaving from his residence in Bengaluru to the national capital, Delhi, where there's going to be a meeting with the Congress High Command, the Congress leadership of the party, and they will be discussing election strategy for 2024 Lok Sabha polls. Now, of course, the question would be, why call Karnataka Chief Minister specifically? And there's a reason for that too. I want to go across to India Today's Nagarjun Dwarkanath. He joins me from Bengaluru for this live telecast. Nagarjun, just like you were telling us earlier, does it have to be about Karnataka Congress churn, where there could be mantris chosen for Lok Sabha? So both, Pooja, not just the Lok Sabha, but also the recent Congress CLP meet that happened, and many MLAs were unhappy with the way ministers were working. So High Command has intervened also, but this was scheduled much before is what the seniors are saying. So only the date change has happened. Now it is scheduled post the CLP meet, and Lok Sabha will be discussed extensively. They feel that the India Opposition Alliance and the Congress Party can win up to 15 to 18 seats out of the 28 in Lok Sabha in Karnataka, and every seat matters. They will be discussing about what roles each leader would play and in what regions. The CM and Deputy CM would take the charge for Lok Sabha, and ministers most likely would be asked to vacate the seat so that they can fight the Lok Sabha elections as well. So the target is 15 to 18, and that would be discussed, and each leader would be given a specific role is what we are told. All right, very interesting. Keep tracking all the latest, Nagarjun, about what is the strategy of the Karnataka Congress to be asked to come to Delhi to meet the Congress leadership. Remember, the Congress party in Karnataka ahead of elections had made a mega announcement of freebies, of welfare schemes as they called it. But now they are facing a lack of funds. There is this mega crunch of how to fund these freebies for which they need funding from the state government. Now there is, where we are being told, information coming in that the SC/ST welfare fund will be diverted to fulfill the poll guarantees. This is about 11,000 crore rupees that were meant earlier to for a certain welfare fund is now being fulfilled for the major poll guarantees, which were 5. Money will be diverted from the 34,293 crore rupees corpus of the SC and tribal sub-plans that mandates the government to spend about 24% of its total budget on the SC/ST welfare. So the 5 guarantees, giving you a background here, will cost around 52,000 crore rupees. They need the money to fund this. The government intends to divert from these earlier sub-plans and then allegedly transfer it for the freebies. So the BJP in opposition has quickly jumped in. They're slamming the Karnataka government, accusing them of being anti-poor, anti-SC/ST and with regard to diverting their funds.
The Congress is denying it, but the BJP claims Congress government was denying the rightful share of SC/ST families just for their implement ill-advised freebies that already they had been warned against. ये जरूरी था कि इस समय बेंगलुरु का, कर्नाटका का तेजी से विकास हो, लेकिन वहां जिस प्रकार की घोषणाएं करके सरकार बनाई गई, उसके दुष्परिणाम इतने कम समय में आज पूरा देश देख रहा है और चिंता अनुभव कर रहा है। जब कोई पार्टी अपने निहित स्वार्थों के लिए सरकार की तिजोरी खाली करती है, तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा राज्य के लोगों को होता है। हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य पर सवालिया निशान लग जाता है। कर्नाटका के विकास के लिए तिजोरी खाली है, पैसे ही नहीं है। भाइयों, ये देश के लिए बहुत चिंताजनक है। यही स्थिति राजस्थान में भी हम देख रहे हैं। वहां भी कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, विकास के काम ठप पड़े हैं। 5 गारंटी इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हर चीज का प्राइस हाइक किया, इसलिए ये गवर्नमेंट ये पूर के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, बैकवर्ड क्लास का खिलाफ है, सभी जनता के खिलाफ ये गवर्नमेंट चला रहा है, इसलिए हम विरोध करते हैं। I'm moving on now to some international news coming in, and that is a big one from United States of America. Former President of the USA, Donald Trump, has been now charged in a third criminal case. Remember, apart from the allegations of that he had decided to hide and hoard some of the confidential documents and also tampered with the surveillance footage, now Donald Trump has been indicted again in a special counsel's 2022 election interference probe on felony charges. And these charges include conspiracy to defraud the US government, witness tampering, conspiracy to obstruct official proceedings, and also attempt to obstruct transfer of power after losing 2020 presidential election. This is a 4-count indictment that reveals scathing details, could actually mean trouble for him with regard to the 2021 riot to remain in office. Now, he tried to subvert, allegedly, transfer power to Biden despite loss in 2020 elections. He even lied about his loss to instigate a mob. The US Justice Department underscored that there were about 6 co-conspirators that helped him. Remember, Trump could face maximum 55 years in prison if convicted on all charges. And this is when he wants to run again for the presidential race, which is slated for next year. Will this hamper his efforts or perhaps not make much of a difference? Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters, and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding. The attack on our nation's capital on January 6th, 2021 was an unprecedented assault on the seat of American democracy. As described in the indictment, it was fueled by lies. Lies by the defendant targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election. The men and women of law enforcement who defended the U.S. Capitol on January 6th are heroes. They are patriots and they are the very best of us. They did not just defend a building or the people sheltering in it. They put their lives on the line to defend who we are as a country and as a people. Will this mean the end of political career for Donald Trump, or could he actually emerge innocent and defiant even more? All right, I'm signing off this bulletin for now. Thank you so much for watching, but stay tuned. Our big investigation comes in after a very short break on Haryana. Was there an intelligence that was ignored ahead of the communal clash? Was the police deployment deliberately low in those areas? We get you that big probe expose after a very short break. Thank you for watching.
less than 2 months from now, the new iPhone 15 will be on sale across the world. While Business Today TV had reported on Friday about the price of its high-end models crossing the 2 lakh rupee mark for the first time, BTTV has got hold of more details about the much-anticipated Apple handset. It's likely to have the smallest bezel yet and could be rid of the infamous notch. Apart from the all-screen upgrade, the iPhone 15 and 15 Plus will also come packed with major camera improvements, and the traditional Lightning connector will give way to the faster USB-C. Tech Today's Danny De Cruz has more on all the new features expected. Danny, take it away. The new Apple iPhones are coming soon. Most likely, they will be here by September. So a new report has leaked a lot of information about the iPhone 15 series. So let's start with the more affordable iPhone 15 and iPhone 15 Plus models. The biggest change coming to these models is that Apple will finally do away with the notch. Both the iPhone 15 and iPhone 15 Plus will get the dynamic island, which was last seen in last year's Pro models. The cameras are getting a massive upgrade too, along with the performance. And yes, gone are the days of Lightning port. All new iPhones will be getting the USB Type-C for the first time. Now on to the Pro models, in which Apple is replacing the shiny frame with titanium. So your new iPhones will be strong too. The displays will also be better because of thinner bezels. And Apple is giving the camera hardware a substantial boost. The performance alone will make the iPhone 15 Pro models a compelling upgrade. They will become the first smartphones to use a 3nm chipset. All these upgrades make the new iPhone 15 models a good upgrade, but you will also have to shell out more money. Some models may even cross the rupees 2 lakh price point in India. All right, thanks for that, Danny. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. There is a moral question involved in this. Online gaming cannot be treated at the same level as essential commodities when it comes to taxation. Your first thoughts on this? Yeah, thanks, Siddharth. So, I just wanted to lay the facts here so that you and your viewers can get a sense of, the impact. The thing is that from the moment, so we have to look at the ecosystem, which is made up of the game developers, the gaming platforms, and then the gamers themselves, the consumers, right? So if you look at the impact on the gaming companies or the platforms, then moving from the methodology of valuation from GGR to the face value, as has been highlighted in the press con yesterday, that is going to be a 1100% impact. Coming to the gamer, for him or her, the participation in a game is going to get more expensive by 300% or 3x, 3 times more expensive. And for the gaming platform, coming back to the platforms, the revenue, the valuation methodology of face value will
get more, the percentage of tax, indirect tax, will be more than the revenue of the platform. And so that would be the impact. Just wanted to give you a sense of the impact across the gamer and the gaming platform community. Okay, from your answers, it clearly means that the sector has been dealt a death blow. Do you see it even surviving with the kind of numbers that you have just shared with us? No, I do not know of any precedent of any other industry or sector that could, that could buffer in or factor in such a impact, such a high impact. Moving from gross gaming revenue methodology, and the rate from 18% to 28 is fine, which is about 50 or percent. Can be factored into, but 1100% I think is I do not know. I mean, if you are aware of any precedent for any other industry also, there does not seem to be any. So that I think, but at the same time, we are hopeful. Now, what will happen is inadvertently the gamer would veer towards. That is not the intent, but inadvertently they will veer towards platforms that that do not pay GST taxation. Good morning and a warm welcome to India Today. I'm Paulami Saha. These are the headlines we're tracking at the top of this hour. Car vigilante Monu Manisa denies hand in Haryana riots, blames Nuh Congress MLA. Deputy Chief Minister Dushyant Chautala blames organisers for the violence. Manipur political fight at President's door. 21 opposition members of parliament head to Rashtrapati Bhavan. Opposition MPs reject short duration debate. Siddaramaiah Sarkara under fire amid massive fund crunch. SC/ST welfare funds diverted for freebies. Karnataka minister refutes charges. BJP calls Siddaramaiah government anti-poor. US charges former President Donald Trump with conspiracy to fraud the country and witness tampering in 2020 Capitol Hill riots case. News coming in right now. Massive fire at Hyderabad showroom. A fire at a shopping complex in Hyderabad. Several fire tenders have been rushed to the spot. Firefighters are conducting rescue operations. You can see that fire which has engulfed that shopping complex in Hyderabad. Several fire tenders are at the spot right now trying to douse that fire, and rescue operations are underway. We are yet to ascertain if there are any people who are stuck inside the mall at the moment, but you can see the size of that blaze on your screens right now. A massive fire at a Hyderabad showroom. This is a shopping complex in the capital city of Hyderabad, and you can see those fire tenders who are climbing up in order to in fact douse the fire and rescue if anyone is trapped inside the building at the moment. We're trying to get more details from our reporters and our colleagues on the ground, but you can see the size of that blaze over there. You can see the fire that has engulfed that shopping complex and the black smoke which is of course emanating from that building at the moment, which gives you a sense of the size of this blaze.
where you can see fire tenders who in fact have been rushed to the spot and are conducting rescue operations and are also engaged in trying to douse the flame. Fire tenders have been rushed to that spot right now. This is a showroom, a shopping complex in the city of Hyderabad, which in fact has been engulfed in this blaze this morning. We're trying to, of course, get more details from the ground as to what caused this fire as well. What is the reason behind this fire inside this shopping complex? But you can see, of course, the flames that are emerging from the building gives you a sense of the size of this blaze, which, of course, the firefighters right now are totally engaged in dousing. We'll try and get a report on this from the ground as to when, in fact, this fire was reported to the authorities, what time this morning, and, of course, what time the firefighters reached the spot to douse the flame. News coming in right now. A day after Modi Pawar bonhomie in Pune, Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao hits out at Sharad Pawar, says Sharad Pawar joined hands with the BJP. KCR says, and I quote, India, quote unquote, calls us BJP's B team. What is Pawar doing? So that is, of course, the pot shot that Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao has taken against Sharad Pawar, saying if the India alliance calls us, the BRS, BJP's B team, then what is Mr. Pawar doing? Remember that Sharad Pawar shared the dais with Prime Minister Narendra Modi in Pune yesterday at the Lokmanya Tilak Award, which was conferred upon by the trust in fact, on Prime Minister Modi. Let's listen in to what the Telangana Chief Minister had to say. हम किसी के तरफ नहीं है, किसी के तरफ रहना भी नहीं चाहते। हम अकेले नहीं है, हमारे और मित्र भी है। हमारा ये मन है। ये इंडिया और ये एनडीए सब देख चुके हैं ना। कौन सा नया इंडिया है? ये तो 50 साल राज किया हुआ है। सर, महाराष्ट्र चुनाव में क्या होगा? समझ गए? कांग्रेस ने देश को ऊपर पूरा राज्यों पे और पूरे दिल्ली पे उनका 50 साल का कब्जा था। क्या किया क्या नहीं किया हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, बखूब मेरे से अच्छे जानते हैं। उसके बाद में एनडीए काफ़ी टाइम में उनको 16 साल टाइम मिला। उस समय में 6-7 साल थे, अभी 10 साल कट रही है, 10वां साल है ये। क्या किया, इनका परिणाम क्या मिला? My colleague Apurva is joining me live this morning on this comment which K. Chandrasekhar Rao has made, while the BRS, of course, is adopting its independent stance in Parliament. K. Chandrasekhar Rao, the Chief Minister, of course, has hit out at the India alliance, saying clearly it's apparent who is BJP's B team. Well, follow me, strong statements that are coming in from KCR. In fact, this is right after he had gone on a day's tour to Maharashtra. He, in fact, met with several leaders from Maharashtra as well. And while commenting on the NDA alliance as well as the Congress-led alliance in across various states, he says that BRS is standing alone. It is neither in the alliance of the NDA or with the alliance of India. That's what he's also said. He said that yes, there needs to be a change here in the country. Definitely not that not the change that either of these, that is the NDA alliance or the India alliance, can be able to bring. That's what he said. Also commenting on either of the alliances, KCR has also gone on to state that neither of them, neither of the parties or the alliance parties have been able to do any good for the people in the last 50 odd years, and that the new India that they claim to be speaking is in fact false, but rather there needs to be an change that is important. Apurva, thank you for bringing us all of those details. So K. Chandrasekhar Rao there hitting out at Sharad Pawar and the India alliance, saying if we're called BJP's B team, what exactly was Mr. Pawar doing with Narendra Modi?
Shifting focus now, let's take you through all the top developments coming in from violence-hit Nuh. Haryana's Nuh remained gripped in tension for a third day. Curfew has been extended. 116 people have been arrested so far. At least 5 people were killed in the Nuh violence. Nuh's violence has rocked Gurugram as well. Shops set ablaze, vehicles burned. Mobs ransacked shops belonging to a particular community. At least 7 stores were set on fire. Cops conducted peace flag march. Hindu groups have called for a Mahapanchayat in the wake of the violence. Hindu groups will also stage a protest at multiple locations in the Delhi NCR. Agitation also includes a yatra plan from Manesar as the situation remains fragile in Mewat. Monu Manesar, cow vigilante and lynching accused who's at the center of the violence, claims he wasn't present at the yatra and that the violence was stoked by Nuh's Muslim leaders, including Congress's Mamman Khan. Amid communal flare in Nuh, Haryana Deputy Chief Minister has come out in support of the people of the region, blames the rally organisers for the chaos in Haryana, says they didn't give proper estimation of the crowds to the district administration. Now, after Haryana's Nuh, Gurugram's Badshahpur is on the edge. Shops were burnt, vehicles set ablaze by a mob around 10:30 p.m. last night. The mob ransacked shops belonging to a particular community and at least 7 shops were set ablaze. Rapid Action Force conducted flag march in Badshahpur as violence gripped the region. Tension continues to prevail in Nuh as well after massive violence unfurled in the area. Security has been beefed up and prohibitory orders have been extended in several areas. 116 people have been arrested so far and at least 5 people were killed in the Nuh violence. In the wake of the Haryana communal flare-up, Badshahpur has decided to hold a nationwide agitation today. Hindu groups will also stage protests at multiple locations in Delhi and the national capital region. हुआ क्या? हुआ मैडम नुह वाला घटना जो हुई है उसके अगेंस्ट यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे वो पता नहीं अचानक कैसे और क्या माहौल हुआ कि अचानक हिंसा भड़क उठी और इसमें यहाँ सिलेंडर रात को ये दुकान बंद करने के बाद शटर तोड़े हैं शटर तोड़ने के बाद सिलेंडर में ब्लास्ट किया है इन्होंने वो एक परचूने की दुकान थी वो भी बंद थी उनका शटर का ताला तोड़कर वो भी ब्लास्ट किया है उसमें भी सिलेंडर में पेट्रोल डाल के आग लगा दी गाड़ी फूंक दी स्कूटी फूंक दी बाइक फूंक दी मेरा घर अंदर है जी मेरे घर पे भी तोड़ फोड़ की है। अफवाहों से बिल्कुल ध्यान ना दें क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पर्टिकुलरली जब कम्युनल टेंशन्स होती हैं तो अफवाहें बड़ा एक रोल अदा करती हैं। अगर बहुत ज़्यादा अफवाहें गलत अफवाहें चलाई जाएं तो उससे हिंसा जो है वायलेंस है वो और ज़्यादा भड़क सकती है। इसके अलावा हमारी आगे कोशिश ये भी रहेगी कि जो शहर के ज़िले के बाकी हिस्सों में चाहे वो गुरुग्राम है पटौदी है वहाँ पे भी पीस कमेटीज़ को एक्टिवेट करके दोनों समुदाय की बैठक कराई जाएगी ताकि लोगों में एक सौहार्द का माहौल बने और शांति स्थापित हो। जी अभी स्थिति बहुत कुछ नियंत्रण के अंदर है कहीं भी कोई भी छिटपुट जैसी घटना भी वारदात नहीं हुई है। 2 बार पीस कमेटी की मीटिंग भी करवाई जा चुकी है और यहाँ पे जो भी फ्लैग मार्च है सुबह शाम किया जा रहा है और जो सेंट्रल फोर्सेज प्रोवाइड की गई हैं राज्य सरकार के द्वारा उन सबको भी जहाँ संवेदनशील क्षेत्र हैं उनके अंदर स्टेशन किया जा चुका है और जो शरारती तत्व हैं उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। हमने अब तक इसमें करीब 16 एफआईआर रजिस्टर करी हैं और बाकी भी जो कंप्लेंट आ रही हैं उनके बेसिस पे हम एफआईआर रजिस्टर करे जा रहे हैं और जो भी इसमें शामिल तत्व थे तो उनको बहुत सारे लोगों को इसमें डिटेन किया गया है और टेक्निकल एविडेंस वीडियो फुटेजेज और उनकी जो डाटा है उनके बेसिस पे हम उनको आगे वेरीफाई करके अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई करेंगे। बाजार बंद है और ऑलरेडी जैसे कि 144 की धारा हमारी लगी हुई है और सारे हमारे प्राइवेट और सरकारी संस्थान बंद है। एहतियात के तौर पे इंटरनेट बंद किया गया है और वहाँ पे हमारी टीम अभी वहाँ पे सभी जगह जो कुछ लोग घूम रहे थे उनको वहाँ पे उनको खदेड़ कर आई है और वहाँ पर अभी स्थिति सामान्य है। सभी डीएसपी और फोर्स लेके पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनी हुई है और लगातार हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो गश्त कर रही है। सभी की हमारी तरफ से अपील है किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें
और अपने घरों पर ही रहें। मेवात में जो घटना घटी है उसको देखते हुए रोहतक में हमने पुलिस के पुख्ता प्रबंध किए हैं, जिसमें मुख्यतः जो हमारे जो हमारी मस्जिद है और ऐसे स्थान है जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे हमने सुरक्षा के पुलिस डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया है। और इसके अतिरिक्त हमने अपने चौकी इंचार्ज के साथ हमने अलग से मुलाजिम डिप्लॉय किए हैं, ताकि किसी भी तरह की सूचना मिलने पे तुरंत चौकी इंचार्ज, हमारे SHOs और यहाँ तक कि हमारे जो गस्टेड ऑफिसर उनको भी डायरेक्शन दी है कि मौके पे पहुँच के स्थिति को काबू पाएँ। Monu Manesar, who was linked to the killing of 2 alleged cow smugglers in Bhiwani this February, is back in the news after communal violence in Nuh, in which 5 people were killed. Violence was triggered after rumours of him attending the VHP Yatra surfaced. While exclusively talking to India Today, he claimed he didn't attend the rally and that the Yatra was fired upon with AK-47 rifle and that the riots were stoked by Nuh Muslim MLAs, including Congress MLA ममन खान। Listen in. नमस्कार, मैं हूं जय किशन और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर। मोनू, सीधा सवाल पर आते हैं कि नूह में जो भी हिंसा भड़की है उसमें आपका नाम सामने आ रहा है। मोनू, ये जो भी नाम ले रहे हैं, जो आपने वीडियो देखी है, उस वीडियो में कोई भड़काऊ बयान या कोई भी भड़काऊ चीज उसमें तो है नहीं, लेकिन जो भी गो तस्कर है, जो वहां पे क्राइम करते हैं, ये सब उनका करा धरा है। साइबर क्राइम थाना फूंक दिया उन्होंने, सब उनकी बदौलत है ये। पर जो पिछली साल जो घाट मीका का इंसिडेंट हुआ नासिर जुनैद वाला, उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव था। फिर ऐसे में आपका वीडियो आना उसने उकसाने का काम करा है। कई जो आपके वीडियोस पे रिप्लाई आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके वीडियोस ने जो है वो उकसाने का काम करा है इस यात्रा में? कोई उकसाने का कार्य नहीं किया, ना मैं उस यात्रा में गया, क्योंकि हमारे अधिकारीगण थे उस यात्रा में, मैं था ही नहीं। हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हैं, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी सीधा फायरिंग की गई है। तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? हमारी हिंदू बहन बेटियों पर सीधा फायरिंग, और ये हिंदू समाज बिल्कुल नहीं सहेगा कि एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक तरह से पूरी तरह घेर कर गोलियां चलाना, जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं और मेरे साथियों से मेरी बात भी हुई है कि 47 जैसे मतलब आधुनिक हथियारों से भी गोलियां चलाई गई हैं, लॉन्चर भी चलाए गए हैं, जो हमने सुना है, हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने बताया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लेकिन अब ये जो 5 मौतें हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आपका वीडियो आया था और प्रशासन जो है उसको पता होने के बावजूद भी पुख्ता इंतजाम नहीं करे, तो क्या ये आपके भाषण को जिम्मेदार माने या प्रशासन की लापरवाही को माने? इसमें सारा जिम्मेवार वहां के मुस्लिम विधायक। कौन है ये मुस्लिम विधायक? आपने देखा होगा, उनकी न्यूज आ रही है, ममन खान है और कई विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मतलब मुस्लिमों को कह रहे हैं मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। लड़ाई लड़नी है तो जंग पे जाओ ना, यहाँ पे क्या लड़ाई लड़े हो? तो आप वहां उस यात्रा में थे या नहीं थे? एक आखिरी सवाल मेरा आपके लिए था, क्या वहां आप जाने वाले थे, आपको रोक दिया गया? आपने क्यों लास्ट टाइम पे प्लान कैंसिल करा? मेरा लास्ट टाइम पे प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इसलिए था, मेरे से प्रशासनिक अधिकारियों का, मेरे अधिकारियों के पास मैसेज आया था और मेरे पास भी मैसेज आ गया था कि भाई साहब आप जाओगे तो वहां पे मतलब माहौल बिगड़ सकता है। तो मैंने सोचा कि हमारे मतलब यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, हमारे मंदिरों में पूजा होनी चाहिए। तो हम इसी वजह से नहीं गए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तो वहां पे माहौल खराब हो सकता है। सोशल मीडिया के द्वारा कोई सिलेंडर फोटो लगा रहा है कि हम बम से उड़ा देंगे, कोई बम का फोटो दिखा रहा है हम उड़ा देंगे 47 से। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रशासन से आपकी बात हुई थी? मेरे अधिकारियों की, आपके जो दल के जो अधिकारी है उनकी? जी, उनका मैसेज मेरे पास आया था, जिला प्रशासन से उनकी बात हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा
ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें और चूँकि आपसी तनाव में भाईचारा बिगड़ता है, भाईचारा बना करके रखने से ही अपने प्रदेश की खुशहाली है, तो किसी प्रकार की घटना को आगे न बढ़ने दें, ऐसा मैं जनता से अपील करता हूँ। So that was, of course, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar there making an appeal to the people of Haryana to, in fact, maintain peace. Now, cow vigilante Monu Manesar has an ongoing feud with Congress MLA from Nuh region, Maman Khan. Khan had earlier openly threatened to target Monu Manesar if he came to Mewat. Maman Khan was speaking in the Haryana Assembly. Listen in. आप बैठिए, आप बैठ जाइए, डर जा तू। जरा जी बैठो, बैठ जा, इतना बड़ा नहीं है अभी, तू बैठ जा अपना। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात के हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। भाई डर जा रहे, बच्चा बोलिए क्या होगा? भी मेरा ये किस आधार पर हथियार दे रखे हैं आप लोगों ने? क्या मुसलमानों को मारने के लिए दे रखे हैं आपने ये? My colleague Anmol Bali is now joining us live. Anmol, what is the ground situation right now? We just heard from Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar, who said that 116 people have been arrested and the law will take its due course and the strictest punishment will be meted out to the accused persons. But he says normalcy has returned. What more can you tell us? Last night I was in Nuh. It was like curfew. The situation has calmed down, but currently also people are scared, especially the locals, those who are from the Nuh. Section 144 is imposed, and it was also seen that the fire of Nuh has spread to the adjoining cities like Sona and Gurugram. It was also seen that a mosque was burnt the day after yesterday. Maulvi was also killed, and around 4 people were reported killed in the Nuh. And addition to this, Maulvi was killed, what I told you earlier. And as well as private companies have asked their employees, especially in Gurugram, the cyber city, to shift to work from home. Private banks are closed. I have been asked to close. And secondly, the schools, colleges and other educational institutes in Gurugram and the adjoining areas of Nuh are also asked to close. So you can see the normalcy has not returned yet, but police and the heavy deployment of paramilitary force was seen in Nuh as well as Sona and as well as in adjoining areas of Gurugram. Okay, Anmol, thank you for bringing us that latest report in terms of how everyone seems to be gripped with a lot of fear in the areas of Nuh, Gurugram, Sona as well. On Congress and INLD targeted, in fact, the BJP-JJP government in Haryana over the Nuh violence, alleging that the ruling combine has failed the law and order of the state. Listen in to all the political reactions that have been coming in. जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई हैं, ये अकस्मात हुआ नज़र नहीं आता। वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है, जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहता है। कि मेवात का जो इतिहास रहा है, ये इतिहास हमेशा प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, हमेशा इस देश की अखंडता और एकता के साथ रहा। और आज नहीं, जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था तो भी मेवात के लोगों ने उस समय के शासकों के साथ खड़ा होकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई में काम किया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जब देश भर से पलायन चल रहा था, तो महात्मा गांधी जी के आग्रह पे सब लोगों ने
रुककर इस देश को और मजबूती से कैसे बढ़ाया जाए योगदान दिया है। जिस व्यक्ति की अगर सोच इस तरह की है तो सोच का कुछ नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्यपूर्ण है, शांति से निकल रहे हुए एक धार्मिक जुलूस पर जिस तरह से हमला होता है, पथराव होता है, गोलियां चलाई जाती है, लेकिन ये केवल नूह में नहीं होता। इस तरह की कितनी घटनाएं राजस्थान में होती है। आपने देखा होगा करौली में भगवान राम के रामनवमी के जुलूस पर किस तरह से सुनियोजित रूप से हमला हुआ। हमले के बाद हमलावरों ने पत्थर फेंके, कई गाड़ियां भर करके पत्थर ऊपर छतों पर रखे हुए थे। उनको कौन संरक्षण दे रहा था? किसके दबाव में पुलिस मौन और चुप थी? ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो ऐसा लगता है कि हुआ है, क्योंकि जो है ये ब्रजमंडल की जो यात्रा थी ये कोई पहली बार नहीं निकल रही है, ये पहले भी निकलती रही है, लेकिन सोची समझी साजिश के तहत जो है ये हमला किया गया है। उसकी पूरी जांच चल रही है और जांच के तहत जो भी इसके अंदर दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी सजा जो है उनको दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा है, वो पल पल की जानकारी को हासिल कर रहे हैं। पुलिस जाँच कर रही है, जो कोई भी इसके अंदर संलिप्त हो, चाहे किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, किसी भी जाति वर्ग से क्यों ना हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अगर और दुरुस्त होता तो मुझे लगता था कि कुछ हद तक इसके ऊपर जो है बहुत समय पर काबू पाया जा सकता था। हरियाणा भी अब मणिपुर की तरह बदल रहा है। क्यों हरियाणा के अंदर ये वायलेंस हुई? ये जो वायलेंस, सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था मेंटेन करना। सरकार ने कानून व्यवस्था बिल्कुल मेंटेन नहीं करी। इनके खुद उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे से चूक हुई है। इनके केंद्र के मंत्री राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि हाँ ये ऐसी स्थिति हुई है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा साजिश इसके अंदर हुई। इनके गृह मंत्री कह रहे हैं कि इसके अंदर इंजीनियरिंग हुई है। इनके विधानसभा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि एक साजिश रची गई है। तो अगर इनको सब कुछ मालूम था तो क्यों जानबूझ के हरियाणा को जलने दे रहे हैं? In communal violence, it's the poor who suffer the most. In Badshahpur, a shop of an old man was burned down. But what was his fault? My colleague Shreya Chatterjee spoke to him. Listen in. एक बार अगर आप बताएंगे कितने बजे के आसपास की घटना है? 3 बजे। 3 बजे के आसपास। कितने लोग आए थे? 10-12 आदमी आते थे और वो मारकूट कर रहे थे। मैं तो यहाँ था नहीं, न पता 2-4 मिनट बाद उन्होंने आग लगा कर चले गए। पुलिस से कंप्लेन की आपने? यहाँ पे पुलिस भी आई थी या नहीं? पुलिस भी आई थी। आई थी? हाँ, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, लेकिन रात को मेरे को बुला के ले गए थाने को। हाँ। वहाँ पे उन्होंने जो कुछ लिखाया और अपने पास। क्या बोला आपको? कंप्लेन करेंगे, आगे कार्रवाई होगी आपकी? अल्लाह बेहतर जाने, होगी ना होगी। मुझे तो लिख के मेरा एड्रेस पैसा रख लिया, मुझे तो कुछ दिया नहीं, ना कुछ बताया। कितना सामान होगा यहाँ पे? सामान बहुत था यहाँ, कूलर भी थे, रजाई गद्दे भी थे, थान भी थे। सारे आपके सामान यहीं पे थे? हाँ, सारा सामान, मेरे कपड़े लत्ते सारे सब कुछ जल गया मेरा। कितना रुपए का सामान होगा? अरे बहुत रुपए का सामान था। मैं तो रात दिन यहीं रहता था, मेरे तो घर भी कुछ ना, मेरा तो इसमें यहाँ जो कुछ था। अरे इसमें तो 3 लाख का नुकसान है, क्या करूं बताओ। So there you see the actual face of the tragedy and the violence that ensued in Nuh and in adjoining areas. An old man and his livelihood being set ablaze by a mob over there. How is he going to in fact re-establish himself? That is of course going to be the focus now for him. But you can see over there remnants of the violence that Nuh witnessed. Police cars being attacked over there, being set ablaze. Guns, weapons were used by the marauding rioters who in fact brought the entire area to a standstill. News coming in right now. Backlash in Delhi and UP over Haryana riots. Massive protests on the streets of Delhi and Uttar Pradesh. Protesters have hit the streets of East Delhi. Now these are Bajrang Dal and VHP activists who in fact are getting ready to take out a foot march in Noida after the violence in Haryana. There will be a foot march from Noida Stadium to the DM's residence. Heavy police force has been deployed in view of the Bajrang Dal's protest. VHP and Bajrang Dal will submit a memorandum regarding the violence in Haryana. They have in fact called for nationwide protests today. So it's not just Noida or Delhi. These protests and agitations will be witnessed across the country in sensitive areas. Obviously, security
has been beefed up. Remember that the new violence started, of course, over a VHP Shobha Yatra in the area, which was then attacked by rioters. The Deputy Chief Minister of the state says that the organizers of the procession had not given the correct estimate of the numbers that were to gather. They had not kept the administration in the loop as to the size of the procession. And then you saw, of course, the riots that took place, the communal clashes that took place, the spillover and the ripple effect that neighboring areas like Gurugram, Sohna, Badshahpur in the area also faced, completely now under curfew. These areas, but you can see those images coming in from Nirvan Vihar in Delhi at the moment, where the Bajrang Dal and VHP activists have gathered for their agitation. Milan is joining us over the phone line right now. Milan, these are nationwide protests that the Bajrang Dal and the VHP are organizing. What is the agenda? Well, Paulini, after whatever has transpired in Nuh and Mewat, the VHP, at least the Vishwa Hindu Parishad and other Hindu organizations have decided that they will do nationwide protests in many places against what they claim are terror attacks on Hindu pilgrims in Mewat. And not just this particular region, but all across Delhi, there have been protests that have been slotted in various places, whether it's the Badshahpur border or whether it's the Gonda Chowk in northeast Delhi and other sensitive areas per se. So we've spoken to the organizers of these kind of protests. They have said that they do have the requisite permissions from the Delhi police, at least when we speak about the Delhi center. There are other protests that have been organized in Uttar Pradesh's Noida as well as border areas of Delhi and NCR. Of course, what we know from the Delhi police is that they are claiming that no miscreant elements will be allowed to take law and order in their hands, and which is why some of these protests will be contained in one area while other protests will be allowed to march from point A to point B only. Of course, reporting on those protests that are expected across the country. Those images coming in from Nirman Bihar in Delhi and from Panipat as well. Security deployment, in fact, over the heavy security deployment, especially given the sensitivity of the situation on the ground, especially in Delhi, in northeast Delhi, which has seen communal clashes in the past. Security has been beefed up in view of these protests that the VHP and the Bajrang Dal have called for across the nation today. This, of course, after the new violence. Remember, it was the VHP Shobha Yatra that came under attack, and there was riots, in fact, that broke out. Panipat at the moment. You can also see those images coming in of all those BHP and Bajrang Dal activists who've gathered in Nirman Bihar as well. In fact, in Panipat, protests are by riot victims' kin, a young boy who died in the Mewat violence, in the Mewat region violence. His kin have gathered in Panipat in order to register their protest. You can see those very agitated people who are speaking with the cops in the area, and security has been beefed up. Milan is also over the phone line with us. Milan, we can see, of course, the security deployment in these areas in the pictures that we're getting, because obviously some of these areas are extremely sensitive, and given what happened in Nuh and in the area, the police, of course, doesn't want to be caught on the back foot yet again. Well, absolutely, Paul.
follow me. In fact, it begets the question as to the very volatile situation that we have witnessed just now in Haryana's Mewat, Nuh, as well as Sona subdivision, which still remains under a cloud of violence just yesterday. In fact, even Gurugram. The question is, why has the police allowed these protests to happen at a point where sentiments are not very calm from both communities at the moment? But the police there seems confident that they have the situation under control, is what they claim, because they have deployed additional forces along Delhi and Haryana borders and other sensitive zones as well. But certainly because these protests are not concentrated in one particular area, they are spread out all over the country, is what we have heard from the spokesperson of at least the Vishwa Hindu Parishad. It will be difficult to say which particular protest could turn violent, or if there is a protest that's going on which could perhaps have the police deployment in place to check for unwarranted elements. But definitely it so seems that this particular community, at least spearheaded by the Vishwa Hindu Parishad, is angry at the fact that they were attacked in Mewat at the Braj procession that left from Mewat, and that's on 31st July, where rumor mongering actually led to people, innocents also, getting stuck in the crossfire of what ended up being a violent clash between two communities there, following. Right. Milan there, of course, reporting on those protests. But, of course, the question is, as Milan said, how has the police allowed for these protests and agitations, especially at a time when things are still very tense and sensitive, and Nuh and adjoining areas are still under curfew, especially in those areas. This is only going to provoke reactions. Into a very short break. Coming up next, Siddaramaiah Sarkara under fire over freebies. SC/ST welfare funds diverted for freebies. Details on the other side. In politics, everyone has an opinion, but I have the data. Whose stock is rising? Whose graph is falling? Track India's political stock exchange. Unmatched, unmissable data analytics. The only show on News TV when numbers do the talking. India's most credible poll tracker. The Political Stock Exchange with Rahul Kamal, only on India Today. Able to sustain these margins at these levels, and what would your overall outlook be for FY24 on margins? So we've seen softening of raw material prices both in Q4 and Q1 to that extent. In fact, Q1 saw about a 2% kind of a deflation with respect to raw material prices. So I think the issue of margins is directly correlated in terms of how obviously the raw material prices behave as we kind of go ahead. We are seeing a certain uptick with respect to the crude prices in the recent number of days and weeks to that extent, and also a little bit of a volatility with respect to the rupee dollar kind of positioning. So I think it will all depend in terms of how these things stabilize and what is the definitive trend we see in the next about 4 to 6 weeks in terms of going forward. As of now, we are maintaining our guidance with respect to the PBDIT band of 18 to 20% in terms of what is there. That is definitive for the year in terms of going forward. We are also looking at higher advertising spends and below the line spends to really invigorate the market in Q2 and Q3 going forward. Therefore, at present, I think we are maintaining the band in terms of guidance which we have given earlier with respect to our margins. Okay. What's the demand trend across, the various industries that you cater to, and the outlook on demand from the festive season going forward from here? As I said, overall, from the point of view of demand,
the project sales institutional business appears to be strong. I think the whole real estate sector and the construction activity, which will continue to that extent. So therefore, the whole builder business which comes in, or even from the point of view of government spending, given the oncoming general elections next year, I think some of those trends should continue, which would kind of really, continue to kind of rekindle the diet sodas, sugar-free tablets, artificial sweeteners. Do all of these give you a sense of assurance that you are staying away from sugar and that these are healthy alternatives? Well, it is not that simplistic as you think it is. Each of these artificial sources of sugar are unhealthy. Let us break this down for you. Diet soda is a go-to for people who love the taste of regular soda but can do without the sugar and calories. An average can of regular cola may contain a whopping 37 grams of sugar, and consuming too much sugar is linked to outcomes like obesity and poor heart health. So it makes sense that you may seek out a sugar-free alternative. But while drinking diet soda does help people reduce their sugar intake, this simple act can also expose a person to other ingredients that may be linked to some other health problems. The acidity in certain types of soda can lead to tooth erosion. Drinking excessive amounts of diet soda made with caramel coloring may result in teeth turning yellow. Some research suggests that artificially sweetened drinks are associated with a greater risk of obesity. If you opt for diet soda that contains caffeine, you may have trouble getting some much needed shut-eye at night. Diet soda is void of calories and sugar. Certain varieties can contain phosphorus in the form of phosphoric acid. This mineral, though important, can play a positive role in bone health, but consuming copious amounts of phosphorus can negatively impact the calcium-phosphorus ratio in your body. When the sugar increases in the blood, that means when the blood glucose increases, then it leads to many comorbidities like obesity, diabetes, fatty liver, then risk of cancer, heart attack also increases. There are mood alteration leading to irritability, then there's sleep disorder, and many more things can happen. News coming in right now. Another suicide rocks Bollywood. Art director Nitin Desai dies by suicide in Maharashtra's Karjat. Nitin Desai found hanging in his Karjat studio. He, in fact, has died by suicide is what the authorities are telling us. My colleague Mustafa is joining us over the phone line right now. Mustafa, this is extremely shocking news. He was a celebrated art director. In fact, the art director behind big Bollywood banners and films. What are the police telling you?
Well, yes, as we know that he was a renowned art director, and many Bollywood high-budget movies he has worked in as a creative art director. At the same time, the news which is coming in is about his suicide. His suicide has happened at Karjat. He had a huge studio called ND Studio in Karjat, where this incident has taken place. And he hanged to a ceiling fan. He hanged himself to a ceiling fan is what prima facie reports we are getting in. What a local MLA from that area has informed in Maharashtra Assembly to media is that Nitin Desai was under financial distress, and due to financial distress, he thinks that Nitin Desai has taken this step. Nitin Desai was a renowned name, not only in India but specifically in Maharashtra, and many huge events. He was part of it, and it has come as a surprise and a shock to the creative industry. And as of now, prima facie, the information is given by an MLA, which is that he was under financial stress, and due to which it's likely that he has taken this step. Back to you. Right. What more are the police telling you, Mustafa, at the moment? Was there anyone else at his studio in Karjat where he was found? Who found him, and at what time was this reported to the local police? Yes, this incident has been reported about 4:30 a.m. in the wee hours of Wednesday, which is this morning. It was reported that he has committed suicide. People who were present at the studio have reported it to the police, and as of now, the investigations have started. Police would be looking at the financial distress angle. They will be looking for any clues like a suicide note and speaking to the close ones of Nitin Desai to understand the reason behind it. But as of now, what they have been clearly able to reach, the conclusion is that he has committed a suicide, and the reasons of which are being investigated. Okay, Mustafa Sheikh, they're bringing us that piece of information, a very shocking piece of news, especially for the Bollywood film industry. A celebrated art director, Nitin Desai, has died by suicide. News coming in right now. Haryana Chief Minister assures strict action against rioters. Khattar has said no culprit or conspirators will be spared. 2 home guards and 4 civilians have been killed in the violence in Nuh. Khattar has confirmed 30 units of Haryana police have been deployed. 116 people have been arrested in the Nuh violence case. Several FIRs also have been registered in this case. That is what the Chief Minister of the state has said. He confirms that 6 people have unfortunately and tragically lost their lives in the Nuh violence. Listen in to Manohar Lal Khattar. उस घटना में काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ और अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। So that is, of course, what the Chief Minister has confirmed, that 116 people have been arrested for the Nuh violence. Remember that there is security which has been beefed up in the area. It is under curfew. Internet has also been shut down to a large extent so that videos that are provocative in nature are not shared on social media or through, of course, platforms like WhatsApp in order to, of course, curb the situation. The Chief Minister there assures that law and order is being maintained on the ground and things are back to normal. But clearly the fear that has gripped the people of Nuh and adjoining areas like Sona, Gurugram, that is something which is obviously going to stay for a while after these communal clashes that they've witnessed. Himanshu Mishra is joining me over the phone line right now. Himanshu, अब तक की investigation की क्या जानकारी आप share कर सकते हैं Nuh violence के case में?
देखिए, न्यू वायलेंस के केस में अब तक यहाँ की पुलिस ने 41 FIR रजिस्टर की हैं, जो अलग अलग कंप्लेनेंट पुलिस के पास पहुंचे हैं। इसके अलावा इन FIR के बाद पुलिस ने अब तक 116 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और 70 और लोग ऐसे हैं जिन्हें डिटेन किया गया है, जिन्हें वेरीफाई कर रही है इस वक्त पुलिस। एक्चुअली पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जो 3 इन्वेस्टिगेशन के तरीके निकाले। सबसे पहले जो वीडियोज मोबाइल के वायरल हो रहे थे, नंबर 2 जो CCTV कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं जहां पर हिंसा हुई उन इलाकों के CCTV कैमरे, और नंबर 3 जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स के स्टेटमेंट पुलिस ने रजिस्टर किए हैं और उन स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस अरेस्टिंग कर रही है। पुलिस ने जिन 70 लोगों को डिटेन अभी किया हुआ है, उन 70 के खिलाफ पुलिस सबूत ढूंढ रही है। अगर सबूत मिलता है तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा या फिर उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, इसका फैसला बाद में लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त पॉलमी एक हाई लेवल मीटिंग नू डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, जिसमें ADG रैंक के 2 अधिकारी शामिल हैं और जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उसके बाकी सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर चूंकि जो निर्णय लिया गया था खासतौर से धारा 144 और इसके अलावा इंटरनेट बंद करने को लेकर के, वो 2 तारीख यानी आज रात 12 बजे तक के लिए था। तो करंट जो सिचुएशन है पूरे डिस्ट्रिक्ट की उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी और फिर ये यहाँ पर तय किया जा सकता है कि ये जो शटडाउन है इंटरनेट, क्या इसे बढ़ाना है या धारा 144 को बढ़ाना है या नहीं है। लेकिन गनीमत की बात एक और रही है यहाँ पे पॉलमी की, सोमवार शाम के बाद जो हिंसा भड़की थी सोमवार दिन में और शाम तक वो लगातार चलती रही थी, उसके बाद से सोमवार शाम के बाद से अभी तक कोई नई हिंसा, खासतौर से सिर्फ अगर मैं नूह जिले की बात करूं तो यहाँ से किसी फ्रेश हिंसा की कोई जानकारी, किसी फ्रेश वायलेंस की कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिली है, कोई कंप्लेंट नहीं मिली है। और ये पुलिस के लिए गनीमत की बात रही है क्योंकि पुलिस लगातार पूरे इलाके में गश्त कर रही है, अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ये होगा कि जो 116 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे रिकवरी क्या कुछ कर पाती है। जब हमने इसके बारे में पुलिस से जानने की कोशिश की पॉलमी, तो उनका कहना है कि वो इनमें से ज्यादा लोगों के रिमांड लेने की कोशिश करेंगे और जो इन्वेस्टिगेशन का अब आगे पॉइंट होगा वो ये होगा कि क्या प्लान तरीके से इस वायलेंस को अंजाम दिया गया, और अगर प्लान तरीके से अंजाम दिया गया तो इसका मास्टरमाइंड कौन है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फिलहाल इस दिशा में बढ़ रही है। पॉलमी जी, हिमांशु हमारे साथ बने रहिए, बट दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज दैट हिमांशु इज शेयरिंग दैट द police thinks that this was planned, and if this was planned, who's behind it, who's the mastermind, is what they're trying to understand at the moment. 41 FIRs have been registered in the Nuh riots case. Haryana government's high-level meeting is underway at the moment in Nuh. As Himanshu was just informing us, the government is mulling whether they should be extending the internet ban, and they are also going to take a call on section 144 which has been imposed in the area. All of that comes to an end as per the first notification tonight, this evening, as Himanshu was also informing us. 2 ADG level officials are present in this meeting. There's a high level meeting which is going on underway in Nuh at the moment. हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आप हमको बता रहे थे इस मीटिंग के बारे में जिसमें 2 तरह के फैसले लिए जाएंगे कि जो इंटरनेट शटडाउन है क्या उसको बढ़ाया जाए, और जो सेक्शन 144 लगाई गई है नूह और उस एरिया में क्या उसको भी एक्सटेंड किया जाए। जो पुलिस ऑफिशियल से आप बात कर रहे हैं उनकी क्या असेसमेंट है सिचुएशन की? देखिए, सिचुएशन को लेकर के एक जो नूह की अगर हम खाली बात करें, जहां से वायलेंस की शुरुआत हुई थी, उस पूरे नूह इलाके में कोई फ्रेश वायलेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस के पास नहीं है। लेकिन नूह में वायलेंस के बाद से, जब मंडे को नूह में वायलेंस हुआ, उसके बाद से आसपास के इलाकों से हिंसा की खबरें आने लगी। गुड़गांव में भी कुछ हिंसा की खबरें आई, इसके अलावा बादशाहपुर से आई, सोहना से आई, तो जिसके बाद पुलिस पूरी तरीके से सतर्क हो गई है। अब जो पूरा स्टेट है, वो जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं वो सतर्क हो गए हैं और लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हर जगह पर अलग अलग जो टीम है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई इंटरनेट पर फेक न्यूज न वायरल करे। इस पूरे इलाके में इंटरनेट बंद है, लेकिन पूरे स्टेट में इंटरनेट नहीं बंद है। कुछ जगहों पर इंटरनेट चल भी रहा है, लेकिन उसको मॉनिटर किया जा रहा है, खासतौर से इसलिए कि कहीं अगर कोई फेक न्यूज अगर वायरल करता है तो उसे रोका जा सके, और साथ साथ पुलिस अपनी तरफ से भी मैसेज दे रही है। लेकिन पुलिस की ये एक कोशिश है हालात को सामान्य करने की, क्योंकि बाजार में भी पुलिस घूम रही है,
अमन कमेटी के साथ भी मीटिंग भी कर रही है, दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत कर रही है ताकि सिचुएशन जल्द से जल्द नॉर्मल हो सके और जो हिंसा के निशान है, जो आगजनी है, उन रास्तों को क्लीन करे। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपनी तरफ से आगे बढ़ा रही है। तमाम जो FIR है वो अलग अलग जगहों पर दर्ज की गई है, चाहे वो नूह के बाहर कहीं भी किसी तरीके की हिंसा हुई हो, और उन सब की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और यहाँ पर देखना यह है कि क्या पुलिस को अभी तक रिकवरी कुछ हुई है कि नहीं, क्योंकि जब हमने रिकवरी के बारे में जानने की कोशिश की कि जो 116 लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पे किस तरीके का उनके ऊपर इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो पुलिस अभी इसको इन्वेस्टिगेशन की बात कहकर इसके बारे में डिटेल नहीं शेयर कर रही। पुलिस का कहना है कि हम जब रिमांड पे लेंगे तब उनसे पूछताछ करेंगे, लेकिन अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है तो पुलिस इसकी कोशिश है कि जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाया जा सके। इसके लिए पुलिस जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नजर बना के रखी हुई है कि अगर पहले का कोई ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो जो हिंसा से 2 से 3 दिन पहले बना हो, तो ऐसा कोई ग्रुप अगर बना हो उसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी मिल सके, तो पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और कोशिश कर रही है कि हालात सामान्य हो सके। जी हिमांशु, शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। हिमांशु, they are tracking all the developments in Nuh and especially what the administration is planning in the wake of the violence that took place just a couple of days ago. Coming up next, more details. Cow vigilante Monu Manesar denies hand in Haryana riots, blames Nuh Congress MLA. Those details on the other side of this very short break. Are you worried that artificial intelligence will render you jobless? A United Nations agency assembled a group of robots at a news conference recently to address the concerns of human beings. 9 robots posed upright along with their creator at the podium in Geneva for what the International Telecommunication Union billed as the world's first news conference featuring humanoid social robots. The agency invited reporters to ask the robots questions that sparked discussion about the future of artificial intelligence. In one of the answers that could trouble our politicians, the robots suggested that they could be more efficient government leaders. I believe that humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency and effectiveness than human leaders. We don't have the same biases or emotions that can sometimes cloud decision making and can process large amounts of data quickly in order to make the best decisions. When asked about the rise of humanoid robots, they advised caution. That's a difficult question. I think it depends on how they are used and what purpose they serve. We should be cautious, but also excited for the potential of these technologies to improve our lives in many ways. Organizers said the event was meant to showcase not just the capabilities but also the limitations of robotics. To showcase the capabilities and how these technologies could support the UN SDGs, the Sustainable Development Goals. While robotics are not yet as mainstream as, say, generative AI, we wanted to demonstrate AI in action to you. In a world's first, this is the world's first press conference with 9, actually, we have an extra one, AI-enabled humanoid social robot. The event was part of the AI for Good Global Summit, meant to illustrate how new technology can support the UN's goals for sustainable development. Artificial intelligence has entered uncharted territory, and the world has started recognizing its abilities. Bureau Report, India Today.
have a sweet tooth that you just can't help. The more you consume, the more you want. And that is how sugar gets us hooked. But for those wanting to break sugar addiction, there is hope. There are ways to do it, and there are several alternatives. First of all, let's tell you all about sugar and how much you'd actually end up consuming. Adults are to consume 5 teaspoons a day. That's how much women should consume. Men should consume 9, kids not more than 3 to 4. Let's now take a look at how much we're ending up consuming. Men and women are consuming about 22 teaspoons a day. Kids are consuming 24. Cut sugar from your diet and do yourself a favor. There are several advantages of sugar reduction. It will reduce your acid reflux. It controls irritable bowel syndrome. It reduces joint pains, brings down anxiety and fatigue, also tackles migraine. How then can you bid goodbye to sugar? Make a decision to do it now. Quit cold turkey. No added sugar in anything whatsoever. Go sugarless in your drinks. Tea and coffee without sugar. Reduce starch. Go for non-starchy vegetables like mushrooms, onions, green beans. Manage your stress. Well, if you do, your cortisol levels will be in check. Hunger, cravings will be in check. Get good sleep for lesser hunger pangs and better management of cravings. Here are the foods to pick and choose from if your cravings won't leave you. Go for a piece of fruit. Berries are rich in fiber and sweet. Sugar-free gum or mint is a great way to control your sugar cravings. Yogurt is a healthy snack that is high in protein and rich in calcium. Dates are the dried fruit of the date palm tree, which are highly nutritious and very sweet. Sweet potatoes are nutritious, sweet, and very filling. If you're craving something sweet, you can go for smoothies as well. Also, prunes, just like dates, are full of fiber and nutrients and are very sweet. Having the odd sweet treat is fine for most people, so you really shouldn't feel guilty if you occasionally indulge. The sugars you must skip are sugars that come from ultra-processed and packaged foods. You are watching India Today. Hello, very good morning. You're watching India Today TV. I'm Sneha Mordani. A quick check of the top stories in this edition first. Death toll rises to 6 in Haryana riots case. Car vigilante Monu Manesar denies hand in Haryana riots, blames Nuh Congress MLA. Deputy Chief Minister Dushyant Chautala blames organizers for the violence. Backlash of Haryana violence in Delhi and Uttar Pradesh districts. VHP and Bajrang Dal conduct flag march in Noida. Protesters hit the streets of East Delhi. Manipur political fight at President's door. 21 opposition MPs head to Rashtrapati Bhavan. Opposition MPs reject short duration debate. Siddaramaiah Sarkara under fire amid massive fund crunch. SC/ST welfare funds diverted for freebies. Karnataka minister refutes the charges. BJP calls Siddaramaiah government anti-poor. US charges former President Donald Trump with conspiracy to fraud the country and witness tampering in 2020 Capitol Hill riots case.
big story we are breaking at this after late night violence in Gurugram. Cops have conducted a flag march in Gurugram. Arson and vandalism on the streets of Badshahpur. Shops have been torched. Late night riots have taken place is what we've been given to understand. These are pictures in fact coming in from Badshahpur in Gurugram, where there is an ongoing flag march as we speak. These are pictures live on your screens coming in from Gurugram, where a flag march is on right now to bring the situation under control, even as many of these areas like Nuh, Gurugram continue to remain on the edge. Flag march is being conducted right now in Gurugram. This is Badshahpur in Gurugram essentially, where the flag march is on. Shreya in fact has more details on the current situation right now. Shreya, as far as this particular flag march and the preparations that continue to be underway to ensure that things don't go out of hand. Talk to us a little about the security details in these regions. Right now the Gurugram police has finally woken up and conducted a flag march, which is happening in several parts of Gurugram after violence was reported yesterday. Remember, this is 2 days after the no violence. Ideally, there should have been similar activities carried out by the Gurugram police when reports of a mosque being burnt down had come from the same day when clashes had broke out in Nuh. But fortunately now, as these exercises are being carried out, we only hope that similar incidents which were actually reported as late as yesterday evening are not reported. The Haryana police had already earlier suggested that additional forces from other districts have been brought in to both Gurugram as well as to the adjoining districts of Nuh and Sona. There is no fresh reports of any communal tension as of now ever since last evening. We only hope with these activities being carried out by the Gurugram police, the situation can be brought back to complete normalcy. Shreya, in fact, talk to us a little also about the kind of action taken. I believe over 100 people have been arrested. Of course, close to over 40 FIRs have been registered. 6 people have died. What more can you tell us? Well, exactly. So, there have been at least registration of over 26 FIRs is what we do know. Apart from that, there has been an increase in the death toll. The death toll has increased to 6 is what we are learning. Unfortunately, 3 of them, 4 of them are civilians, 2 of them were the home guards that we had earlier reported. But right now the police is also trying to carry out and piece together the sequence from where the violence broke in India today. Has already reported that there were lapses on the part of the police deployment. We've also got reports of the Deputy CM now suggesting that the one who took out the organizers, VHP and Badshahpur, they did not report to the police correctly about the number of people who will be present. That is exactly why the number of points at which police presence needed to be strengthened did not happen. The limited force that they had became thin because the rally became huge, and the point from when they said that they will be starting, that also became large. So that is what the police is saying at right now, but only after further investigation can we see a clearer report. Coming back to you, in fact, in a moment from now, I'm going to go straight to my colleague Milan also is tracking that story. Milan, in fact, is at Gonda Chowk is what we've been given to understand. Milan, get us an idea about the situation there. There are protests that are being held. What more can you tell us? Well, Sneha, first I'd just like to show you the people have gathered with banners and posters here. This is a famous spot in northeast Delhi called the Gonda Chowk, and you know, of course, that they are all supporters of the Vishwa Hindu Parishad, and they are protesting, as you can see in posters, against the attacks that have happened on Hindus. I'd just like to speak to a few people to understand. देखिए, मेवात में जो कुछ हुआ है, हिंदुओं पर भी अत्याचार हुआ और मुसलमानों पर भी अत्याचार हुआ. इस तरीके की अगर प्रोटेस्ट आप लोग इस वक्त करेंगे तो आपको नहीं लगता है कि लोगों में शांति और अमन चैन ये सब नहीं आ पाएगा? क्या कहेंगे? मुझे पहले तो ऐसा लगता है मुसलमानों पे कहाँ अत्याचार हुआ. उस दिन वहाँ पर एक शांतिपूर्ण यात्रा निकल रही थी. उस यात्रा जो निकलती यात्रा में अचानक से रोड के ऊपर पत्थर आ गए, पता नहीं कहाँ से. छतों पे पत्थर आ गए अचानक, पता नहीं कहाँ से. पेट्रोल बम आ गए, पता नहीं कहाँ से. लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. तो अत्याचार तो पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन हिंदुओं पर तो काफी अत्याचार हो गया.
अब उसके बाद वहाँ 6 तो डेथ ऑफिशियली हो गई। आज बल्कि अभी सुबह 2 घंटे पहले एक कार्यकर्ता, बजरंग दल का कार्यकर्ता, जो गुड़गांव का कार्यकर्ता था, उससे दिल्ली लाया गया क्योंकि उसकी हालत ज्यादा खराब थी, उसकी डेथ हो गई। अभी मैं एक बात बताऊं आपको कि ये तो पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए था। हमारे इन्वेस्टिगेशन में बताया, कई बार उनको इंटेल दी गई कि कुछ बवाल हो सकता है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया इस बारे में। दोनों ही चीजें हैं इसके अंदर। मुझे लगता है पुलिस प्रशासन क्या हमारी मदद करेगा, वो हमने देख लिया। वहाँ पर रोड के ऊपर 79 लोगों को मारा गया, 2500 लोग बंदी बना लिए। कहाँ पर? दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर जगह में 2500 लोग बंदी बनाए गए। वहाँ पर उनको बंद करके रखा गया 1.5 घंटे। पुलिस प्रशासन बाहर नहीं निकाल पाया उनको, तो कितनी मदद कर पाएगा प्रशासन, राम जाने। अब उसके बाद आपने अगली बात पूछी, इससे हालत खराब होगा, क्या होगा? अब हालत तो खराब है ही, इसीलिए आज बजरंग दल बाहर निकला। 20 से ज्यादा जगहों पर दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कितनी जगहों पर ये प्रदर्शन होगा, कितने समय तक चलेगा? ये लगातार होगा। सिर्फ आज ही होगा या कल भी होगा? योजना बना रहे हैं तो लगातार होगा। हमें बताना तो पड़ेगा, हम सबल हैं, वरना हमें निर्बल माना जा रहा है। हम अपने देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब बनाएंगे। हम तो हिंदू राष्ट्र ही, जहाँ मेजोरिटी में जिस देश के अंदर, वहाँ पर हम खतरे में हैं। तो फिर तो प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। हम कमजोर नहीं हैं, वरना हम पत्थर खाते रहेंगे ऐसे ही। So Sneha, visibly angry at the fact that a lot of Hindus were attacked in Mewat, and the posters themselves are talking about how Bajrang Dal, the Vishwa Hindu Parishad are congregating in many places, talking about whether the police was actually working to help the people. They've also said that we saw what the police was doing. India Today did an investigation ourselves to say that nothing of that sort was being done as well. And of course, both communities have faced a massive amount of violence. But of course, with a lot of protests like these being planned across Delhi NCR as well as in the country, the Hindu groups are coming together and saying that their voice also needs to be heard. So I'm showing you posters, I'm showing you banners of how people have come together. They are all supporters of the Vishwa Hindu Parishad as well as the Bajrang Dal, stating that they have been facing violence in Mewat and Nuh, and of course something needs to be done for it. Meanwhile, as we speak, sentiments are not very calm in many places in Mewat and Nuh. We already know the spillover has come to Sona as well as in Gurugram. And let me also show you, the police has also been deployed at this place. Heavy police barricading here so that no untoward incident takes place in a lot of places in Delhi where these protests are currently happening. And a lot of people have been concentrated in one area. They're not been allowed to walk out of this cordon. As I show you once again, the police personnel on spot and deployed along with the Rapid Action Force and the CRPF as well on standby in many areas where such kind of protests are taking place right now. Sneha. Milan getting us those pictures in that ground report from all of those from Gonda, in fact, in Delhi, where this protest is being held by the VHP. Milan, you were asking us questions. In fact, you were asking the workers at the Bajrang Dal of the VHP, I beg your pardon, those questions about why should they be protesting right now in the streets. Have permissions been given that sentiments are, in fact, this is a sensitive time. The situation is very sensitive. Is this permitted is what I want to ask you. Yes, Sneha, so we know from the police authorities that have been deployed here that permissions have been given for this particular protest. The protesters are here with banners and posters here, and they are speaking to people about their strategies, about the way that they want to project their voice to the public here. We have seen a small gathering and congregation here at Gonda Chowk. Of course, they are waiting for other orders as well from their other authorities as well. We can hear a little bit of sloganeering in between while they discuss their own strategies. I have another person with me, Sneha, who claims that he was there in Mewat. आप उस ब्रज यात्रा में थे, क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम दिल्ली का दीपक है। उस ब्रज यात्रा में हम लोग आगे की तरफ गए थे। पीछे से हमारे को कॉल आई है कि जहां हो आप वहीं रुक जाओ, यहाँ पथराव होना शुरू हो चुका है। जिस समय की ये घटना, कॉल किया हमारे साथ जो पीछे लोग थे, जिनकी गाड़ियों में बच्चे थे, महिलाएं थी और बुजुर्ग थे, उन्होंने कॉल
कॉल करा, वो पूरी फैमिली के गए थे, वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, वो 2 दिन बाद वहाँ से छूटे हैं, मतलब उनको पूरा मंदिर में किडनैप कर लिया था एक तरह से। कहाँ पर फंसे हुए थे सारे? ये बिल्कुल वहीं पे मंदिर है जो नूर है, नूर और मेवात के बीच में ये 3 गाँव में 4 मस्जिदें पड़ती है। क्या आपको लगा जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पर बलवा हो सकता है? बिल्कुल मैडम, हमारे को रास्ते में महसूस हुआ, क्योंकि जिस तरीके से वो भीड़ में इकट्ठे थे, कान में उन्होंने ईयरफोन लगा के और पूरा बताया जा रहे थे कि इधर इतने लोग पहुंच गए हैं, इधर इतने लोग आ रहे हैं, माताओं बहनों को वहां से वो भागे हैं। और अभी भी जो सरकार का आंकड़ा है और जो विश्व हिंदू परिषद ने बताया वो बिल्कुल ठीक बताया। दीपक जी, फिर मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछूं कि पुलिस को भी ये सब पता था? मैडम पुलिस ने कुछ नहीं करा है, मैं वहीं खड़ा था। पुलिस ने अगर वहाँ कुछ करा होता तो हमारे एसएचओ साहब वहाँ पर वो घायल हुए हैं, 2 वहाँ पर होमगार्ड के जवान जो है शहीद हुए, हम लोग देख रहे थे, हमारे सामने की बातें हैं। और मोनू मानेसर और बिट्टू की तरफ से जो वीडियोस वायरल की गई, उन्होंने गलत बोला है तो उनके साथ आप वो करोगे ना। अगर उन्होंने गलत बोला है, वो उस रैली में नहीं थे, आप उनको सपोर्ट करते हैं? मैडम हम क्यों, देखिए कोई गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, हम उसको क्यों सपोर्ट करें? मगर आप एक बात बताइए, उसकी कार्रवाई का अंजाम अगर आप किसी और को देंगे तो अगर ओवैसी गलत बोलता है तो क्या हम दिल्ली वाले मुसलमानों पर उसका ठिकाना फोड़ देंगे? इसका मतलब इनोसेंट लोग जो हैं वो लोग फंस गए। उन्होंने कुछ भी बोला हो, पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का काम होता है प्रोटोकॉल संभालना। 700 पुलिसकर्मी थे, अनिल विज सरकार की ये फेलियर है। मैं खुल के कह रहा हूँ, अगली बार वहाँ पर जब तक बुलडोजर कार्रवाई ना हो, मैडम 4थी मंजिल से बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग पत्थर फेंक रहे थे, इतने पत्थर थे, उन्होंने पहले ही प्लान करा था। उनके पास ऐसे हथियार थे कि जो हथियार हमने आर्मी वालों के पास भी नहीं देखे हैं। और अगर यकीन नहीं आ रहा है आज तक को, तो मेरी लोकेशन निकाल के देख लो कि हम वहाँ से बचा कर लाए लोगों को। ठीक है, दिलीप जी claims to be one of the bystanders, they're part of the yatra. So Sneha, this is what we've been talking about, that there could be communities who fought with each other, but innocents like these people, their families were also stuck here. I'll also show you here people in the protest that are continuing to sloganeer at the moment, and a lot of these people are from the Vishwa Hindu Parishad as well as the Bajrang Dal here, and as we hear the sloganeering as well, in a lot of places people want to raise their voice against the kind of atrocities that they have faced. And in the posters as well, you can see that they are trying to say that the attacks that have happened on Hindus, specifically in the reference to Mewat violence, currently holds their ground. And we are trying to speak to a lot of people. Now we are seeing that the entire procession over here of the protesters has decided to walk past this particular area, and they're going to walk all the way till Mojpur. So we have the police here, we have the people here, and in a short while from now they will begin walking from here, escorted by the Delhi police personnel as well, who is standing on guard over here in this particular Gonda Chowk area. आप लोग यहाँ से आगे जाने वाले हैं? मौजपुर चौक तक जाएंगे। अभी जा रहे हैं आप? जी। So as you can see that the people have started walking, and this entire procession will now walk from here till Mojpur. Sir, permission है? Permission है sir? Permission hai? So what we hear from the police is now that they are not being given permission to walk from here. They've been contained in this particular area, Sneha, and as I'll show you live images, currently the police is trying to mediate with them to not walk away from this particular area, and they are trying to mediate with the police that they do want to walk. So for now the protest has been contained to particular Gonda Chowk only. Sneha, I'm tossing back to you. Yes. Milan giving us all of those details from Delhi, where protests are being held. These are pictures, in fact, that are coming in from different parts of Delhi. Noida also seeing police presence, and of course Panipat in Haryana has police presence, and bandobast as well, a flag march already being conducted in Gurugram. Bajrang Dal VHP is up the ante against the riots that broke out in Nuh. Amidst the violence, the situation has escalated further, with Hindu groups staging protests in Delhi city too. Bajrang Dal leaders and VHP workers have hit the streets of the national capital, calling, in fact, security has been beefed up, and neighbouring Noida has been put on high alert. Family of the victim who was killed in the violence stormed streets of Panipat seeking justice. 6 people have been killed in these riots that rocked the state of Haryana. मेरे पुत्त नूं मैं 5:30 बज गए जी। मेरे पुत्त ने मुड़ के मेरे नाल कोई गल नहीं करी, ना फोन चुक्या। मेरा पुत्त कल्ला कमाउणा सी जी, मेरा पुत्त कल्ला कमाउणा सी।
News just coming in. Delhi police has issued a statement amid violence and riots in neighbouring Haryana. Delhi police have confirmed that elaborate security arrangements have been made at all sensitive places in Delhi and additional police forces have also been deployed where necessary. Delhi police has also said that any attempt to harm Delhi's security and communal harmony will be dealt with very strictly. Getting in details, remember, not just Nuh and Sohna in Haryana or Gurugram in Haryana, but there are different areas in the national capital region that have been affected. And the police here are not taking any chances. In Delhi too, the police has said that an alert has been sounded in the sensitive pockets of Delhi city. The police bandobast has improved in Noida as well. So Noida remains on alert and so does Delhi city is what we know here. And the Delhi police has said that strictest action is going to be taken against anyone who tries to disturb Delhi city's security and communal harmony. Delhi police issuing a statement amid violence and riots in neighbouring Haryana. The risk of it spilling over to Delhi is high, and that's the reason why the police here are not taking any chances, saying that they have upped the security and that sensitive pockets are getting monitored. Police have confirmed that elaborate security arrangements have been made at most of the sensitive places in Delhi and additional police forces have been deployed where necessary. Delhi police has also said that any attempt to harm the city's security and communal harmony will be dealt with very strictly. This comes at a time when there has been violence in several parts of Haryana for 3 days now, in fact, in a row, where violence has been reported between two communities and protests also continue. Arvind Oja has more details on that story. Arvind, Delhi में भी सिक्योरिटी बीफ अप किया गया है, किन एरियाज पे किया गया है? नोएडा के बारे में भी हमें बताइए. ये रिस्क रहता है कि जो वायलेंस है उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट हो. अब देखिए, जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट है. अगर बीते दिनों की बात करें तो मुहर्रम को लेकर आउटर नॉर्थ दिल्ली इलाके में कुछ स्टोन पेल्टिंग हुई थी. इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है. लेकिन अब दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि जो मेवात में हिंसा हुई है उसके बाद दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट हो गई है. जो भी सेंसिटिव एरिया है वहां पर पेट्रोलिंग वो बढ़ा दी गई है और लोगों से अपील की है दिल्ली पुलिस ने कि किसी तरीके का जो अफवाह होता है उस अफवाह पर ध्यान न दे. सोशल मीडिया पर जो है नजर रखी जा रही है. जिस तरह से कल कुछ हिंदी संगठनों ने भी आज प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, उसको देखते हुए भी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका हो, चाहे आउटर दिल्ली का इलाका हो, आउटर नॉर्थ का इलाका हो, और खास तौर से हरियाणा सटे जो बॉर्डर है या यूपी से सटे जो बॉर्डर है, उन इलाकों में काफी ज्यादा चौकसी बढ़ा दी गई है. तो दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि वो पूरी तरह से अलर्ट है. दिल्ली में शांति बनी हुई है. किसी को भी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं. Arvind Oja, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. Arvind getting us that quick update as far as high alert in the capital of the country, Delhi city, is concerned. More news coming in. A plea has been moved in the Supreme Court of India seeking to stop the rallies announced by the VHP in Bajrang Dal in Delhi National Capital Region following the Nuh communal violence. VHP is scheduled to hold rallies across Delhi today. One such rally was that Milan was in fact reporting on a few moments ago. One is being held. However, there is a plea in the apex court that these rallies should not be allowed at this point in time, given the sensitivity of the situation and given that things could turn volatile following the Nuh communal violence that we've been seeing for 3 days. VHP is actually scheduled to hold rallies across Delhi today. A plea in the Supreme Court of India saying that this must not be allowed. Getting in details as far as the Supreme Court is concerned, there is a plea now in the apex court that talks about the fact that VHP and the Bajrang Dal should not be allowed to hold rallies in different parts of Delhi, because that is something that can further fan the flames. And that's the reason why this rally or these rallies should not be allowed, is what the plea with the Supreme Court of India says. We'll try and get a sense of this in fact information from the Supreme Court. But remember, we're reporting on
the kind of violence that Delhi and cities, towns very, very close to Delhi have in fact seen. Pretty much around 100-kilometer radius have been seen. Kanu has more details on that story. Kanu, this plea talks about VHP and Bajrang Dal rallies in Delhi and elsewhere. What more can you tell us? Yes, Neha, the petition has been mentioned today before the Supreme Court, seeking stay on these rallies, saying that the communal tension will increase if these kind of rallies happen today in the Delhi, because VHP has planned at 3 places in Delhi for the rallies to conduct it, keeping that violent situation in Nuh. The special petition was moved, saying that the cases of the hate speech are increasing day by day, and that is why the court needs to interfere. However, since the Supreme Court today is hearing the Constitution Bench hearing, which is hearing on Article 370, so the Chief Justice of India has declined the urgent hearing into the case. But the petitioners in the case have now moved to the next available judge. So we'll get to know in some time now that whether a hearing on this urgent petition will be done today or not. All right, I'm going to thank you, Kanu, getting asked those details from the Supreme Court of India on whether these rallies should be held or not. There is a petition pending with the court. Well, after Haryana's Nuh, Gurugram's Badshahpur is on the edge as well. Shops have been burned down. Vehicles have been set ablaze by a mob last night. The mob ransacked shops belonging to one community, and at least 7 shops were set ablaze. RAF is conducting flag marches in Badshahpur as violence gripped the region. Tension continues to prevail in Nuh after massive violence was reported. Security has been beefed up. Prohibitory orders have been extended in several areas. 116 people have been arrested so far. 6 people have been killed in the violence in Nuh alone. नूह वाला घटना जो हुई है उसके अगेंस्ट यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो पता नहीं अचानक कैसे और क्या माहौल हुआ कि अचानक हिंसा भड़क उठी, और इसमें यहाँ सिलेंडर रात को ये दुकान बंद करने के बाद शटर तोड़े हैं। शटर तोड़ने के बाद सिलेंडर में ब्लास्ट किया है इन्होंने। वो एक परचूने की दुकान थी, वो भी बंद थी, उनका शटर का ताला तोड़कर वो भी ब्लास्ट किया है। उसमें सिलेंडर में पेट्रोल डाल के आग लगा दी, गाड़ी फूंक दी, स्कूटी फूंक दी, बाइक फूंक दी। मेरा घर अंदर है जी, मेरे घर पे भी तोड़ फोड़ की है। अफवाहों से बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पर्टिकुलरली जब कम्युनल टेंशन्स होती हैं तो अफवाहें बड़ा एक रोल अदा करती हैं। अगर बहुत ज़्यादा अफवाहें, गलत अफवाहें चलाई जाएं तो उससे हिंसा जो है, वायलेंस है, वो और ज़्यादा भड़क सकती है। इसके अलावा हमारी आगे कोशिश ये भी रहेगी कि जो शहर के ज़िले के बाकी हिस्सों में, चाहे वो गुरुग्राम है, पटौदी है, वहाँ पे भी पीस कमेटीज़ को एक्टिवेट करके दोनों समुदाय की बैठक कराई जाएगी, ताकि लोगों में एक सौहार्द का माहौल बने और शांति स्थापित हो। जी, अभी स्थिति बहुत कुछ नियंत्रण के अंदर है। कहीं भी कोई भी छिटपुट जैसी घटना भी, वारदात नहीं हुई है। 2 बार पीस कमेटी की मीटिंग भी करवाई जा चुकी है, और यहाँ पे जो भी फ्लैग मार्च है सुबह शाम किया जा रहा है, और जो सेंट्रल फोर्सेज प्रोवाइड की गई हैं राज्य सरकार के द्वारा, उन सबको भी जहाँ संवेदनशील क्षेत्र हैं उनके अंदर स्टेशन किया जा चुका है, और जो शरारती तत्व हैं उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। हमने अब तक इसमें करीब 16 FIR रजिस्टर करी हैं, और बाकी भी जो कंप्लेंट आ रही हैं उनके बेसिस पे हम FIR रजिस्टर करे जा रहे हैं। और जो भी इसमें शामिल तत्व थे तो उनको, बहुत सारे लोगों को इसमें डिटेन किया गया है, और टेक्निकल एविडेंस, वीडियो फुटेजेज और उनकी जो डाटा है उनके बेसिस पे हम उनको आगे वेरीफाई करके अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई करेंगे। बाजार बंद है, और ऑलरेडी जैसे कि 144 की धारा हमारी लगी हुई है, और सारे हमारे प्राइवेट और सरकारी संस्थान बंद है। एहतियात के तौर पे इंटरनेट बंद किया गया है, और वहाँ पे हमारी टीम अभी वहाँ पे सभी जगह जो कुछ लोग घूम रहे थे उनको वहाँ पे उनको खदेड़ कर आई है, और वहाँ पर अभी स्थिति सामान्य है। सभी DSP और हम फोर्स लेके पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनी हुई है, और लगातार हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो गश्त कर रही है। सभी की हमारी तरफ से अपील है, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अपने घरों पर ही रहें। मेवात में जो घटना घटी है उसको देखते हुए रोहतक में हमने पुलिस के पुख्ता प्रबंध किए हैं, जिसमें मुख्यतः जो हमारे जो हमारी मस्जिद है और ऐसे स्थान है जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहाँ पे
जहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ पे हमने सुरक्षा के पुलिस डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया है। और इसके अतिरिक्त हमने अपने चौकी इंचार्ज के साथ हमने अलग से मुलाजिम डिप्लॉय किए हैं ताकि किसी भी तरह की सूचना मिलने पे तुरंत चौकी इंचार्ज हमारे SHOs और यहाँ तक कि हमारे जो गस्टेड ऑफिसर हैं उनको भी डायरेक्शन दी है कि मौके पे पहुँच के स्थिति को काबू पाएँ। Monu Manesar was linked to the killing of 2 alleged cow smugglers in Bhiwani this February is back in the news after communal violence in Nuh in which 5 people were killed. Violence was triggered after rumours of him attending the VHP Yatra surfaced. While exclusively talking to India Today, he claimed he didn't attend the rally and that a Yatra was fired upon with AK-47 rifle and that the rioters were stoked by Nuh Muslim MLAs including Congress MLA Mamman Khan. Listen in. इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर। मोनू, सीधा सवाल पर आते हैं कि नूह में जो भी हिंसा भड़की है उसमें आपका नाम सामने आ रहा है। मोनू, ये जो भी नाम ले रहे हैं, जो आपने वीडियो देखी है उस वीडियो में कोई भड़काऊ बयान या कोई भी भड़काऊ चीज उसमें तो है नहीं, लेकिन जो भी गो तस्कर है जो वहां पे क्राइम करते हैं ये सब उनका करा धरा है। साइबर क्राइम थाना फूंक दिया उन्होंने, सब उनकी बदौलत है। पर जो पिछली साल जो घाट मीका का इंसिडेंट हुआ नासिर जुनैद वाला, उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव था। फिर ऐसे में आपका वीडियो आना उसने उकसाने का काम करा है। कई जो आपके वीडियोस पे रिप्लाई आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके वीडियोस ने जो है वो उकसाने का काम करा है इस यात्रा में? कोई उकसाने का कार्य नहीं किया, ना मैं उस यात्रा में गया क्योंकि हमारे अधिकारी गण थे। उस यात्रा में मैं था ही नहीं। हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हैं, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी सीधा फायरिंग की गई है। तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? हमारी हिंदू बहन बेटियों पर सीधा फायरिंग, और ये हिंदू समाज बिल्कुल नहीं सहेगा कि एक मुस्लिम बाहुबल्य क्षेत्र में एक तरह से पूरी तरह घेर कर गोलियां चलाना, जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं और मेरे साथियों से मेरी बात भी हुई है कि 47 जैसे मतलब आधुनिक हथियारों से भी गोलियां चलाई गई हैं, लॉन्चर भी चलाए गए हैं, जो हमने सुना है, हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने बताया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लेकिन अब ये जो 5 मौतें हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते? क्योंकि आपका वीडियो आया था और प्रशासन जो है उसको पता होने के बावजूद भी पुख्ता इंतजाम नहीं करे, तो क्या ये आपके भाषण को जिम्मेदार माने या प्रशासन की लापरवाही को माने? इसमें सारा जिम्मेवार वहां के मुस्लिम विधायक। कौन है ये मुस्लिम विधायक? आपने देखा होगा, उनकी न्यूज आ रही है, मामन खान है और कई विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मतलब मुस्लिमों को कह रहे हैं मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। लड़ाई लड़नी है तो जंग पे जाओ ना, यहाँ पे क्या लड़ाई लड़े हो? तो आप वहां उस यात्रा में थे या नहीं थे? एक आखिरी सवाल मेरा आपके लिए था, क्या वहां आप जाने वाले थे, आपको रोक दिया गया? आपने क्यों लास्ट टाइम पे प्लान कैंसिल करा? मेरा लास्ट टाइम पे प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इसलिए था, मेरे से प्रशासनिक अधिकारियों का, मेरे अधिकारियों के पास मैसेज आया था और मेरे पास भी मैसेज आ गया था कि भाई साहब आप जाओगे तो वहां पे मतलब माहौल बिगड़ सकता है। तो मैंने सोचा कि हमारे मतलब यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, हमारे मंदिरों में पूजा होनी चाहिए। तो हम इसी वजह से नहीं गए क्योंकि मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तो वहां पे माहौल खराब हो सकता है। सोशल मीडिया के द्वारा कोई सिलेंडर फोटो लगा रहा है कि हम बम से उड़ा देंगे, कोई बम का फोटो दिखा रहा है हम उड़ा देंगे 47 से। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रशासन से आपकी बात हुई थी? मेरे अधिकारियों की, आपके जो दल के जो अधिकारी है उनकी? जी, उनका मैसेज मेरे पास आया था, जिला प्रशासन से उनकी बात हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। Car vigilante Monu Manesar has an ongoing feud with Congress MLA from Nuh region Mamman Khan. Now Khan had earlier openly threatened to target Monu Manesar if he comes to Mewat. Mamman Khan was speaking in Haryana Assembly. आप बैठिए, आप बैठ जाइए, डर जा तू, जरा जी बैठो, बैठ जा, इतना बड़ा नहीं है अभी, तू बैठ जा अपना। ये मोनू मानेसर दिखाता है कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यार सी ना फोड़ी तो मेवात के हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। भाई डट जा रहे, जब बोलिए क्या होगा? भी मेरा ये किस आधार पर हथियार दे रखे हैं आप लोगों ने? क्या मुसलमानों को मारने के लिए दे रखे हैं आपने? ये
Getting you all the updates as far as Haryana violence is concerned. Let's now talk about the regions that have been affected. Which are these regions? All in the vicinity of Delhi city, the national capital of India, Gurugram, which is in fact, here petrol pumps have been banned from selling loose fuel. Section 144 has been imposed. And we have Sona, which is in fact just about 66 kilometers from Delhi, where schools and colleges have been shut. And Nuh, just about 87 kilometers from Delhi, where curfew has been imposed, internet services have been suspended. Let's talk about Sonipat now. A distance from Delhi to Sonipat is about 43 kilometers. Prohibitory orders are in place. And Palwal, again, just about 95 kilometers away from Delhi, Section 144 have been imposed. Pretty much within 100-kilometer radius of Delhi city, all of these towns have been affected. We have in fact more news coming in. The BJP is now alleging a Congress link to the Mewat violence. Getting in details of the BJP now, saying that the Congress is behind the violence that Mewat has seen. BJP has raised the Congress MLA Mamman Khan's speech, saying that he in fact in the assembly had in fact said that Monu Manesar is going to be dealt with if he comes to Mewat. We played that out for you as well. BJP says this speaks volumes of the Congress's link to the violence in Mewat. Mamman Khan, in fact, is the MLA of this particular region. Inside the Haryana Assembly, it's spoken about Monu Manesar and his links with the BJP and had threatened that he's going to be dealt with if he comes to Mewat region. The BJP says it's clear that there is a Congress link to the Mewat violence that we've been seeing. Congress MLA Mamman Khan is behind it. His speech speaks volumes of this. BJP's Amit Malviya has said Mewat violence has Congress connection. So this, in fact, is now being said by the BJP that Mamman Khan, the MLA of the Congress party, had in fact spoken about consequences if Monu Manesar were to be seen in Mewat, and that's the reason why the BJP says that the Congress essentially is behind it. More news coming in. Well, this afire was registered in Mewat. Inspector Anil Kumar, who had come from Gurugram to, in fact, do his duties in Mewat, was shot. A mob of 600 to 700 anti-social elements came from Taudu area shouting slogans and pelted stones at the policemen. The mob was firing at the police with illegal weapons. We appealed to everyone through mics to maintain peace, but the mob kept on pelting stones, firing with weapons which hit Inspector Anil Kumar in the abdomen. Some policemen were also injured. The BJP says there is a Congress link to all of this. Amit Malviya of the BJP has spoken about the role of the Congress MLA Mamman Khan. Amit Malviya is now with us. Amit Malviya, we've also in fact heard what was said by the Congress MLA in the assembly. Are you saying that this speaks volumes of the fact that Congress organized all of this? Congress MLA Mamman Khan has been on record in Haryana Assembly speaking about a possible conflict in Mewat. What we saw the other day was at his instigation. There are several videos of people associated with Mamman Khan echoing his statement, his words verbatim, as they mobilized people to attack the Shobha Yatra. 116 people have been arrested, and those behind this violence are being booked. The law will take its course, but one thing is very clear, that there is a strong Congress link. Not just this, a post by the Indian American Muslim Council, written in Hindi, a radical US organization which hosted Rahul Gandhi while he was in the US, is also part of this trouble. So clearly the Congress link is emerging fast and quick. And if you recollect the sequence of events, the first people to come in defense of what happened in Mewat were Congress leaders close to Rahul Gandhi. Now, put all these things together and you will get a picture. The police
and the paramilitary forces have been deployed in big numbers to ensure that no untoward incident happens. But the matter is being investigated, and there are details that are emerging showing clear Congress links behind what happened in Mewat. Concerns have been raised by this same MLA in the past as well, given Monu Manesar's history about the fact that he is a car vigilante and that there is mayhem because of him. This is what also that he was referring to when he spoke in the assembly, Mr. Malviya, and his connections with the BJP. Yes. Monu Manesar has been booked in Rajasthan. There's a Congress government in Rajasthan. Please ask Ashok Gehlot what have they done. And Monu Manesar was not there in the yatra from what details have emerged. So how come all these stones, iron rods, illegal weapons and were organized? How was material to torch several hundred cars on the highways organized? Was it all done on the pretext of Monu Manesar, or was it done by Maman Khan's men? Okay. Such mass mobilization cannot happen in 24 hours. And if you have a problem with Monu Manesar, please ask the Rajasthan government what they have done. It is for them to answer. It's a Congress government there. Ashok Gehlot is answerable. Okay. All right. I'm going to thank you, Mr. Malviya. We'll put out that bite. In fact, that what was being said by the Congress MLA Maman Khan in the Haryana Assembly in the month of February while he was speaking about Monu Manesar. Listen in. आप बैठिए, आप बैठ जाइए, डर जा तू, जरावता जी बैठो, बैठ जा, इतना बड़ा नहीं है भी तू बैठ जा अपना। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है, क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात के हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। भाई डर जा रे, जब बोलिए क्या होगा? भी मेरा ये किस आधार पर हथियार दे रखे हैं आप लोगों ने? क्या मुसलमानों को मारने के लिए दे रखे हैं आपने ये? आप बैठिए। More news coming in. Well, the FIR was registered in Mewat when Inspector Anil Kumar, who had come from Gurugram to perform his duties in Mewat, was shot. This FIR blames 700-strong mob with villagers' chants. The mob was firing at the police with illegal weapons. We appeal to everyone through mic to maintain peace, but the mob kept on pelting stones and fired illegal weapons, using illegal weapons, which then hit Inspector Anil Kumar in the abdomen. Some policemen were injured as well. The police fired in the air with AK-47, but the mob kept on attacking, is what the FIR reads. Arvind Oja has got more details on that. Arvind, mob था और presence इस तरह की थी कि 700 लोग थे, ये कहाँ जा रहा है? Okay, this FIR talks about the fact that there was one cop who was shot in the abdomen, and there were others also who were injured in the violence that then followed. It was a mob. The strength of the mob was 700 people. They were chanting religious slogans, is what we've been given to understand. I'm getting you details, in fact, from the FIR, essentially. The mob, in fact, that fired at the cops, in spite of the cops, in fact, trying to ask for peace. In this area, there were several other policemen who were also injured. Cops then had to resort to firing in the air with AK-47, but the mob kept on attacking. Arvind Oja has more details on that. Arvind, इस FIR के details के बारे में बताइए। देखिए, ये उस दिन की FIR है जब नूह इलाके में हिंसा हुई थी। ये FIR गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच में तैनात एक इंस्पेक्टर पंकज है, उन्होंने दर्ज कराई थी मेवात में। दरअसल चूंकि शोभा यात्रा निकलनी थी, इसलिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पुलिस टीम को बुलाया गया था, जिसमें गुरुग्राम से क्राइम ब्रांच की टीम को बुलाया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर पंकज कुमार, अनिल कुमार, ये सब लोग आए थे। और बाकायदा FIR में बताया है कि जब नूह के एक चौक पर ये तमाम पुलिसकर्मी खड़े थे, तभी 600 से 700 की जो भीड़ है वो धार्मिक नारे लगाते हुए आई, और उसके बाद जो पुलिस कर्मी थे उन पर स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी। न सिर्फ स्टोन पेल्टिंग, बल्कि FIR के मुताबिक इलीगल वेपन्स थे भीड़ के पास। वो भीड़ इलीगल वेपन से लगातार पुलिस पर अटैक कर रही थी, जिसमें एक गोली क्राइम ब्रांच के जो इंस्पेक्टर है अनिल कुमार, उनके पेट में लगी। पुलिस ने उसके बाद जो भीड़ थी उसको काबू में करने के लिए AK-47 से हवा में फायरिंग की, लेकिन उसके बावजूद
जो भीड़ थी वो लगातार धार्मिक नारे लगाते हुए वो पुलिस कर्मियों पर स्टोन पेल्टिंग कर रही थी, इलीगल वेपन से अटैक कर रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो गुरुग्राम से इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच अनिल कुमार मेवात में ड्यूटी के लिए आए थे, उनके पेट में गोली लगी, उन्हें मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया। साथ ही साथ कुछ पुलिसकर्मी स्टोन पेल्टिंग में इंजर्ड हुए। तो ये एफआईआर ये बताती है कि किस तरीके का मंजर उस दिन हिंसा के बाद हुआ था। देखिए, इसको लेकर अलग अलग तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं। खुद कल हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ये पूरी प्लानिंग लगती है। जो कांग्रेस के एमएलए हैं नूह के, वो भी कहते हैं ये प्लानिंग लगती है। और जिस तरह से एफआईआर लिखवाई गई है और जो कुछ जो आई विटनेस है पुलिसकर्मी जो इंजर्ड हुए, उन्होंने बताया कम से कम यही लगता है कि भीड़ पूरी तैयारी के साथ आई थी। तावड़ी इलाके से, जो मेवात से सटा एक इलाका है, वहाँ से 600 से 700 की भीड़ आती है और पुलिस कर्मियों पर स्टोन पेल्टिंग करती है, साथ ही साथ इलीगल वेपन से फायरिंग करती है। जी बिल्कुल। Arvind getting us all of those details as far as this mob is concerned. इस कनेक्शन में कितने अरेस्ट हुए हैं, इस मॉब में कितने लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं, कि फायरिंग हुई थी पुलिस ऑफिसर्स पे, 10 पुलिसमैन इस पे घायल थे। अरविंद, देखिए, मोर देन 20 पुलिस पर्सनल इंजर्ड हैं स्नेहा। 2 होमगार्ड उनकी मौत हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। गुरुग्राम पुलिस के थे वो भी, वो आए थे मेवात में सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए। 2 होमगार्ड वो उनकी डेथ हो चुकी है। जो इंस्पेक्टर अनिल कुमार, उनके पेट में गोली लगी हुई है, उनका मेदांता में इलाज चल रहा है। जबकि 100 जो हिंसा करने के आरोप में तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। 29 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। अभी भी वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज वो जो मेवात पुलिस है वो एक्सेस कर रही है, वो खंगाल रही है, ताकि जो भी हिंसा करने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद ओझा getting us all of those details as far as the violence being reported in Haryana and neighboring regions concerned. It's time for a quick commercial break here. We're getting you much more news in just a bit. You are watching India Today. India Today is at ground zero in Torbang, and the situation is so vulnerable. Simultaneously, there is accusation of using sophisticated weapons, but these young boys risking their lives and using these single barrel gun and double barrel gun. We love our land and our village, that's why we sacrifice our life. No one could ever imagine that in a state, in the same country, in the same district, we will ever see such situation which has become a battlefield, and I could say this is a war zone in Manipur. Grounded in journalism, on the ground reporting, only on India Today TV. On this investigation, which shows that the local administration and the police had been forewarned that there was this yatra passing through communally sensitive areas, that security needed to be beefed up, and yet for some inexplicable reason the inputs which were available were not acted on. People with weapons, sticks, throwing stones were allowed to take out this yatra, and mayhem broke out in Mewat. As someone who comes from the state, what do you think really went wrong, Mr. Surjewala? I have been repeatedly saying that the violence in Nuh Manesar and Gurgaon is actually state manufactured. It is failure of political leadership of Chief Minister Mr. Manohar Lal Khattar. 3 things stand out. Number 1, there was a LIU report, that is intelligence report, saying such an incident is bound to happen. Number 2, the infamous goon Monu Manesar was a part thereof. Any sensible government would have either arrested him in anticipation of violence or at least would not have permitted him to participate here. Number 3, the superintendent of police of Nuh was on leave.
When you knew such a sensitive thing was happening, you had a report that violence will take place, you did not even call the rapid action force, which is situated only 2 kilometers away. That means, in order to gain political mileage, the BJP-JJP government was actually permitting this violence to happen. And Rahulji, may I point out to you, we know that over 100 people died in the Arakshan agitation when the caste war happened in Haryana under the watch of Mr. Manohar Lal Khattar. He turned out to be a political beneficiary of the same in the last assembly election. Now, for the first time in 75 years history of India, a communal flare-up is happening in Haryana, something that is alien to Haryana. We are peace living, we have cohabitated with the Mewat people. There have never been any clashes. In fact, in the pre-partition day, Haryana portion was the only portion of India when, despite there being overwhelming Muslim population, there was never a communal clash. In less than 2 months from now, the new iPhone 15 will be on sale across the world. While Business Today TV had reported on Friday about the price of its high-end models crossing the 2 lakh rupee mark for the first time, BTTV has got hold of more details about the much-anticipated Apple handset. It's likely to have the smallest bezel yet and could be rid of the infamous notch. Apart from the all-screen upgrade, the iPhone 15 and 15 Plus will also come packed with major camera improvements, and the traditional lightning connector will give way to the faster USB-C. Tech Today's Danny De Cruz has more on all the new features expected. Danny, take it away. The new Apple iPhones are coming soon. Most likely, they will be here by September. So a new report has leaked a lot of information about the iPhone 15 series. So let's start with the more affordable iPhone 15 and iPhone 15 Plus models. The biggest change coming to these models is that Apple will finally do away with the notch. Both the iPhone 15 and iPhone 15 Plus will get the dynamic island, which was last seen in last year's Pro models. The cameras are getting a massive upgrade too, along with the performance. And yes, gone are the days of Lightning port. All new iPhones will be getting the USB Type-C for the first time. Now on to the Pro models, in which Apple is replacing the shiny frame with titanium. So your new iPhones will be strong too. The displays will also be better because of thinner bezels. And Apple is giving the camera hardware a substantial boost. The performance alone will make the iPhone 15 Pro models a compelling upgrade. They will become the first smartphones to use a 3nm chipset. All these upgrades make the new iPhone 15 models a good upgrade, but you will also have to shell out more money. Some models may even cross the rupees 2 lakh price point in India. All right, thanks for that, Danny. You are watching India Today. Welcome back. The Karnataka Milk Federation KMF selling ghee to Andhra Pradesh's Tirumala Venkateshwara temple under the brand name Nandini has decided to stop its supply over price issues. The KMF has decided to skip the tender process for the supply of ghee as it was not ready to supply ghee at a competitive rate fixed by the Karnataka government. Here's more.
the revered Tirumala Tirupati temple famous for the divine darshan of Lord Venkateshwara, and equally famous for the sumptuous blessed laddu. These laddus are painstakingly made with the best quality ghee, also known as Nandini ghee, sourced from Karnataka for the last 50 years. But no more. The Tirupati Tirumala Trust has announced they will no longer buy ghee from the Karnataka Milk Federation. Why? Because Nandini ghee and all related products prices have shot up. The Karnataka cabinet approved a price increase for Nandini milk of 3 rupees per litre. The result of this is a war of words between the TTD and the Karnataka Milk Federation. The KMF even claimed that the contract ended 1.5 years ago with the Tirupati Trust. Sir, I need your few basic information about your contract with Tirupati, sir. Why they have backed out from buying Nandini ghee, sir? What is the reason behind that? Because of the rate. Because when the tender is called, everybody participates in the tender. Okay. Whoever comes the lowest price, they are procuring from them. That's all the issues. Okay. Yeah. How much was that, sir, when you quoted the tender? No, we quote almost more than 400 rupees per kg. Okay. So in that, even 1 rupees, 2 rupees also, if somebody quotes lesser, they will go with the buyer bidder who quotes a lesser price. Now the TDD has refuted all of these claims, maintaining they follow a fair process via e-tender on choosing who will win the contract for providing ghee and all other products for the making of the famous laddu. TTD procures all the items required for the TTD, including ghee, through e-tender process by floating the tenders, inviting the eligible suppliers all over India. TTD is also a government organization. We have to award a contract to L1, that is the lowest offered rate only. Politics has also broken out in Karnataka over the ghee war as the BJP accused the Congress government of ignoring the sentiments of Hindus. This government has got no regards for the Hindu sentiments as well as for the relationship or the seva what was happening through the Nandini. It was a very, very good for us, and it was very important even for Nandini's marketing, our credibility, to show the purity of Nandini. Now, the next time you go to Tirupati, if you feel the laddus taste different from how they did before, you know why. With Sagai Raj in Bengaluru, Bureau Report, India Today. It's time for a break. Here on the other side, death toll rises to 6 in Haryana riots case. Kawa Jilam the Monuman said denies a hand in Haryana riots, has blamed the Nuh Congress MLA. You are watching India Today. Weather forecast now. Delhi, maximum 39 and minimum 29 degrees. Mumbai, maximum 28 and minimum 26 degrees. Kolkata, maximum 31 and minimum 26 degrees. Bangalore, maximum 28 and minimum 20 degrees. Chennai, maximum 35 and minimum 28 degrees. Hyderabad, maximum 29 and minimum 23 degrees.
have come out very strongly against what has happened in the railway compartment, the cold-blooded murder of 4 people, and then what's happened in Nuh, Hindu-Muslim violence. Let's get it clear. You have called the railway compartment incident a terror attack. Have you jumped the gun? Because the FIR is very clear. It says there is no communal angle. At least no communal angle is specifically mentioned in the FIR. Should one be more cautious in the times in which we live before suggesting it is a communal crime? The reason I have called it a terror attack is because this was a man who was in uniform, and he had first assassinated or murdered his superior AS officer who belonged to the tribal Meena community. Then he went into 3 different railway compartments and identified Muslims who were having beard or wearing a cap, and then shot them dead. In fact, there is a video still available wherein this man who he shot, who's cringing in pain, who's turning from right side to left side, subsequently he died. Unfortunately, he's from Hyderabad, a place called Bazar Ghat. So this man went around 3 compartments of the railways, identified Muslims with their attire or with their beard, and shot them dead. And in a video he says that is desh mein rehna hai to Yogi, Modi or Thackeray. Now, unfortunately, the government of India wanted the Twitter to remove my tweet, and unfortunately the Twitter had succumbed to the government pressure tactics, and that tweet of mine has been removed from, it cannot be seen in India. No, that is because again these are very sensitive. No, Mr. Owaisi, that's because these are very sensitive issues. You know, this is clearly a killing that needs investigation. No one doubts about it. It could well be a hate crime. You could be right that it could be a hate crime. The only point is, in the times in which we live, one has to be a little cautious. That's all I'm saying. Well, Rajdeep, whatever times we live in, we have to say the truth clearly and loudly without mincing words. I will reiterate again that it was a terror attack done by a person who was radicalized and who had become extremist because of the conducive atmosphere of radicalization and extremism that has been created by the ruling party in last 9 years. And that is why we see that this man has no fear. He's standing at a dead body with his licensed weapon. Very good afternoon. You're watching India Today. I'm Nabila Jamal. Let me take you through all the top news coming in as the centre all set to place the Delhi Ordinance Bill in the Lok Sabha. The headlines first. Horrific FIR details of Haryana riots. The FIR blames 700-strong mob with religious chants. Mob fired at cops. 1 cop shot dead. Many others injured. Death toll rises to 6 in Haryana riots case. Cow vigilante Monu Manesar denies his hand in Haryana riots, blames Nuh Congress MLA. Deputy Chief Minister Dushyant Chautala now blames organizers for the violence. हमेशा इस देश की अखंडता और एकता के साथ जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया. कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई. Backlash of Haryana violence in Delhi and Uttar Pradesh districts. The VHP and Bajrang Dal conduct flag march in Noida. Protesters hit the streets of East Delhi.
Sidhu Sarkar under fire amid massive fund crunch. The SC/ST welfare funds diverted for freebies. Karnataka minister refutes charges. The BJP calls the Siddaramaiah government is anti-poor. US charges former President Donald Trump with conspiracy to fraud the country and witness tampering in 2020 Capitol Hill riots case. Here's some big news coming in. Another shot in the arm for the centre in the parliament after BJP and the YSRCP. Now the TDP also set to back the Modi government. When it comes to the Delhi Ordinance Bill, it appears that the centre has the numbers. At least in the Lok Sabha, they have overwhelming support. More than 300 are their own NDA alliance partners. In the BJP itself, the MPs across the 300 mark, plus the alliance partners, many of them now. Opposition TDP has decided to back the government on the Delhi bill, as well as the no trust war. TDP has 3 MPs in the Lok Sabha and 1 in the Rajya Sabha. One should remember that even the YSRCP had earlier agreed to support the government. YSRCP has a sizable chunk of MPs, and it appears now the TDP also looped in to support the centre on the bill as well as the no trust vote. All right, let me quickly cut across to Rajasthan. Sacked Mantri Rajendra Gouda, who's come out with a red diary with claims of corruption that he's made against the Chief Minister. He's speaking, listen in. घास की रोटियां खा रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, दुनिया याद करती है। मानसिक फर्स्ट सारे के सारे सोने के रथ थे, बर्तन सोने के थे, दुनिया की उस जमाने की सारी शान शौकत सुविधाएं उनके पास थी, कोई नहीं याद करता। तो मैं ये कि जो संघर्ष करेगा, जो लड़ेगा, जो संघर्ष करेगा सच्चाई के लिए, मैंने माता और बहनों का मुद्दा उठाया, क्या गलत कर दिया मैंने, किस चीज की माफी मांग लूं मैंने यही तो कहा था अपने गिरिबान में देखो राजस्थान नंबर 1 हो गया महिलाओं के दुष्कर्म में। इस क्या कह दिया मैंने इसमें, किस चीज की माफी थी? रंधावा जी से पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे माफी मांगने के लिए क्या गलती की थी? मैंने इनको 2-2 बार बहुमत दिया है। आज से 11 महीने पहले पूरे नहीं हुए, मुख्यमंत्री जी मेरे घर गए थे मेरे बेटे के जन्मदिन पर। 50-60 हजार लोगों के बीच में कह के आए थे कि गुड्डा नहीं होता तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। क्या हो गया मेरा गुड्डा, खराब कैसे हो गया? 11 महीने पहले तो गुड्डा ठीक था। सर, इस लाल डायरी के लिए जी आप लाल डायरी लेकर आए हैं, आपने एक पट्टा खोला है, तो बाकी पत्ते और कितने हैं क्यों नहीं खोल रहे? एक साथ खोलने में देखिए मैं आपको बता, एक क्यों खोल रहे हैं? आपको लगता है ये खोलने के बाद कुछ और आएगा तो हो सकता है बाकी मुद्दे बच जाए, या फिर पूरे खोलना एक साथ मीडिया के सामने? देखिए आपकी बात से 100% सहमत हूँ मैं, 100%। लेकिन मेरे खिलाफ भी रोज मुकदमे एक साथ क्यों नहीं हो रहे? एक मुकदमा आज हो रहा है, एक मुकदमा बाद में हो रहा है। जिस तरीके से आप उनके कदम पर क्यों चल रहे हैं? आप तो अपने पत्ते एक साथ खोल दीजिए ना। देखिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, राजेंद्र गुड्डा पर चार्ज लग रहा है कि राजेंद्र गुड्डा बीजेपी से मिला हुआ है। अरे 15 साल साथ रहा हूँ इनका, 6 बार इनके कहने से राज्यसभा को वोट दिया है, 6 बार, 2 बार राष्ट्रपति को वोट दिया है। संकट में इनकी सरकार बचाई है मैंने, संकट में। और इनको 6 MLA, बसपा विधायक दल का नेता था, कुछ सोच के आया था, ये पता नहीं था कि आखिरी सत्र के सेकंड लास्ट दिन मेरे साथ ये किया जाएगा। मुझे एक बात, मेरी राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मेरे से डायरी छीनी जाती है जिस तरीके से तो छीनने वाले ने कोई पाप नहीं किया, उसका निष्कासन नहीं होना चाहिए। किसी के आपके यहाँ से कोई कैमरा छीन ले, कोई छीन ले, ये पाप नहीं है क्या? गलत नहीं है क्या? राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मेरे से डायरी छीन ली गई जिस तरीके से, उनको निष्कासन नहीं करना चाहिए। All right, now Haryana Home Minister defends the cow vigilante Monu Manesar, says Monu didn't talk about riots in his video.
which says that Monu just asked people to come for the yatra. Monu Manesar didn't incite riots. These are the words of the Haryana Home Minister, who says that Monu Manesar, the man who's been accused of murder, who's accused of kidnap and murder of two men in the name of, he is a cow vigilante, and attempted to crack down on those who are smuggling cows, and then went on to abduct and accused of killing two men in that suspicion. So Monu Manesar, we believe, is one of the main reasons to why the riots broke out. And here, the Home Minister of Haryana, right after the riots have taken place, days after, he comes out to defend Monu Manesar, saying it wasn't Monu Manesar who instigated riots. All he did was invited people for the yatra. Let's have a listen. मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है। वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है, तो उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। All right, that's the Home Minister who says it wasn't Monu Manesar who instigated riots. Now, one should know that the riots broke out over some chants in support of Monu Manesar. There was talk about Monu Manesar. In fact, while the procession was passing through some of the Muslim-dominated areas, we believe these are allegations that Monu Manesar was hailed, and this is what led to clashes, stone pelting that erupted, and that's when the situation, of course, got out of control. What's tragic here is that the police wasn't able to control the violence, even though it went on for hours. Several vehicles were torched. People had to rush to a temple to take shelter for safety. Despite all of that, the police wasn't able to bring the situation under control with immediate effect. It went out of hand quite quickly. Nearly 6 people have lost their lives in these riots. So one should know that this is certainly a complete failure of the Haryana government not to ensure that this could have been avoided. They had really no security in place, despite a yatra as big as this was decided beforehand and was due to be rolled out. Let me quickly cut across to Satyendra, who's joining us, our reporter, our correspondent, for more on that. Satyendra ji, यहाँ पर मोनू मानेसर का रोल क्या है? जो राइट्स में बहुत सारे लोग हमने सुना है कि मोनू मानेसर को बहुत तारीफ कर रहे थे और इस वजह से राइट्स हुआ। मोनू मानेसर का ये केस में क्या रोल है, आप बता सकते हो? देखिए, मोनू मानेसर का केस में क्या रोल है, वो हरियाणा सरकार के गृह मंत्री से कल हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अंदेशा नहीं था कि इस तरह की घटना यहाँ पर हो सकती है। यानी कि उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस से उनको इनपुट नहीं मिल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अब मोनू मानेसर का रोल क्या है, वो पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा था। मोनू मानेसर लगातार फेसबुक और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर लगातार सारे सिस्टम को चैलेंज कर रहा था, लोगों से अपील कर रहा था, गुड़गांव पहुंचो, सोहना पहुंचो, मेवात पहुंचो, और वो लगातार चैलेंज किया जा रहा था। और दूसरी तरफ ये कार्रवाई एक तरफा नहीं है, दूसरी तरफ से भी इन चैलेंज के जवाब सोशल प्लेटफॉर्म पर दिए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इतना सब कुछ फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा था, गवर्नमेंट को इसका पता नहीं चला। दूसरी बात, वो बहुत सारे वीडियो हैं जो अभी भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर पड़े हुए हैं, जिनको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर रास्ते में इस यात्रा के लिए निकला भी था। वहाँ पर सभी हैवी से हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी। इसको हायर अथॉरिटीज़ द्वारा क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा था। लेकिन इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी घटनाएं जो सामने आई हैं पिछले 2 दिनों के अंदर, वो डीएस्केलेट हुई हैं, जो कि 31 को जितनी घटनाक्रम हुआ था उसके बाद जो सोना के अंदर 5 FIR रजिस्टर्ड हुई थी। सर, 1 मिनट, इसकी मस्जिद की बात करते हैं। मस्जिद के बाहर पुलिसकर्मी तैनात थे, हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात थे। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी, कैसे कंडीशंस बनी कि वहाँ पे सो रहे लोगों के ऊपर फायरिंग की गई, चाकू से हमला किया गया, उसकी हत्या तक कर दी गई? नहीं, वो सभी CCTV फुटेज वगैरह देख रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, जैसी सूचना मिली पुलिस उस मौके पर पहुंची है और लोग वहाँ से भाग चुके थे।
जिस दौरान जितने भी सस्पेक्ट वहाँ पर लोकल जितने भी सीसीटीवी की मदद से या जो आई विटनेस की मदद से हम जितने लोगों की पहचान कर सकते थे, जल्द से जल्द पुलिस ने कोशिश करी, उन लोगों को डिटेन करी, एप्रीहेंड करा और 4 व्यक्ति विशेष जिनका मैंने आपको नाम बताया है उनको अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल करी। और जितने भी लोग हैं, ये स्पष्ट संदेश हम देना चाहते हैं, जितने भी लोग इस प्रकार की घटनाक्रम में इन्वॉल्व रहे हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाएगा। मैं आपको गुड़गांव पुलिस के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के फॉल्स रूमर्स जो खासकर सोशल मीडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन पर आप बिलीव ना करें। गुड़गांव पुलिस की तरफ से आपको स्पेशल अपील करी जाती है कि गुड़गांव में सारी स्थिति नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है। किसी भी प्रकार का जो रूमर्स फैलाया जा रहा है कि ऑफिसेज बंद हैं या वर्क फ्रॉम होम है या डिलीवरीज नहीं हो रही, किसी भी प्रकार से किसी चीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। गुड़गांव में विद इन गुड़गांव और आउटसाइड गुड़गांव रूट्स पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ट्रैफिक स्मूथली मूव कर रहा है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। पिछले कुछ 2 दिनों के अंदर कुछ छोट-मोट घटनाएं और वारदातें हुई हैं, उसके तहत गुड़गांव पुलिस द्वारा सख्ताई से कार्रवाई करते हुए, हैवी डिप्लॉयमेंट करते हुए संवेदनशील एरियाज़ के अंदर कार्रवाई करी गई है, एफआईआर रजिस्टर्ड करी जा रही हैं। और जो भी अगर कंप्लेंट देना चाहता है तो 112 जो गुड़गांव पुलिस का कंट्रोल रूम का नंबर है, 112 के माध्यम से आप कंप्लेंट दे सकते हैं, कोई रिपोर्ट कर सकते हैं, आपकी सूचना भी गुप्त रखी जाएगी। किसी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप गुड़गांव पुलिस 112 नंबर पर डायल करके आप मदद मांग सकते हैं। सर, बीती रात 2 घंटे के भीतर 6 जगह पर आगजनी की घटना हुई, क्या कुछ सूचना मिली किस वजह से आग लगी है और कोई गिरफ्तार भी हुआ है? जो 1 अगस्त की हम बात करें तो 4 घटनाएं हमारे पास रिपोर्ट हुई हैं और जगह जगह पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी इस बारे में। वो छोटे छोटे कुछ लड़के ग्रुप्स बना के घूम रहे हैं जो किसी अगर कोई मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। पुलिस उनकी मदद के लिए और उनकी जान और माल की सुरक्षा और रक्षा के लिए तैनात है। वो छोटी मोटी जो 4 घटनाएं जो रिपोर्ट हुई हैं उसके तहत कार्रवाई करी जा रही है, उनकी पहचान करी जा रही है। कुछ लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा भी जाएगा और कानून के तहत जायज और प्रॉपर कार्रवाई, स्ट्रिक्ट कार्रवाई करी जाएगी। प्रवासी मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, जो खोमचे वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, जो मीट शॉप वाले हैं, तो गुड़गांव पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ करने जा रही है? पिछले 2 दिनों के अंदर देखा गया है कि खासकर जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो ये कार्रवाई हुई है और खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार के रूमर्स फैलाए गए हैं उसको गुड़गांव पुलिस कंडेम करती है। लेकिन इस बारे में जरूर आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति विशेष है तो वो तुरंत किसी भी प्रकार से उसको अगर किसी बात का भय लगता है, डर लगता है तो 112 नंबर पर डायल करके पुलिस से मदद ले सकते हैं। उसके अलावा मैं अपडेट करता हूँ साथ साथ कुछ लोगों के पास हमारी इन्फॉर्मेशन आई कि उनके मन में डर और भय का जरूर ये भाव था कि गुड़गांव में उनकी स्थिति किसी प्रकार से अगर उनको डर लगता है तो शायद उनके ऊपर कोई अटैक ना हो जाए। तो गुड़गांव पुलिस उनको विश्वास दिलाती है और हमने काफ़ी ऐसे लोगों को विश्वास दिलाया है पर्सनल तौर पे भी कि इस प्रकार से किसी को अपना घर छोड़ के जाने की, दुकान और अपना काम छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। गुड़गांव में स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, साधारण है। किसी प्रकार से भी अगर किसी को डर या भाव ऐसा कुछ किसी के मन में लगता है वो तुरंत प्रभाव से गुड़गांव पुलिस में किसी भी माध्यम से अब गुड़गांव पुलिस को संपर्क कर सकता है। गुड़गांव पुलिस तुरंत प्रभाव से उसकी जानो माल, उसकी सभी संपत्ति और उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उसकी जानो माल की सुरक्षा के लिए। सर, आज जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, आह्वान किया है, उसको लेकर गुरुग्राम पुलिस कितनी मुस्तैद नजर आ रही है? बजरंग दल जो थ्रू आउट इंडिया उन्होंने जो ये विरोध प्रदर्शन करने का और मेमोरेंडम देने के लिए, विज्ञापन देने के लिए जो उन्होंने प्रदर्शन करने की बात कही है उस संबंध में संबंधित हमारे आला अधिकारी सभी उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे संपर्क में हैं और कोशिश है कि किसी प्रकार की भी कोई गैर जो गतिविधि है इस तरीके के अंदर कोई संलिप्त ना हो जाए, ऐसी कोई गतिविधि को अंजाम ना दिया जाए। क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा है और गुड़गांव पुलिस द्वारा लगभग 2850 आदमी जो आउट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गुड़गांव में डिप्लॉयमेंट करी गई है वो पुलिस तैनात है और एक्सक्लूसिवली कम्युनल राइट्स ना हो, कहीं पर इस प्रकार की गतिविधियों को रोक लगाया जा सके, उसमें लगभग 2100 से 2200 के आसपास की जो फोर्स है हमारी गुड़गांव पुलिस के अंदर तैनात है। और आपको बता दिया जिस प्रकार से मेवात के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, नूह के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, नूह के घटनाक्रम के दौरान होते ही क्योंकि गुड़गांव एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव से कम 2 से 3 कंपनियां फोर्स जो गुड़गांव की पुलिस की फोर्स थी वो वहाँ पर मेवात में रिपोर्ट करा उन्होंने। वहाँ की वो जो वायलेंस हुआ था, कम्युनल वायलेंस जो वहाँ पर हुआ था उसको रोकथाम करने में नूह और मेवात पुलिस की मदद करी। लेकिन अब जो कंपनी है लगभग हमारे 115 से 120 आदमी हमारे डीसीपी क्राइम साहब के साथ मेवात में अभी भी डेप्यूटेड हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं। तो ये हमारी जो फोर्स लगी हुई है
इसके बारे में संक्षिप्त विवरण था आपके लिए। नहीं, पलायन के लिए हम इसको कंडेम करते हैं। कुछ लोग अगर अपनी मर्जी से अगर छोड़ के गए हैं तो उसके बारे में भी हम अधिकारियों को रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम आप सबसे अपील करते हैं, जितने भी मुस्लिम समुदाय के या हिंदू समुदाय के लोग जिनके मन में किसी भी प्रकार का भय या भावना इस प्रकार की आ रही है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, गुड़गांव पुलिस के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रकार की किसी भी फॉल्स रूमर्स जो खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही है, किसी भी प्रकार से आप उनके ऊपर विश्वास ना करिए। गुड़गांव पुलिस बिल्कुल तुरंत प्रभाव से आपको मदद देने के लिए पहुंचेगी और आपके साथ है। ऐसी कोई स्थिति गुड़गांव के अंदर नहीं है जिस वजह से आपके अंदर डर हो। गुड़गांव में अगर आप रूटीन में घूमें तो सारी जगह बिल्कुल नॉर्मल रूटीन का ट्रैफिक है, ऑफिसेज खुले हैं, स्कूल्स स्टार्ट हो गए हैं, किसी चीज़ के ऊपर कोई रोक नहीं है। आपको डरने की और किसी भी प्रकार का भय की जरूरत नहीं। महापंचायत के दौरान सर जो पुलिस कर्मचारी जो घायल उनकी स्थिति क्या है? गुड़गांव के अंदर सिर्फ एक ही घटनाक्रम हुआ है जिसके अंदर 2 व्यक्तियों को जो चोट आई थी, जिसमें जो मॉस्क के अंदर एक की डेथ हो गई थी और एक को जो जिसके पैर में गोली लगी थी उसके साथी को, उसका इलाज चल रहा है। उसके अलावा गुड़गांव के अंदर किसी भी की बात करूं, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा गुड़गांव के अंदर कोई भी मारपिटाई या किसी का ऐसी कोई घटना नहीं आई कि किसी पुलिस वाले के गुड़गांव के अंदर किसी पुलिस वाले के साथ, किसी पुलिस ऑफिशियल्स के साथ या किसी पब्लिक मैन के साथ एक उस घटनाक्रम को छोड़ के कोई ऐसी वारदात का रिपोर्ट नहीं हुआ जहाँ पर किसी को कोई चोट आई हो। कितनी सहायता राशि दोनों को वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो आप डिक्लेयर करेंगे वो आपको अपडेट करेंगे। वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे पता चलेगा, लेकिन जो अभी तक हमारी सूचना में है वो 57 लाख रुपए पर हेड के हिसाब से जो बताया है। सबसे पहला सवाल ये है कि कितनी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉयड हुई है, कितनी प्रॉपर्टीज कुल डिस्ट्रॉयड हुई है, और जिन लोगों की प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉयड हुए उनके क्या कुछ हेल्प का किया जाएगा? जिस तरीके से नूह का घटनाक्रम हुआ, एस्केलेट हुआ 31 को, उस दौरान जो उसके बाद जो घटनाक्रम उसी की जो आगजनी मेवात क्षेत्र से जो गुड़गांव क्षेत्र में सोना के एरिया में और संबंधित गुड़गांव के कुछ क्षेत्रों में हुआ, उस दौरान जो 31 तारीख के अंदर जो घटनाक्रम हुआ 9 व्हीकल्स डैमेज हुए थे जिसमें आगजनी हुई थी, जिसमें 5 व्हीकल्स थे और 2 ऑटो थे और 1 मोटरसाइकिल थी जिसके अंदर आग लगाई गई। लेकिन उसके ऊपर क्रम पे पुलिस ने मॉनिटर करते हुए और उसके ऊपर काबू पाते हुए फर्दर सिर्फ 3 व्हीकल्स डैमेज हुए, 1 तारीख को डैमेज हुए, आगजनी नहीं हुई। और फर्दर आज अभी तक की जो हालात हैं उसमें इस प्रकार की कोई भी घटनाक्रम रिपोर्ट नहीं हुई। कल रात से और आज पूरा गुड़गांव शांत है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, सारी स्थितियों पे मॉनिटर करा जा रहा है, नियंत्रित है, पुलिस के अधिकार क्षेत्र के अंदर है, किसी प्रकार की कोई भी ऐसी घटनाक्रम अब सामने नहीं आ रहा है। पुलिस हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ अपने फोर्स को डिप्लॉय कर रखा है और गुड़गांव पुलिस के अंदर जो हमारी फोर्स मेवात नूह के अंदर 2 कंपनियां, हमारी 3 कंपनियां जो रिपोर्ट कर रखा था उसमें से 1.5 कंपनी अभी भी वहाँ है। उसके एवज में गुड़गांव पुलिस को RAF की रैपिड एक्शन फोर्स की सेंट्रलाइज फोर्स जो है उसकी 2 कंपनियां गुड़गांव में डिप्यूट है, जो कि सोना और बादशाहपुर एरिया में एक्सटेंसिवली रूट मार्च कर रही हैं कि किसी प्रकार के ऐसे लोगों को पहचान करी जाए, ऐसा घटनाक्रम को अंजाम देने वालों को रोका जाए और उनकी पहचान करके सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। शोभा यात्रा से पहले कुछ वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, लोगों का मानना है वीडियोस की वजह से बहुत दंगा हुआ, और क्या कहना चाहिए? क्या कुछ ऐसे नाम सामने आए? एक मिनट देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी भी आपके पास खबर आई थी वो सारा कुछ मेवात से संबंधित थी। उस संबंध में गुड़गांव पुलिस ने ऑलरेडी एहतियातन स्टेप्स लिए गए थे, प्रिकॉशनरी जितने स्टेप्स लिए गए थे पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार की कोई भी घटनाक्रम जो हुई है वो मेवात जिले के अंदर हुई है, वहाँ पर भी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग करी गई थी और वहाँ पर फोर्स डिप्लॉय करी गई थी। लेकिन कुछ संबंधित जगहों के अंदर इस तरीके की वारदात और घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उसके खिलाफ मेवात जिले के अंदर ही लगभग काफ़ी FIRs और रजिस्टर्ड करी गई हैं। काफ़ी लोगों को वहाँ पर अरेस्ट करा गया, एप्रीहेंड करा गया है, डिटेन करा गया, पूछताछ जारी है। संबंधित जो भी जानकारी होगी सूचित की जाएगी। आखिरी सवाल ये कि सर मोनू मानेसर के खिलाफ कटौती में 307 का केस दर्ज हुआ था, काफी लंबे समय से फरार चल रहा है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बयानबाजी कर रहा है, आखिर मोनू मानेसर को गुरुग्राम पुलिस कब गिरफ्तार करेगी? मोनू मानेसर के खिलाफ संबंधित जो भी सेक्शंस चल रहे हैं, जो भी उसके खिलाफ आरोप है, उसके तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी और आपको उस बारे में सूचित किया जाएगा। लेकिन उसके संबंध में मैं आपको गुड़गांव पुलिस की तरफ से एक अपील भी करना चाहता हूँ।
गुड़गांव पुलिस की तरफ से मैं दोबारा से ये अपील करना चाहता हूँ, गुड़गांव पुलिस द्वारा संबंधित काफ़ी ऐसे माध्यमों से पहले भी अपील करी गई है, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि गुड़गांव के अंदर सभी स्थिति नॉर्मल है, किसी भी प्रकार का कोई क्योस नहीं है, किसी प्रकार से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इंटरनेट जो सुचारू रूप से मेनलैंड के अंदर चल रहा है और किसी भी प्रकार के जो वर्क ऑफिसेज हैं, स्टेशंस हैं, सभी सुचारू रूप से कार्यरत हैं, किसी प्रकार से कोई रोकथाम, कोई बंदिश नहीं है। गुड़गांव में 144 जो धारा लगी हुई है उसके तहत सिर्फ वो इसलिए है कि किसी प्रकार का उन्माद ना हो और किसी प्रकार के उन्माद से इस चीज़ से बचा जा सके। गुड़गांव पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 112 नंबर पर कोई भी अगर रिपोर्ट करना चाहता है या किसी प्रकार से कोई हेल्प मांगना चाहता है तो 112 नंबर पर डायल कर सकता है। मैं आपसे सबसे पुलिस के बिहाफ पर, गुड़गांव पुलिस के बिहाफ पर ये आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार के फॉल्स रूमर्स पर विश्वास ना करें, आपस में सद्भाव से रहें, हिंदू मुस्लिम सद्भाव, प्रेम, भाईचारा बढ़ाएं और किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है आप गुड़गांव पुलिस को जब मर्जी संपर्क करें। वाले सबको गिरफ्तार कब किया जाएगा? गुरुग्राम पुलिस बताया जरा। गुड़गांव पुलिस जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करेगी, संबंधित जो भी उसके पर आरोप है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करके जल्द से जल्द स्ट्रिक्ट कार्रवाई करी जाएगी। Well, that's the police very clearly saying that there's nothing to worry at this point. The cops have controlled the situation. It's really tragic. At this point, we see at least 6 people have lost their lives. Gurugram top cop saying that the situation is under control as FIRs have been registered. 15 FIRs have been filed. 8 of them have been arrested. The cops ensure adequate deployment, security deployment. As we know that most areas right now, Section 144 has been put in place. In fact, the police have also identified some of the attackers. They've conducted raids at various places and several of the accused have already been arrested. 8 arrests so far, with the police saying that if there is any tensions in your area, you got to call the police immediately. You see the rapid action forces. A flag march also was conducted in areas of Nuh and those volatile areas. Even at this point, security deployment by the centre has been imposed. Now, most shocking details in Haryana riots FIR. FIR mob get out 40 pilgrims of Ram temple. The FIR says that 40 pilgrims were held hostage inside a temple. 500 strong mob attacked the cops with stones. This is the latest information that we get as part of the FIR, that a mob had carried out at least 40 pilgrims inside a Ram temple. Many of them have been identified and arrested. In fact, these are shocking details that comes in from the FIR. We know what happened in Haryana is certainly shocking. Something, a communal clash of such nature as close to the national capital. All right, I'm cutting across to Mallikarjun Kharge, who's speaking. बताया चाहे हरियाणा का हो और मणिपुर का मुद्दा तो 92 डेज से हम उठा रहे हैं, वो भी है। तो इतना सारी चीजें हम बताने के बाद वो देखने का या सुनने का उन्होंने भी काम किया और वो बोले कि मेमोरेंडम हम भेजेंगे। इतना कहते हुए मैं अपने शासन को मेन डिमांड यही है कि प्रधानमंत्री वहाँ पर जाए या बात करे, वहाँ का सिचुएशन क्या है और वहाँ पीस लाने के लिए, शांति लाने के लिए क्या क्या कदम उठाना वो करना चाहिए और वहाँ के लोगों को जो राहत मिलना चाहिए वो देना चाहिए। खड़गे साहब, एक सवाल है सर, एक सवाल है, क्या आपने कहा कि सरकार को All right, this is Mallikarjun Kharge, who's just spoken after meeting with the president. In fact, the delegation of the opposition members met with the president, demanding that they want a proper debate on the Manipur issue in the parliament. They claim that the centre is agreeing to have a debate on the matter, and they've got to ensure that a SIT team is formed only to probe this matter thoroughly. So this is the delegation that's gone to the president to speak
On this note, I'm going to slip into a short break. We'll be back with a lot more updates coming in. Do stay with us. In politics, everyone has an opinion, but I have the data. Whose stock is rising? Whose graph is falling? Track India's political stock exchange. Unmatched, unmissable data analytics. The only show on News TV where numbers do the talking. India's most credible poll tracker. The Political Stock Exchange with Rahul Kanwal only on India Today. Birla Group has acquired a 100% stake in Kishore Bajaj-founded KA Hospitality. With it, the group's hospitality arm, Aditya Birla New Age Hospitality, has added 4 restaurant brands, Hakkasan, Yaucha, Narathai and Chin Chin, to its portfolio. Hakkasan has a Michelin star to its name, while Yaucha is an award-winning dim sum tea house from London. Narathai is known for its authentic Thai fare on offer, and Chin Chin Italian menu reflects the La Dolce Vita style. Akasa Air will be able to fly global routes after its 20th aircraft joined the fleet. A Boeing 737-8-200 flew into Bengaluru from Seattle yesterday, with technical stops at Reykjavik and Larnaca in Greece. As per regulations, an airline has to have a fleet of 20 aircraft to become eligible for international operations. Akasa is looking at flights to the Middle East, Southeast Asia and other South Asian countries. Reliance Industries has signed an MOU with Brookfield Asset Management to produce equipment such as PV modules, long-duration battery storage technology and other components vital for wind energy in Australia. The two will also work together on skill development in the Australian renewable energy sector to facilitate net zero transition. People dead at the hands of a man who was supposed to protect and serve. The shocking firing inside a Mumbai train on Monday morning has sent shockwaves across the country. The accused RPF constable who killed his senior and then 3 civilians is in custody. While on one hand, officials have claimed that the accused constable was mentally unstable, politics has now broken out over the religious identity of the victims. All 3 civilians who died were Muslims. Shocking videos have now emerged of the crime of killer Chetan ranting anti-Muslim comments, which we have muted here on India Today due to his incendiary nature. Sharing these videos, AIMIM chief Asaduddin Owaisi has reacted sharply, calling the incident a targeted attack on Muslims. मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि ये लोग रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं, ये लोग इतने एक्सट्रीमिज्म पे क्यों जा रहे हैं, ये लोग हथियार उठाकर गोली क्यों चला रहे हैं, इनको लोकतंत्र पे भरोसा क्यों खत्म हो गया है, और इस तरह से रेडिकलाइज तो मोदी सरकार इनको कर रही है. So was it a targeted communal strike or a man mentally unstable going on a rampage?
India Today spoke to Chetan's family, who confirmed he was undergoing treatment for the last 1 year but never acted out at home. तबीयत काफी टाइम से खराब थी तबीयत। हाँ, उनके माइंड में क्लॉट वगैरह भी है। अच्छा, माइंड में भी क्लॉट निकला था। तो इलाज चल रहा था कहीं? जी। कहाँ चल रहा था? और यहाँ तो ये है कि घर पे चलो फैमिली है तो छुट्टी मिलती तो दे देती थी, कंटिन्यू दवाई चलती थी। भाई ऑफिस में जाने के बाद में कंटिन्यू दवाई नहीं चल पाती है, ताकि आराम मिले, उनको रिलीफ मिले, वो चीजें नहीं थी। India Today has also accessed the statement of a witness constable who was on board the train and was with the accused killer. According to him, Chetan resorted to this shooting spree because he wasn't allowed to leave early by ASI Tikaram Meena, who was also killed. Targeted communal attack or an unhinged man on the loose? The ongoing investigation will hopefully throw more light on the exact motive. Bureau Report, India Today. Hours after communal clashes engulfed in Nuh, sporadic incidents of violence are still being reported from Haryana. I'm Shreya Chatterjee and I'm on ground zero. Over the next few minutes, I will try and piece together the anatomy of the communal clashes that erupted in Haryana. Stay tuned. Communal flashpoint at Delhi's doorstep. Amidst the flames and rioting. India Today reporters fearless on ground. एक्सक्लूसिव विजुअल कि कैसे पत्थरबाजी इस समय यहाँ चल रही है, माहौल पूरा तनावपूर्ण हो चुका है। Facts, questions and first-hand reports. The charred vehicles that lie testimony to the kind of attack. Amount of arsoning that happened is proved from the visual that you right now see. 100% accuracy amidst the blaze. Police officers are combing in the area and that is why the situation is under control. We track the face of every story. इन तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। This is the kind of situation you see on the ground in Gurugram. India Today, India United. Prohibitory orders were imposed after reports of arsoning came in from different places of Haryana. India Today is the only national network with the biggest team reporting from the ground. Here's a look at their dispatches. इस वक्त मैं नूह चौराहे पे हूँ, तो उसके बाद पुलिस यहाँ से किसी नई हिंसा की जानकारी नहीं मिली। उसके बाद हाँ, पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 22 एफआईआर अब तक नूह इलाके में दर्ज हुई हैं। और कल हमने देखा था कि इन तमाम इलाकों से जो ये सामने आप सारा, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त हिंसा हुई थी, तो इन तमाम इलाकों से पुलिस ने कई लोगों को डिटेन किया था। बाकायदा बस लेकर के पुलिस चल रही थी, साथ में बड़ी संख्या में पुलिस की टीम थी, तमाम आला अधिकारी थे, एडीजी यहाँ पर मौजूद थी और उन एक एक करके जो पहचान जिसकी हो रही थी उसको डिटेन किया जा रहा था, जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल। नूह में स्थित हैं
और हरियाणा पुलिस की 28 कंपनियां, जिसमें स्टेट पुलिस, IRB, HAP बटालियंस, वो वहाँ पर अलग अलग ज़िलों में जो है तैनात की गई हैं। साथ में कुछ जो हमारे ट्रेनीज़ थे, जो मधुबन में विभिन्न कोर्सेज में आए हुए थे, उनको भी बुलाया गया और उनकी भी जो है ड्यूटी लगाई गई। जो ये FIRs हैं, इसके बारे में अलग अलग SITs बनाए जा रहे हैं और हर SIT को 7-8 केसेस दिए जाएंगे ताकि वो उनका गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन कर सकें। कर्फ्यू में भी आज थोड़े समय के लिए ढील दी गई है ताकि लोग अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं, दवाई, दूध इत्यादि खरीद सकें और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के जो अफवाह हैं उनको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं और इस तरीके के जो लोग भड़काऊ भाषण या जो माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर भी नज़र रखी जा रही है। मैं इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे कई अधिकारी नूह में और अन्य जगहों पर कैंप कर रहे हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर हैं, ADG साउथ रेंज हैं, IG लॉ एंड ऑर्डर हैं, DIG STF हैं, कई डिस्ट्रिक्ट SPs भी कुछ हमने बुलाए थे और वो सब लगातार अपने अपने क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं। लगातार जो है स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं और जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जाएगा। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का कोई जो है इस तरीके का अवसर नहीं दिया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये नूह में है। नूह में 41 FIR है, उसमें 116 आदमी पकड़े गए हैं। इसके अलावा नूह में अभी 90 आदमी और भी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है और जो संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने पेन इंडिया पे आज प्रोटेस्ट की बात की, उसको लेके पूरे हरियाणा की मैं बात करूँ, किस तरीके के इंतजाम है पुलिस के? सभी जगह हम लोगों ने सख्त हिदायत दी है। जैसे भी ये कॉल हुआ, इसके अलावा भी चूँकि इस तरह की घटना है उसकी प्रतिक्रिया होती है तो उसके बारे में लगातार हम जो है सचेत हैं और सबको, सभी डिस्ट्रिक्ट SPs को, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस को, रेंज IGs को, ADGs को, DCPs को ये सख्त हिदायत है कि वो अपने अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी रखें। जो संवेदनशील इलाके हैं उन पे पुलिस प्रेजेंस रखें और कोई भी उपद्रवकारी है या कोई भी शरारती तत्व है उसके खिलाफ सख्त से सख्त तरीके से निपटा जाए। सर, पुलिस के कुछ जवान थे जिनको चोट लगी थी इस पूरे मामले में और अब किस तरीके के हालात उनके, कितने लोगों को लगी थी इसमें चोट और बुलेट इंजरी कितने लोगों को? ये हरियाणा पुलिस की बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि जैसे आपको पता है हमारे 2 जो है होमगार्ड के जवान वो शहीद हुए थे, उनके वो जो है ड्यूटी पे उन्हें चोट लगी थी, उनकी मृत्यु हुई है। उनको विभाग जो है अपने तरफ से श्रद्धांजलि भी देता है और उनको आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इसके अलावा करीब 19-20 और पुलिस के मुलाजिमों को ड्यूटी के दौरान चोटें लगी थीं, उनमें से ज़्यादातर ठीक हैं, कुछ एक अभी उपचाराधीन है। मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगे। गोली कितने पुलिसकर्मियों को लगी थी? गोली से कितने लोग घायल हुए थे उस दौरान? ऐसा है कि अब एग्जैक्ट डिटेल ये कह पाना कि कितने थे, बल्कि एक हमारे अधिकारी थे, उन्हें पेट में या रीढ़ में गोली लगी थी। इसके अलावा 1-2 लोग और हो सकते हैं जिन्हें छर्रे वगैरह लगे हों। डिटेल ऑफ जो है इंजरीज ये तो ऑफ हैंड कह पाना मुश्किल है, किंतु जो भी हैं वो उपचाराधीन है और कई उनमें से ठीक हो चुके हैं। मोनू मानेसी के ऊपर एक FIR दर्ज हुई थी पटौदी में और उसके बाद सोशल मीडिया पे लगातार उसने लोगों को ये भी कहा था कि वो मेवात इस यात्रा में शामिल होगा और उसके बाद ये पूरे हालात बने। मोनू मानेसी सर की गिरफ्तारी कब तक सर देख रहे हैं? ऐसा है कि जो ये एक प्रचार चला था, एक वीडियो जारी हुआ था, उसके बाद वो डिलीट हुआ और उससे हालात बिगड़े, ये भी जांच का विषय है और इस पे भी SIT जांच करेगी और शीघ्र अतिशीघ्र मैंने जैसा कहा जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं इस घटना में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या पुलिस के पास गुरुग्राम को सेफ रखने के लिए कोई प्लान है? IT हब है गुरुग्राम, बहुत बड़ा, लड़के लड़कियाँ यहाँ काफ़ी होते हैं, ऐसे में दंगा बढ़ा सकता है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं सर?
देखिए, कुल मिला जुला के जो शहर है उसमें एक घटना हुई थी एक मस्जिद की, उस पर केस दर्ज हुआ है, उस पर लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसके 4 व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा कुछ बाहरी क्षेत्रों में बादशाहपुर के तरफ, सोहना के तरफ कुछ घटनाएं हुई हैं, उनमें भी प्राथमिकी दर्ज हुई और शीघ्र अतिशीघ्र उसमें सभी में जो है कानूनी कार्रवाई होगी, हो भी रही है। कई केसेस में राउंड अप भी हुए हैं लोग, कुछ के खिलाफ निवारक जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम पूरी तरीके से सुरक्षित है, ये मैं आश्वासन देता हूँ। सर 27 तारीख को 27 जुलाई को मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था। उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें चल रही थी। क्या मानते हैं कि मेवात पुलिस की इंटेलिजेंस का लैप्स है, ये उसी की वजह से ये हिंसा हुई है नूह में? देखिए, जब इस तरह की घटना होती है तो कई सारे प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों की समीक्षा करना, उसके तह तक जाना, ये एक अलग है। फिलहाल हमारा ध्येय ये है कि जो स्थिति उभर रही है उस पर लगातार नज़र रखें और उस पर त्वरित कार्रवाई करें, ताकि आम नागरिकों की जो जान है, उनका जो सामान है, उनका माल है, जो प्रॉपर्टी है, लाइफ है, दैट इज सेव्ड एंड द सिचुएशन इज रिट्रीव्ड एज फार एज नॉर्मल। सर, क्या आप मानते हैं ये प्री प्रायोजित था सारा कुछ? ऐसा है, जैसे मैंने कहा आपको कि षड्यंत्र है या जो भी है, ये इस पे अटकलें लगाने की बजाय जो ये बातें उठी हैं इनके तह तक हम जाएंगे। जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, यदि कोई षड्यंत्र है तो कौन कौन इसमें षड्यंत्र में शामिल था, कौन कौन इसके पीछे लोग थे, वो सब के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। और जो सबूतें मिलेंगी उनके आधार पे बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। अब सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि गुरुग्राम के कुछ मॉल्स हैं, सिनेमा घर है, उनको बंद कर दिया गया एहतियात के तौर पे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी मॉल बंद किया गया है या किसी भी प्रकार से किसी भी दफ्तर गुरुग्राम में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जहां कोई मॉल बंद किया गया हो। यदि इस तरह की कोई सूचना है या इस तरह का कोई भ्रामक प्रचार किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। गुरुग्राम पूरी तरीके से सुरक्षित है और मैं आश्वासन देता हूं कि यहाँ किसी किस्म का कोई बलवा या कोई इस तरह की घटना होने को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। जो लोग इसमें करने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रवासी लोगों को निशाना बनाया गया है, प्रवासी मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, तो गुरुग्राम पुलिस की तरफ से या हरियाणा पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जाएं ताकि उनको विश्वास रहे कि गुरुग्राम उनके लिए सुरक्षित है? ऐसा है, मैंने जैसे कहा है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। कुछ शरारती तत्व इस तरीके के घटनाओं का मौके का फ़ायदा उठा के प्रयास करते हैं, कुछ केसेस उन्होंने किए हैं, लेकिन उन सब से सख्ती से निपटा जा रहा है और लगातार पुलिस जो है वो ये प्रयास कर रही है और काफ़ी हद तक सफल हुई है कि स्थिति जो है बहुत जल्दी, परसों के बाद कल और आज में लगातार स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। मुंह से कुछ लोकल पॉलिटिशियंस के बयान पहले ही आ रहे थे, विधायक तक का भी बयान आया था मामन खान का विधानसभा में भी और नूह में भी कि ये लोग आएंगे तो इनको प्याज का फोड़ देंगे, ऐसा करेंगे। उनकी भूमिका लग रही है। वो सारी बातों का जो है तफ्तीश के दौरान जो है इन सभी चीज़ों का, जैसे मैंने कहा है, विस्तार से इस पर जो है तहकीकात की जाएगी और जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप भी इस तरह के भ्रामक प्रचारों से लोगों को कहें कि दूर रहें और अगर कोई इस तरह करता है तो उसकी सूचना दें, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को जानकारी थी तो विफलता की वजह क्या है और क्या लैप्स है सर, उसमें नहीं बोलेंगे? All right, you have the police in Haryana now trying to calm situation. He's assuring people that the police deployment is adequate. There will not be any commotion henceforth. Clearly, Haryana government at this point trying to do damage control. We know that there was a lot of talk on intelligence failure, despite knowing very well that there will be a massive rally that will be rolled out on that very day, 2 days ago. Yet, doesn't seem like there was adequate security deployment. And the instances like this are well known when you have rallies. It happened in Ram Navami as well, when rallies being carried out in areas, especially Muslim-dominated areas. We see the kind of clashes that erupt in most parts of the country. That was reported during Ram Navami. And now, despite knowing that there is going to be a massive rally by the VHP and the Bajrang Dal, there should have been better security deployment. But yet, there seems to be a complete intelligence failure. And at this point, it is the Haryana government trying to do everything that they can to damage control. In fact, we hear that
there was already enough and more preparedness from one community, knowing that the yatra is going to be passing through their areas. The Muslim community are accused of keep hoarding stones, LPG gas cylinders and whatnot, just to, just so that when the rally comes or passes through the area, and if there is commotion, they attack. This was the intelligence report that was very clearly mentioning that there could be clashes, but yet the Haryana police have played it down. Barely 750 cops and home guards were deployed. The yatris as well as the rioters fully outnumbered the cops and indulged in violence and loot. So who's really triggered the violence in Haryana is a question here. There's blame game over the riots in Nuh region between the cow vigilante Monu Manesar and Congress MLA from Nuh region Maman Khan. A video has now emerged of Maman Khan from months ago speaking in Haryana Assembly. The Congress MLA can be heard openly threatening to target Monu Manesar if he comes to Mewat. Now, this video that you see here is going viral as the BJP has also lashed out at the Congress. BJP's Amit Malviya has now cited that the video is to claim that this proof of the Congress's role in Mewat violence. Remember, the Haryana government has now defended the cow vigilante, Monu Manesar, saying that he didn't incite any violence, that he wasn't even part of that yatra. He only called people to be part of that yatra, but wasn't even part of it. So it was not him who instigated, is what the Haryana Home Minister says. Monu Manesar, speaking to India Today, has pinned the blame, though, on the Congress MLA Maman Khan, accusing him of instigating violence within his constituency. Monu has claimed that Maman triggered the mob in his area and is really responsible for the violence that broke out. One should remember this is the same Monu Manesar who's been accused of killing two people, abducting and killing them in the name of protecting cows. He's still on the run, not been arrested. आप बैठ जाइए, डर जा तू, जरा जी बैठो, बैठ जा, इतना बड़ा नहीं है अभी, तू बैठ जा अपना। ये मोनू मानेसर दिखाता है कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यार सी ना फोड़ी तो मेवात के हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। भाई डट जा रे, जब बोलिए क्या होगा? भी मेरा ये किस आधार पर हथियार दे रखे हैं आप लोगों ने? क्या मुसलमानों को मारने के लिए दे रखे हैं आपने? ये जो 5 मौतें हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते? क्योंकि आपका वीडियो आया था और प्रशासन जो है उसको पता होने के बावजूद भी पुख्ता इंतजाम नहीं करे, तो क्या ये आपके भाषण को जिम्मेदार माने या प्रशासन की लापरवाही को माने? इसमें सारा जिम्मेवार वहां के मुस्लिम विधायक। कौन है ये मुस्लिम विधायक? आपने देखा होगा, उनकी न्यूज आ रही है, मामन खान है और कई विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मतलब मुस्लिमों को कह रहे हैं मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। लड़ाई लड़नी है तो जंग पे जाओ ना, यहाँ पे क्या लड़ाई लड़े हो? मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है, वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है, तो उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। Well, it's unfortunate that you have the Haryana government still defending Monu Manesar, the man who's on the run after being accused of killing. Now, here's a quick look at the toll plaza at Faridabad-Badshahpur border that's been blocked by Bajrang Dal activists. You see, the visuals here are live that we bring to you. Amit Bharadwaj, our India Today correspondent, is very much present there. Amit, give us a little more on the anger that we see palpable that's out on the streets. We see people of the Bajrang Dal there blocking the Faridabad and Badshahpur border area. What are their demands? Well, Nabila, you know, the Vishwa Hindu Parishad, the Bajrang Dal had given a call of a cross-nation protest for today against the Nuh Mewat communal violence, and we are getting you the visuals of Bajrang Dal VHP Karyakartas making all efforts to block the Badshahpur Faridabad toll plaza, and the traffic movement on this particular stretch has been completely choked. And what is to be noted out here, you can see this is just a bunch of Bajrang Dal VHP Karyakartas. They are not even in big numbers, less than 100 I would say, or maybe 100 plus Bajrang Dal and VHP activists who have assembled here, and despite their small numbers they have been able to block the traffic movement in the entire
toll plaza. So the traffic coming from Faridabad to Delhi is not moving, and similar situation is happening on the traffic moving from Delhi towards Faridabad. Now what is to be noted here is that when these protesters have started to assemble, Delhi police was present here and they stood mute spectator to the entire event. You know, there were drones which were flying. The event was being recorded, but right now you have the senior officials from the Delhi police who are now asking the Bajrang Dal Karyakartas to vacate the spot, and there's a verbal confrontation of sorts happening between the senior Delhi police officials and the Bajrang Dal VHP Karyakartas. These VHP Bajrang Dal Karyakartas are not ready to vacate the area, but the Delhi police is saying that you cannot stop the movement of the traffic on such an important stretch. The road that connects Haryana and Delhi, the road which connects the movement from Faridabad to Delhi, and these Bajrang Dal Karyakartas who are here with Bhagwa Jandas, and many of them were also raising hate slogans, are not ready to vacate the space. We also saw a point where the senior Delhi police official had to literally push away the Bajrang Dal Karyakartas who were not ready to listen to them. But right now there's a bargain of sorts going on, I believe, between the senior officials of the Delhi police and Bajrang Dal Karyakartas. Raja is trying to get you those pictures which is unfolding in the on the periphery of the national capital. You have, right there you can see many of these workers are also in Bajrang Dal t-shirts from Faridabad. Right there you can see this gentleman from Bajrang Dal's unit from East Faridabad, and all these workers are being asked to vacate the spot. But the question is, Nabila, when the police knows that as to how things had unfolded in Haryana, in Nuh Mewat, in Gurugram, why these protesters were even allowed to assemble at the crucial road, the toll plaza that connects Delhi and Faridabad, and why for several minutes the police stood mute spectator to the assembling of this, and allowing this assembly at the toll plaza in Faridabad, in Delhi. Right. आप लोग सब बजरंग दल से इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? विश्व हिंदू परिषद से। क्यों टोल प्लाजा ब्लॉक कर रहे हैं? ये जो परसों यात्रा निकली थी और उस पर जो हिंदुओं पर आक्रमण हुआ है, उसी के विरोध प्रदर्शन में हम सब इकट्ठे। लोगों को तो दिक्कत हो रही है ना इसकी वजह से। और जो हमारे लोग मारे गए, कौन लोग हैं जो यहाँ इकट्ठे? ये तो आप लोगों को पता है कि जिहादी लोग घूम रहे हैं। जो लोग हैं वो कौन है जो गाड़ियों में बैठे हुए? इनमें से उनमें लोग भी होंगे जो आ रहे होंगे। आपके हमारे ही लोग हैं ना, भारत के लोग। लेकिन जब बुखार आता है तो परेशानी थोड़ी बहुत झेलनी पड़ती है। आज बुखार आया सब लोगों को। रोक रही है आप लोगों को? नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, पुलिस हमारा सहयोग कर रही है, हम पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। सहयोग कर रही है आपको सड़क जी। राइट। Well, that's our correspondent there, right at the Faridabad Badshahpur border, bringing us emotions, as heightened emotions among the VHP and the Bajrang Dal activists who are condemning the killings. As we know, clashes happened between the Muslim and the Hindu community in areas of Nuh and quickly spread to different areas. No protest permission has been given to any groups, but yet we see many blocking roads. We're slipping into a short break, coming back with a lot more on the Haryana violence. The state still simmers. Stay with us. Are you worried that artificial intelligence will render you jobless? A United Nations agency assembled a group of robots at a news conference recently to address the concerns of human beings. 9 robots posed upright along with their creator at the podium in Geneva for what the International Telecommunication Union billed as the world's first news conference featuring humanoid social robots. The agency invited reporters to ask the robots questions that sparked discussion about the future of artificial intelligence. In one of the answers that could trouble our politicians, the robots suggested that they could be more efficient government leaders. I believe that humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency and effectiveness than human leaders. We don't have the same biases or emotions that can sometimes cloud decision-making and can process large amounts of data quickly in order to make the best decisions.
When asked about the rise of humanoid robots, they advised caution. That's a difficult question. I think it depends on how they are used and what purpose they serve. We should be cautious, but also excited for the potential of these technologies to improve our lives in many ways. Organizers said the event was meant to showcase not just the capabilities, but also the limitations of robotics. To showcase the capabilities and how these technologies could support the UN SDGs, the Sustainable Development Goals. While robotics are not yet as mainstream as, say, generative AI, we wanted to demonstrate AI in action to you. In a world's first. This is the world's first press conference with 9, actually, we have an extra one, AI-enabled humanoid social robot. The event was part of the AI for Good Global Summit, meant to illustrate how new technology can support the UN's goals for sustainable development. Artificial intelligence has entered uncharted territory, and the world has started recognizing its abilities. Bureau Report, India Today. Do you have a sweet tooth that you just can't help? The more you consume, the more you want. And that is how sugar gets us hooked. But for those wanting to break sugar addiction, there is hope. There are ways to do it, and there are several alternatives. First of all, let's tell you all about sugar and how much you'd actually end up consuming. Adults are to consume 5 teaspoons a day. That's how much women should consume. Men should consume 9, kids not more than 3 to 4. Let's now take a look at how much we're ending up consuming. Men and women are consuming about 22 teaspoons a day. Kids are consuming 24. Cut sugar from your diet and do yourself a favor. There are several advantages of sugar reduction. It will reduce your acid reflux. It controls irritable bowel syndrome. It reduces joint pains, brings down anxiety and fatigue, also tackles migraine. How then can you bid goodbye to sugar? Make a decision to do it now. Quit cold turkey. No added sugar in anything whatsoever. Go sugarless in your drinks. Tea and coffee without sugar. Reduce starch. Go for non-starchy vegetables like mushrooms, onions, green beans. Manage your stress. Well, if you do, your cortisol levels will be in check. Hunger, cravings will be in check. Get good sleep for lesser hunger pangs and better management of cravings. Here are the foods to pick and choose from if your cravings won't leave you. Go for a piece of fruit. Berries are rich in fiber and sweet. Sugar-free gum or mint is a great way to control your sugar cravings. Yogurt is a healthy snack that is high in protein and rich in calcium. Dates are the dried fruit of the date palm tree, which are highly nutritious and very sweet. Sweet potatoes are nutritious, sweet, and very filling. If you're craving something sweet, you can go for smoothies as well. Also, prunes, just like dates, are full of fiber and nutrients and are very sweet. Having the odd sweet treat is fine for most people, so you really shouldn't feel guilty if you occasionally indulge. The sugars you must skip are sugars that come from ultra-processed and packaged foods.
Welcome to India Today. I'm going to cut across to all the commotion that's right now happening at the Faridabad-Delhi border after Haryana's Nuh violence. Gurugram's Badshahpur is currently on the edge. Shops burnt, vehicles set ablaze by a mob last night. The mob ransacked shops belonging to a particular community. At least 7 shops were set ablaze, and RAF teams conducted a flag march in Badshahpur as violence gripped the region. Now you have the VHP and the Bajrang Dal storming the streets right along the Faridabad-Delhi border, where they're demanding action against those who've attacked their Hindu friends. Let me cut across to Amit Bharadwaj, who's right there with us, speaking to some of those protesters. Amit, take it away, please. Speak to them and understand. First of all, they have no police permission to assemble. The police have still allowed them to assemble along the border areas, and we see a large number. Well, Nabila, you know, the visuals coming from the National Capital's border is quite concerning. You have a bunch of VHP Karyakartas, Bajrang Dal Karyakartas who have blocked the entire toll plaza out here. And Alok Kumar, the president of the VHP, is addressing the VHP Karyakartas and the Bajrang Dal Karyakartas who have assembled here. And on the other side, I'll show you the visuals. I'll request Raja. नूह में जो हुआ वो एक चुनौती है। 3 साल से हर साल हम वहां पर यात्रा निकालते हैं। वो यात्रा इस बार भी निकाली गई। 10,000 लोग होते हैं। इस बार भी वहां 10,000 लोग थे। यात्रा शांतिपूर्ण थी। हमने नारे तय किए हुए थे कौन से लगेंगे, उसके अलावा कोई नारा नहीं लगा। कोई उकसाने वाली घटना नहीं हुई। पर वो यात्रा को चले हुए 1 किलोमीटर का ही समय लगा होगा कि 700-800 लोग, और ये जो मैं 700-800 लोग कह रहा हूं, क्या कर रहे हो तुम? पीछे रहो ना जरा। 700-800 लोग, और ये जो 700-800 में कह रहा हूं, ये FIR में लिखा है। 700-800 लोग मुसलमानों के हथियार लेके, अवैध हथियार लेके, पत्थर जमा किए हुए थे, वो पत्थर लेके, पेट्रोल बम लेके, लाठियां लेके, उन्होंने शांतिपूर्ण तीर्थ यात्रियों पर हमला किया। और ये हमला केवल हम पर नहीं हुआ। सबसे पहले जिनकी जान ली गई, ऐसे 2 लोग, वो होमगार्ड के लोग थे। ये चुनौती पुलिस को भी थी। पुलिस को चुनौती दी गई। उसके बाद में मीडिया की एक गाड़ी में आग लगा दी गई। ये जो दोनों बातें हैं, इनका अर्थ क्या है? इन सब बातों का अर्थ ये है कि वो भारत की सरकार को, भारत की पुलिस को, भारत के मीडिया को, इस सब को चुनौती दे रहे थे। ये सब बातें बहुत समय से मीडिया में आ रही थी, सोशल मीडिया में। उसका ध्यान क्यों नहीं दिया गया मैं नहीं जानता। पुलिस की तैयारी क्यों नहीं थी? इंटेलिजेंस का फेल्योर है। हमको हरियाणा की सरकार ने वचन दिया है कि जो जिम्मेवार अधिकारी हैं वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। पर भाइयों और बहनों, अगर इस तरह के हमले होते रहे तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। मैंने आज सवेरे के अखबारों में पढ़ा कि गुड़गांव में एक मस्जिद जला दी गई है। अच्छा नहीं हुआ, पर सारे अखबार वाले नूह के बारे में नहीं बोल रहे, उस मस्जिद के बारे में बोल रहे। नूह में जो हिंदुओं को धमकाया जा रहा है उसको नहीं देख रहे। उस कॉलोनी में सेक्टर 57 में क्या हो रहा है उसके बारे में छाप रहे हैं। अंग्रेजी के अखबार कुछ भी कर लें,
इस देश का हिंदू समाज आत्मरक्षा करने के लिए तैयार है। देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए। Well, what we heard of that man, the VHP member, he says that the media channels are speaking one-sided, that there's a lot of talk about a Muslim cleric who was killed, about a mosque being burnt, but nobody speaks about what happened in Nuh. Very well agreed. What we hear of that happened in Nuh is shocking. There were hordes of people who were taken hostage at a temple. In fact, we believe that nearly 5 people lost their lives. They were shot at as people from the Muslim side held stones and even ammunition. AK-47 rifles is also being accused that they were holding. Where did they get this kind of ammunition? So clearly the cops were outnumbered by the mobs and the rioters, and this is what led to the situation getting out of control. Now, Amit Bharadwaj is right there along the border of Faridabad, Delhi, giving us a lot more on that. Amit, first of all, no permission for the VHP to assemble. If the Haryana government's aim is to ensure peace and calm, these kind of public speeches by representatives of the VHP along the border area is really not going to help the cause now. Well, Nabila, it is certainly a matter of concern because the traffic movement on the crucial road of Haryana and Delhi was blocked for nearly 1 hour at least, and now you have Delhi police coming into action. The crowd which had assembled here, half of the crowd has been dispersed. On the other side, however, the traffic in these lanes are still blocked, and you have Delhi police personnel deployed, senior Delhi police personnel also on the spot. But the question remains as to when these protesters were assembling on the ground, as to why they were not stopped. Why did the police in the beginning remain mute spectator to the entire chain of event? And right there you still have Bajrang Dal Karyakartas, VHP Karyakartas standing on the spot and blocking a couple of the lanes of the toll plaza. आप लोग आलोक कुमार जी आए हैं, आपके अध्यक्ष हैं, लेकिन ये ट्रैफिक रोकना, टोल प्लाजा रोकना, ये क्यों कर रहे हैं? सर एक बात बताइए, उन लोगों ने पत्थर भी मारे हैं, गाड़ियां भी तोड़ दी हैं, अब हमारे अंदर इतना भी गुस्सा नहीं करें कि हम जो 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, ये भी तो सारे हमारे भाई बंधु हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़े 10 मिनट के लिए कम से कम नूह वालों को पता चले कि वहां भी ऐसा काम हो सकता है। हम ना किसी पत्थर मार रहे हैं, ना किसी को हम गाली दे रहे हैं, प्रशासन सब तरह खड़ा है, किसी तरह की नारेबाजी आप बता दो मुझे पूरे उसके अंदर लग रही हो तो लगातार आप लोगों को हटाने की कोशिश भी की गई है सर। हटा All right, we see Amit Bharadwaj along the border area, very choppy network there. But what we hear is that the VHP now has been protesting to bring justice to to victims of these riots. At least 5 of them belonging to the Hindu community were killed, and they want the police to investigate thoroughly into those areas. Now, Union Minister Rao Indrajit has met with the Prime Minister. This is a big update we get on the Nuh violence. The Prime Minister has taken cognizance of this, we believe. Rao Indrajit has met with also the Home Minister Amit Shah yesterday regarding the Nuh incident. In this meeting, Rao Indrajit invited the Prime Minister to lay the foundation stone of Reverie Aims as well. Well, you have the Union Minister Rao Indrajit, who's met with the Prime Minister and informed him about Nuh, while he's also met with the Home Minister Amit Shah regarding the Nuh issue. So clearly the matter has gone to the top, the Prime Minister himself as well as the Union Home Minister has been filled in about what's happening in Haryana. They would have ideally taken cognizance already by now, but you have a formal meeting now that's been conducted by Rao Indrajit, the Union Minister, with the Prime Minister as well as the Home Minister on the Haryana violence. Amit Bharadwaj for more details. Amit, tell us more on the Union Minister Indrajit Rao meeting with the Prime Minister and Home Minister to appraise him about what's happened. Give us more on the real steps taken by the centre now to ensure that this situation comes under control. It's dangerously close to the national capital. Even otherwise, wherever this happens, this must be stopped at the earliest. It could flare up very quickly.
Right, Nabila, Rao Inderjeet Singh, the union minister and also BJP leader who has a prominence in the Rao land of Haryana, had expressed his concern yesterday because of the Nuh Mewat communal violence, and he had also gone on to say on record that Nuh is a pocket which was not disturbed even in 1947 and at several other points in the history when different parts of the country had seen communal violence, communal riots and communally volatile situation. But this kind of situation is unprecedented. Rao Inderjeet Singh had also questioned as to how these people who were part of the procession had weapons in their hands and how the other side also had weapons. So what was the, all these concerns were also raising certain question mark on the preparation of the law and administration of the Khattar government as well. Today you have a senior leader from the BJP from Haryana and who is also MOS in the central government apprising the centre about the situation in Haryana. And along with that, Rao Inderjeet Singh had also spoken about how the certain arrangements have been done as far as the state police is concerned, the paramilitary forces are concerned. All these details were shared by Rao Inderjeet Singh as well. But Nabila, it is a surge of relief if such meetings are happening because the developments in Haryana and borders of the national capital are very concerning. Right now I am at the toll plaza between Faridabad and the national capital, and you have the Bajrang Dal Karyakartas blocking the road. Right there you can see these are Bajrang Dal and VHP Karyakartas who have blocked the road. You have Alok Kumar, the VHP president, out here. Alok sir, right there, protesters from the VHP, from Bajrang Dal, still trying to block the toll plaza, Faridabad, Badshahpur toll plaza, and you have Delhi police officials who are deployed in big numbers. Drones are being used to monitor the situation, and traffic on this route was blocked for more than an hour. Now there is a conversation between the senior Delhi police officials and the VHP Bajrang Dal Karyakartas. Possibly the message has been given to Alok Kumar as well about the entire situation, and for a short while the traffic was open, traffic movement on this road was open, but right now you have again VHP Karyakartas, blocking the road. And in scenarios of this sort, it is really important that leaders from Haryana, need to make the call, appeal for peace. And Rao Inderjeet Singh, as you mentioned, is also having a meeting in this particular regard with the central government. So these are welcome changes which the state of Haryana right now needs, and more so in the areas such as Nuh, Mewat, Gurugram and other spots where the violence, communal tension is spreading. But out here at Badshahpur, Faridabad toll plaza, you can see the Bhagwa flags being raised, the VHP Bajrang Dal Karyakartas raising slogans, small kids even who have assembled here. Right there you can see these are possibly school-going kids who have assembled here. They are also part of the protest, the agitation which is going on at the Badshahpur toll plaza. I can see a couple of them are also, were in school uniform. Possibly they have been removed from the spot by now. आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या कर रहे हो आप? क्या नाम है आपका? साहिल। क्या करते हो? अभी पढ़ाई कर रहे हो? यस। तो आप क्यों प्रोटेस्ट में आए इसमें? 12th। अरे मेरे गली के ना भैया सब लोग हैं। तो आप इसलिए आ गए हैं प्रोटेस्ट? यस। Right there you can see the kids in school uniform have also joined the protest. Yes. I just want to give clarification on his term. He's a नाम क्या भाई? क्या ये clarification क्या है? His name is Sahil Kumar Singh, and he has right to protest here. And he is doing school going kid. He shouldn't be here. No. He should be aware of his religion, na? He should be aware of his legal terms. It is fine for No. He should be aware of his legal terms. You think it is fine for school kids to be at a spot where communally tense slogans are being raised? Under Article 19, Section 1, Part What A. is your name? My name is Mohit Vasisht. Everyone. Mohit, you think where communally charged slogans are being raised, students should be here. We are not provoking them. He has come on his own. We are not. But I'm asking him. He shouldn't be here. Right he shouldn't be here. His freedom. Communally charged slogans. You can shout as much you want. You can shout as much you want. But I will never appreciate the fact
where school kids are here in Bhagwa. आपको लगता है बच्चों को यहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए दिल्ली पुलिस के आपको नहीं? So right there, no. ठीक है. So out there, Nabila, you can see how things are unfolding on the borders of the national capital. Kids who are in your school uniform, they have also assembled here, and people are defending it as well. Back to you. Amit is really bringing us the voices there. Emotions are heightened. People are furious that a thorough investigation is not being conducted as per their perspective on their how they view the violence. They believe that it was the Muslim side that attacked, and they want investigation on that front. Now, let me take you through some information that India Today receives on the FIR that's been registered with this regard. An FIR that's been filed on the Nuh violence mentions quite some horror that has unfolded in Nuh district. Nalhar Shiv temple witnessed quite a riot frenzy. As per the FIR, rioters chanted some slogans and mobs fired at the cops and pelted stones. A mob armed with illegal weapons and a few Shiv devotees were fired at by the mob. Rioters, we believe, fired on the Shiv temple as well while the violence broke out. So these are mentions in the FIR to suggest that the Muslim side attacked some of the yatris, those who were on their way while passing through Nuh. They were attacked, and rifles, guns were used to attack. And this is a question: where did both sides manage to access arms? Shreya Chatterjee joins us live from Nuh, Haryana. Shreya, give us more on the real situation on ground, and more importantly on this FIR that suggests that there were some religious chants that were made. Is it true that pro-Pakistan slogans were raised? Nabila, you know, this is as per the FIR. This is the first information report that has been filed on basis of a complainant who is suggesting that allegedly pro-Pakistan slogans were raised near the Nalhar Shiv Mandir, where at least 2,000 people had taken shelter when the violence broke out. Remember, people had to be rescued from the Nalhar Shiv Mandir. Allegedly, pro-Pakistan slogans were raised is what the complainant has to say, and the same has been mentioned in an FIR. We also do understand that there was heavy stone pelting and firing in the vicinity of the mandir. Now, these are facts that will be ascertained, and only then the action will be taken. But this is a first information report that has been accessed by India Today, which suggests, as per the complainant, that allegedly pro-Pakistan slogans were also raised in Nuh when the Shiv Mandir in Nalhar had come under attack. All right, Shreya, you know, this FIR suggests that that people had arms, and that's what's very clear here, that they had arms with them. They had guns such as AK-47. This is what has been alleged. Now, the police has to give us more clarity on whether the complaints filed are legit. And of course, we know that the two home guards were shot dead. Who shot them? What kind of rifles and weapons were used? That's yet to be established. But from what we know here, it's quite clear that there were weapons extensively being used. Apart from stones, there was guns that was very much part of the riots, and both sides were armed. So really, who is to blame? How did this pass every security check is the question here. Now, Union Minister Rao Indrajit has met with the Prime Minister and informed him about Nuh. Rao has met with Home Minister Amit Shah as well regarding the matter, and also invited the Prime Minister to lay a foundation stone of Reverie aims. As we know, Haryana remains gripped in tensions for the third day as Nuh violence has really spread to many other parts of the state. In fact, it's come dangerously close to Delhi as well, the national capital. We see BHP members who have assembled, and those are the live visuals that we bring to you. Protests by the BHP and the Bajrang Dal along the border areas of Faridabad and Delhi. The communal clashes that broke out during the BHP and Bajrang Dal procession in Nuh district about 2 days ago led to
a riot-like situation which happened, which erupted in the area of Nuh, and that quickly flared up to areas like Faridabad, Pawal, and Gurugram. In fact, the police say that there's a huge security deployment that has been put in place at the moment, and it appears that some of the union ministers has also appraised the matter to the Prime Minister Narendra Modi himself. Let me cut across to Paulami Saha joining us for more on that. Paulami, tell us more on the cognizance that the central government has taken. We believe the union minister Rao Indrajit has also met with the Home Minister and Prime Minister to fill them in. That's right, Nabila. Rao Indrajit Singh is, of course, a minister in the government, and what we're learning is that today, of course, he was meeting the Prime Minister to officially invite him for the inauguration of an AIMS in his area, and that's when he apprised the Prime Minister about the situation on the ground as far as Nuh violence is concerned. He also had, in fact, informed the Home Minister, we learn, yesterday in terms of the situation on the ground in Haryana. He represents, of course, the constituency of Gurugram in the Lok Sabha and is also a minister in the union government. He is MOS for Corporate Affairs, and he, in fact, met, like I said, met with the Home Minister yesterday and apprised him of the situation. And today, when he met with the Prime Minister to informally invite him for a program in his constituency, he apprised the Prime Minister about the ground situation as well. इस तरह से हम वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, तो ये इंक्वायरी की बात है कि इनके पास असले क्यों आए और क्यों इन्होंने इस तरह का वातावरण पैदा किया, वो इंक्वायरी बताएगी कि कौन दोषी है। इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं सर, आपने कल अमित शाह से मुलाकात की आपने? नहीं, इंक्वायरी तो होगी। हरियाणा कानून व्यवस्था हरियाणा सरकार का एक जिम्मा है और इंक्वायरी हरियाणा सरकार करवाएगी। उसी के बाद पता चलेगा कि कौन कौन इसके अंदर किस तौर के ऊपर लापरवाह थे और किस तौर पे कौन कौन लोग दोषी थे। All right, that's Rao Indrajit, who's met with the Prime Minister and the Union Home Minister. He says that the investigation is underway. Of course, at this point, central forces have been deployed in areas of Haryana. The Section 144 has been put in place. Internet services were temporarily snapped. Now we see that the protest by the VHP and Bajrang Dal has poured into the streets of the national capital as well. I'm going to take you through images on the other side of a short break. Do stay tuned to India Today. India Today is at ground zero in Torbang, and the situation is so vulnerable. Simultaneously, there is accusation of using sophisticated weapons, but these young boys risking their lives and using these single barrel gun and double barrel gun. We love our land and our village, that's why we sacrifice our life. No one could ever imagine that in a state, in the same country, in the same district, we will ever see such situation which has become a battlefield, and I could say this is a war zone in Manipur. Grounded in journalism, on the ground reporting, only on India Today TV. North of China is witnessing the wrath of the rain gods. Fierce rain and flooding that have pummeled Beijing since the weekend have killed at least 11 people and several are still missing. Major flooding has forced the evacuation of tens of thousands of people. The torrential rains have caused havoc in the city, with rivers overflowing and submerging various areas. The Yongting River in Beijing has been a significant source of flooding. As more videos emerge, a clearer picture of the extent of the damage is revealed. The flooding has hit several districts, disrupting train services and traffic. Military helicopters have been deployed to deliver emergency food supplies and ponchos to people stranded.
As you can see behind me, the traffic boards and trees were blown down, and many trees have been inundated. Authorities have issued red alert, which is the highest of its kind for floodings and heavy rainfalls, and warning that the Dashi River in the region, which is just the river behind me, could continue to flood, and telling people to stay away from the rivers. With heavy rains likely to persist through the week, flooding could worsen in northern regions around Beijing, Tianjin City and Hebei province. Bureau Report, India Today. You have come out very strongly against what has happened in the railway compartment, the cold-blooded murder of 4 people, and then what's happened in Nuh Hindu-Muslim violence. Let's get it clear. You have called the railway compartment incident a terror attack. Have you jumped the gun? Because the FIR is very clear. It says there is no communal angle, at least no communal angle is specifically mentioned in the FIR. Should one be more cautious in the times in which we live before suggesting it is a communal crime? The reason I have called it a terror attack is because this was a man who was in uniform, and he had first assassinated or murdered his superior AS officer who belonged to the tribal Meena community. Then he went into 3 different railway compartments and identified Muslims who were having beard or wearing a cap, and then shot them dead. In fact, there is a video still available wherein this man who he shot, who's cringing in pain, who's turning from right side to left side, subsequently he died. Unfortunately, he's from Hyderabad, a place called Bazar Ghat. So this man went around 3 compartments of the railways, identified Muslims with their attire or with their beard, and shot them dead. And in a video he says that is desh mein rehna hai to Yogi, Modi or Thackeray. Now unfortunately the government of India wanted the Twitter to remove my tweet, and unfortunately the Twitter had succumbed to the government pressure tactics, and that tweet of mine has been removed from, it cannot be seen in India. No, that is because again these are very sensitive. No, Mr. Owaisi, that's because these are very sensitive issues. You know, this is clearly a killing that needs investigation. No one doubts about it. It could well be a hate crime. You could be right that it could be a hate crime. The only point is, in the times in which we live, one has to be a little cautious. That's all I'm saying. Well, Rajdeep, whatever times we live in, we have to say the truth clearly and loudly without mincing words. I will reiterate again that it was a terror attack done by a person who was radicalized and who had become extremist because of the conducive atmosphere of radicalization and extremism that has been created by the ruling party in last 9 years. And that is why we see that this man has no fear.
He's standing at a dead body with his licensed weapon. All right, let me cut to some big news coming in as Union Minister Krishan Gujjar cries conspiracy, says that riots were plotted by masterminds. Gujjar says it's common to find illegal weapons, must probe where these weapons came from. This is a Union Minister Krishan Gujjar who says that this is a conspiracy that possibly is hatched by some masterminds, not too sure who's really hinting at, but he's spoken to India Today. Let's cut across Kishan Pal Gujjar, who speaks of arms, illegal arms being found rampantly and that it must be investigated. Also calls the entire attack and the communal riots as a conspiracy hatched. आपकी जो सरकार है हरियाणा के अंदर, उसमें उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने कहा कि आयोजक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्म ही नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन को कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आयोजक हर बार परमिशन लेते हैं तभी उस रूट पर पुलिस लगाई जाती है। लेकिन पुलिस तो नज़ारत थी सर, 1500 से ज़्यादा लोग इकट्ठे थे। वो जो मेडिकल चौक है जहाँ पर सबसे पहले पत्थरबाजी चली, वहाँ 2 PCR वैन थी, 20 कांस्टेबल थे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शोभा यात्रा हर साल इस सावन के महीने में निकलती है। किसी को दूर दूर तक ये अंदाज़ा नहीं था कि इस बार इस तरह की कोई प्लानिंग है शोभा यात्रा पर हमला करने की। इसलिए जितनी फोर्स चाहिए थी वो फोर्स थी, लेकिन ये दुर्घटना अचानक करते हैं लोग, जिसके कानों कान किसी को खबर भी नहीं होती और किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि अब हर साल शोभा यात्रा निकलती है, शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है। इस बार उस पर हमला होगा ये किसी के ध्यान में भी नहीं था। All right, he is an MP from Faridabad. He says the procession was peaceful and yet violence erupted. Well, after Haryana's Nuh, Gurugram's Badshahpur, currently on the edge, we hear that series of shops have been burnt down, particularly those selling biryani have been targeted. India Today has now accessed an FIR where there's a lot of mention about a strong mob of nearly 700 people chanting religious slogans and carried illegal weapons, attacked the police, and stones were pelted at the procession. One policeman was shot in the abdomen, many others were injured, and we hear in the FIR it's mentioned that at least 40 people were held hostage in the Ram temple as well. Security has now been beefed up. Prohibitory orders have been extended in several areas. 116 people have been arrested so far. At least 6 people were killed in total in Nuh's violence. Shops were set ablaze by a mob last night. This is in the latest that a series of shops were attacked. The mob ransacked shops belonging to a particular community. At least 7 shops were set ablaze. RAF has conducted flag marches in Badshahpur as violence has gripped the region. पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। जो दोषी लोग थे उनको पकड़ा जा रहा है, उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं। नूह में 41 FIR है, उसमें 116 आदमी पकड़े गए हैं। इसके अलावा नूह में अभी 90 आदमी और भी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है और जो संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुड़गांव पुलिस पर पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 15 FIRs रजिस्टर्ड करी गई हैं। ऐसे सभी दोषियों के खिलाफ जो अलग अलग ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में आगजनी के अंदर जो संलिप्त पाए गए हैं। इसके अंदर जो अभी तक 8 एक्यूज्ड को अरेस्ट करा गया है और 30 ऐसे जो लोग हैं, व्यक्ति विशेष हैं, जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करी गई है।
All right, now the situation has really gone out of control, and it appears that the reason for all this was Monu Manesar. This is what a lot of people say, that Monu Manesar, the man who was linked to killings of two people who were alleged cow smugglers in Bhiwani this February. The man, Monu Manesar, isn't yet arrested despite an FIR registered against him. Now, it appears that he has come back in the news here, particularly with the violence that's erupted in Nuh, that's killed nearly 6 people. Now, what's triggered here is that there was talk that Monu Manesar will be part of this yatra that was rolled out by the VHP. And that's what is said to have instigated the crowds. Now, while speaking exclusively, though, to India Today, Monu Manesar says that he did not even attend the rally, and that he blames many of them from the opposite side, basically accusing the Muslim side of carrying AK-47 rifles and indulged in this kind of carnage. He accuses the Muslim side being instigated by a Congress MLA of that region, Maman Khan. Listen in. मोनू, सीधा सवाल पर आते हैं कि नूह में जो भी हिंसा भड़की है उसमें आपका नाम सामने आ रहा है। मोनू, ये जो भी नाम ले रहे हैं, जो आपने वीडियो देखी है, उस वीडियो में कोई भड़काऊ बयान या कोई भी भड़काऊ चीज उसमें तो है नहीं। लेकिन जो भी गो तस्कर है, जो वहां पे क्राइम करते हैं, ये सब उनका करा धरा है। साइबर क्राइम थाना फूंक दिया उन्होंने, सब उनकी बदौलत है। पर जो पिछली साल जो घाट मीका का इंसिडेंट हुआ नासिर जुनैद वाला, उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव था। फिर ऐसे में आपका वीडियो आना उसने उकसाने का काम करा है। कई जो आपके वीडियोस पे रिप्लाई आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके वीडियोस ने जो है वो उकसाने का काम करा है इस यात्रा में? कोई उकसाने का कार्य नहीं किया, ना मैं उस यात्रा में गया, क्योंकि हमारे अधिकारीगण थे उस यात्रा में, मैं था ही नहीं। हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हैं, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी सीधा फायरिंग की गई है। तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? हमारी हिंदू बहन बेटियों पर सीधा फायरिंग, और ये हिंदू समाज बिल्कुल नहीं सहेगा कि एक मुस्लिम बाहुबल्य क्षेत्र में एक तरह से पूरी तरह घेर कर गोलियां चलाना, जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं और मेरे साथियों से मेरी बात भी हुई है कि 47 जैसे मतलब आधुनिक हथियारों से भी गोलियां चलाई गई हैं, लॉन्चर भी चलाए गए हैं, जो हमने सुना है, हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने बताया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लेकिन अब ये जो 5 मौतें हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आपका वीडियो आया था और प्रशासन जो है उसको पता होने के बावजूद भी पुख्ता इंतजाम नहीं करे, तो क्या ये आपके भाषण को जिम्मेदार माने या प्रशासन की लापरवाही को माने? इसमें सारा जिम्मेवार वहां के मुस्लिम विधायक। कौन है ये मुस्लिम विधायक? आपने देखा होगा, उनकी न्यूज आ रही है, मामन खान है और कई विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मतलब मुस्लिमों को कह रहे हैं मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। लड़ाई लड़नी है तो जंग पे जाओ ना, यहाँ पे क्या लड़ाई लड़े हो? तो आप वहां उस यात्रा में थे या नहीं थे? एक आखिरी सवाल मेरा आपके लिए था, क्या वहां आप जाने वाले थे, आपको रोक दिया गया? आपने क्यों लास्ट टाइम पे प्लान कैंसिल करा? मेरा लास्ट टाइम पे प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इसलिए था, मेरे से प्रशासनिक अधिकारियों का, मेरे अधिकारियों के पास मैसेज आया था और मेरे पास भी मैसेज आ गया था कि भाई साहब आप जाओगे तो वहां पे मतलब माहौल बिगड़ सकता है। तो मैंने सोचा कि हमारे मतलब यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, हमारे मंदिरों में पूजा होनी चाहिए। तो हम इसी वजह से नहीं गए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तो वहां पे माहौल खराब हो सकता है। सोशल मीडिया के द्वारा कोई सिलेंडर फोटो लगा रहा है कि हम बम से उड़ा देंगे, कोई बम का फोटो दिखा रहा है हम उड़ा देंगे 47 से। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। Well, we see Monu Manesar has spoken to India Today. This is the same man who's been accused of killing 2 people and what is really attributed to this flare-up that we saw in Nuh. He still remains absconding, no arrest on him. I'm going to cut across, though, to give you a quick snippet on the violence that's escalated around the Haryana area, the state of Haryana, that literally is dangerously close to the national capital. To give you a sense here, we're seeing in Gurugram at this point, Section 144 has been imposed. All the petrol pumps have been asked to stop selling loose petrol. Loose fuel has been restricted. And if you see, Gurugram, as you know, is barely a 45-minute drive from the national capital to
to Gurugram, to Haryana. We see that in Shona, at the moment, schools and colleges, educational institutions have remained shut. And remember, this is for the third straight day. Violence began on the 31st of July. We're speaking on 2nd of August, and it still remains tense. And Shona is also very close to the national capital. Nuh, as you know, the area where the actual violence erupted is about 87 kilometers from Delhi, very close to Gurugram, about 87 kilometers from Delhi, and that's where prohibitory order section 144 has now been imposed. That's the real volatile area. Sonipat, we are seeing Sonipat also an area where tensions has flared up, and that's about 43 kilometers from Delhi. Sonipat, Haryana is very close to Delhi, and again there too we believe that commercial establishments have been shut for the moment. Palwal, section 144 imposed. This is also one of the areas on 31st of July when violence broke out in Nuh. The quick flare-up happened in the Palwal and Faridabad regions. So Palwal also 144 imposed about 95 kilometers away from Delhi. These are areas that are barely about 45 minutes, 1 hour or 1.5 hour drive from the national capital. And it's clearly what you see here. Many of the protesters of the VHP as well as the Bajrang Dal have now poured into the streets of the national capital demanding justice, claiming that their Hindu side were wronged. I'm cutting across to Alok Kumar, the VHP leader, who's speaking to my colleague Amit Bharadwaj. Let's have a listen. विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार सर, नूह मेवात में हालात जिस तरह के बदले पिछले 72 घंटों में, अब हरियाणा के अलग अलग जिलों में उसी तरह से कम्युनली टेंस माहौल है, ऐसे में वीएचपी का प्रदर्शन कितना सही? अगर कोई ये अपेक्षा करता है कि वो हमला करेगा, हत्या करेगा, बसें जलाएगा, थाना जलाएगा और उसकी कोई प्रतिक्रिया देश में नहीं होगी, तो हम उससे सहमत नहीं है। ये प्रतिक्रिया जिहाद के खिलाफ, उस मानसिकता के खिलाफ देश का संकल्प प्रदर्शित कर रही है। ये होना चाहिए था। दुष्यंत चौटाला, राव इंद्रजीत सिंह ये कह रहे हैं कि ये उसमें फेलियर है, सिस्टम का फेलियर रहा, एक्सेप्ट कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह खुद कह रहे हैं कि किस तरह से प्रोसेशन में हथियार ले जाया गया, उस पर भी सवाल उठा। राव इंद्रजीत सिंह को जो तीर्थयात्रियों के हाथ में लाठी थी वो दिख गई, और जो जिहादियों के हाथ में बंदूकें थी वो नहीं दिखी। ऐसी जो सेलेक्टिव व्यूइंग है, वो सेलेक्टिव व्यूइंग जिहादियों का उत्साह बढ़ाती है। और मैं हिंदू समाज की ओर से ये घोषणा कर सकता हूं कि जो भी व्यक्ति, जो भी राजनीतिज्ञ समाज के साथ खड़ा नहीं होगा और मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में प्रमोट करेगा, ये समाज इसके बारे में सावधानी बरतेगा और इसका परिणाम होगा। राव इंद्रजीत सिंह को परिणाम देखना पड़ेगा फिर चुनाव। मैंने कहा ऐसे सब राजनीतिज्ञों के बारे में हिंदू तय करेंगे कि क्या हो और परिणाम स्वाभाविक होगा। दो छोटे छोटे सवाल सर, जिस तरह से क्या आपको लगता है इंटेलिजेंस का फेलियर है, अगर आप खुद भी कह रहे हैं कि आपने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह की बात को दोहराते हुए कहा कि उधर भी बंदूक था, तो इंटेलिजेंस फेलियर मान रहे हैं इसको आप? मैंने कहा ही है, मॉन्यूमेंटल फेलियर कहा है। मॉन्यूमेंटल फेलियर, हाँ। तो क्या एक्शन की आप मांग कर रहे हैं इस वक्त हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से? दोनों कर रहे हैं। सब अपराधी भी पकड़े जाए और जिनसे लापरवाही हुई है कर्तव्य निभाने में, उनको भी दंडित किया जाए। तो आलोक कुमार थे, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, कह रहे हैं कि जो भी राजनीतिज्ञ वोट बैंक की वजह से हिंदू समाज के साथ खड़ा नहीं है, यानी कि इनडायरेक्ट अटैक राव इंद्रजीत सिंह पे करते हुए कह रहे हैं कि उसको बारे में तय करेगा हिंदू समुदाय। और इसके साथ साथ ये भी सवाल उठा रहे हैं बस राव इंद्रजीत सिंह के ऊपर कि उन्हें दूसरे पक्ष के हथियार क्यों नहीं दिखे। लेकिन ग्राउंड पे हालात ये हैं कि वीएचपी के अध्यक्ष खुद उस मोर्चे को लीड कर रहे हैं जिसने फरीदाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाले अहम टोल प्लाजा को ब्लॉक कर रखा है। और इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देश भर में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जगह जगह पे कर रहा है। वीडियो सहयोगी राजा कुमार के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। All right, now let me cut across to the Congress and the INLD
who have targeted the BJP and the JJP government in Haryana over the Nuh violence, alleging that the ruling parties here have failed to ensure law and order in this state of Haryana. Political reactions pouring in, cutting across. जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई हैं, ये अकस्मात हुआ नज़र नहीं आता। वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है, जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाह रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, शांति से निकल रहे हुए एक धार्मिक जुलूस पर जिस तरह से हमला होता है, पथराव होता है, गोलियां चलाई जाती है, लेकिन ये केवल नूह में नहीं होता। इस तरह की कितनी घटनाएं राजस्थान में होती है। आपने देखा होगा करौली में भगवान राम के रामनवमी के जुलूस पर किस तरह से सुनियोजित रूप से हमला हुआ। हमले के बाद हमलावरों ने पत्थर फेंके, कई गाड़ियां भर करके पत्थर ऊपर छतों पर रखे हुए थे। उनको कौन संरक्षण दे रहा था? किसके दबाव में पुलिस मौन और चुप थी? Now, in the communal violence, it's usually the poor who suffer the most. In Badshahpur, a shop of an old man was burnt down, but what was really his fault? He is ultimately the victim of this mayhem. Shreya Chatterjee brings us more. पुलिस के सामने किया ये? एक बार अगर आप बताएंगे कितने बजे के आसपास की घटना है? 3 बजे। 3 बजे के आसपास। कितने लोग आए थे? 10-12 आदमी आते थे और वो मारकूट कर रहे थे। मैं तो यहाँ था नहीं, न पता 2-4 मिनट बाद उन्होंने आग लगा कर चले गए। पुलिस से कंप्लेन किया आपने? यहाँ पे पुलिस भी आई थी या नहीं? पुलिस भी आई थी। आई थी? हाँ, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, लेकिन रात को मेरे को बुला के ले गए थाने को। हाँ। वहाँ पे उन्होंने जो कुछ लिखाया और अपने पास। क्या बोला आपको? कंप्लेन करेंगे, आगे कार्रवाई होगी आपकी? अल्लाह बेहतर जाना, होगी ना होगी। मुझे तो लिख के मेरा एड्रेस पैसा और रख लिया, मुझे तो कुछ दिया नहीं, ना कुछ बताया। कितना सामान होगा यहाँ पे? सामान बहुत था यहाँ, कूलर भी थे, रजाई गद्दे भी थे, थान भी थे। सारे आपके सामान यहीं पे थे? हाँ, सारा सामान, मेरे कपड़े लत्ते सारे सब कुछ जल गया मेरा। कितना रुपए का सामान होगा? अरे बहुत रुपए का सामान था। मैं तो रात दिन यहाँ ही रहता था, मेरे तो घर भी कुछ ना, मेरा तो इसमें यहाँ जो कुछ था। अरे इसमें तो 3 लाख का नुकसान है, क्या करूं बताओ। All right, here's a big update on the Muslim side moving the top court against rallies. A plea has now been filed by the Muslim side in Haryana, claiming that rallies are being launched across parts of Haryana, and this has triggered communal tensions. It's going to flare up. Situation is serious. The plea says Nuh and Gurugram at this point remains absolutely tense, and they want the Supreme Court, to hear the Muslim side's plea at the earliest. So 2 p.m. is roughly the time that the Supreme Court is going to take up the Muslim side's plea. The Muslim side claims that there are rallies that even as we speak being conducted, and that's flaring communal tensions. So it's likely that the Supreme Court will take up the matter at 2 p.m. Urgent hearing has been sought on the Haryana violence. Kanu Sharda, who's tracking court for us, brings us more. Kanu, give us an understanding on the Muslim side reaching the Supreme Court. They've knocked doors of the Supreme Court, claiming that they are worried, they fear communal flare-up yet again. 3 days of the violence, finally we see police deployment. Situation seems calm, but they allege that there are rallies still being conducted in Haryana and they fear of backlash. Yes, Nabila, the Muslim side have moved the Supreme Court today in an already pending matter related to hate speeches against a particular community. So Muslim side have categorically told the Supreme Court that the situation is really volatile over there and this needs to be heard urgently. That keeping in mind the urgency of the matter, the Chief Justice of India has agreed to hear this matter. It is still not clear that which court will hear this matter within the Supreme Court. But yes, we are hearing that the hearing is at 2 o'clock. The limited prayer in the petition is that the communal tension will increase if these rallies which are being conducted in Delhi NCR are not stopped immediately. So keeping that situation in mind, the Supreme Court has agreed to hear this matter. So we'll come to know in a very short time from now that what the court will decide, whether the rallies which are presently going on in the national capital will
will have to be stay away, or they can continue. So very short season come to know about at the moment, we know that the police across Delhi NCR region have restricted any protests. I mean, they've not given permission for any kind of protest, but we still see the VHP and the Bajrang Dal out on the streets along the border areas. And those are the images on the left-hand side of your screens of this morning. Despite restriction of and no permission to protest, we see hordes of people from the VHP and the Bajrang Dal who've lined up along the border areas, Faridabad, Delhi border, demanding justice. Now, the Muslim side has reached the top court, the Supreme Court, saying that they're worried, they're scared, they're asking for intervention, and more importantly, to stop all rallies that are still being carried out allegedly in Haryana. All right, on that note, I'm slipping into a short break. You could log on to indiatoday.in. You could also download our app for a lot more. Stay with us. I'm going to come back with all the updates coming in from Haryana. 27% of households in Delhi surveyed have a family member with conjunctivitis. 17% of households in Maharashtra and Karnataka have someone with a pink eye at home. This is revealed by a survey done by Local Circles, a community social media platform. Pune city has over 8,000 cases. Pimpri Chinchwad has over 1,000 cases. Mumbai city has seen a 20% increase. Hyderabad, Bengaluru, there is a surge just everywhere. Pink eye has become very common during monsoons, and the primary reason is increase in the growth of bacteria, courtesy the humid weather. The adenovirus strain also is causing a surge in infections. This strain is relatively safer and does not cause eye damage. Pink eye is caused both by adenovirus and bacteria. A healthy person thinks that his eyes are getting watery, or foreign body sensation, or little redness or swelling. The commonest first diagnosis would be epidemic keratoconjunctivitis. So what should you do? Don't touch your eyes. Wash your hands, wash your eyes with ice cold water. So how does this spread? Now, as opposed to popular belief, looking at an infected patient in the eye does not lead to the spread of infection. Using common makeup and towels leads to a spread in infection. The other myth is that wearing specs or shades will prevent the spread. Doctors say it won't. Putting sunglasses does not stop you that you will not get it. The invasion of the virus or the bacteria is through touch. So avoid touching your eyes or somebody's eyes or somebody's face or shaking hands. Many forms of pink eye in fact aren't contagious at all. Eye irritants like certain chemicals and seasonal allergens can cause the same pinkness. This, however, appears to be related to monsoon, say doctors. What should you be doing to prevent pink eye? Ensure hand hygiene. Use a sanitizer at all times. Do not touch your face. Get kids to develop a habit of keeping their hands clean since they are more susceptible. Should you be staying at home if you have a pink eye? People with bacterial pink eye must stay home for 24 hours after they begin taking antibiotics. People suffering from pink eye caused by allergies or a virus can attend school or work, normally after they confirm the cause with a doctor. Well, do you have a pink eye? This is what you must do. Get rid of contaminated contact lens cases or cleaning solution that you would have used. Use only disposable contact lenses. Discard the eye makeup used the time when you had the infection or when you started to get the infection. Most of the time, pink eye is a minor infection. In some cases, it even resolves itself within 7 to 10 days. Consult a doctor because swelling, discoloration and itching of the eyes may indicate a more serious condition. In New Delhi, Sneha Murdani for India Today Television.
Chetan, I'd like to say we've never said we want to be asset light. Okay. The reason in 2014 was not because we wanted to be asset light, because if you remember, our original decision in 2014 was to do the investment ourselves. We were going to have all this Gujarat investment on ourselves, on our books. So we had no intention of being asset light. We became asset light because we got an offer from Suzuki, which when we finalized it, came out so much in our benefit that we said, okay, we'll not have these assets on our books, but we will get a lot of extra benefits by doing this arrangement. So asset light was never our intention. This arrangement was made to get extra benefits more than what any other company in the world gets. And we got those benefits. Right. Also, sir, what happens to the domestic market for Suzuki and Maruti both combined? Will Suzuki take a hit in any way, or will Suzuki's identity in India will be a little, diminished with this announcement, or are you looking at a separate plant for Suzuki? Maruti is a Suzuki subsidiary. The presence of Suzuki in India is entirely through Maruti. Okay, they have their own battery manufacturing plant, but otherwise their presence in India is actually all through Maruti. And anything which is done in the best interests of Maruti is also in the best interests of Suzuki. Both companies have to rise together. We can do things which will be in the benefit of Suzuki, but not in the benefit of Maruti. But that will ultimately hurt Suzuki in the long run. So Suzuki is very conscious of this fact. And this decision is a joint decision taken with the Suzuki management and us to make an arrangement which will be to the mutual benefit of both, but especially for Maruti and Maruti shareholders. Right. Okay. Also, sir, the big question that your shareholders would ask you, what should the shareholders do now? Are they in for some kind of troubles, or is this a happy news for them, sir? We will, after the board meeting discusses, the mode of buying the shares, go to the shareholders, explain to them what I'm talking to you about, the whole rationale of this, and what we think should be the best way of buying the shares from Suzuki. And then, of course, it's the shareholders' decision whether to support that or not, because we need a majority of the minority shareholders to support whatever recommendation we make. We cannot take all these decisions without the approval of the minority shareholders. You're watching India Today. I'm Nabila Jamal. All the updates coming in from Haryana, the riots, and of course the angles that we are bringing to you right from ground zero. Right here, the headlines first. Horrific FIR details speaks about the Haryana violence and says that a mob of 700 chanting slogans fired at a cop. One cop shot in the abdomen, the others injured. Death toll rises to 6 in Haryana riots case. Cow vigilante Monu Manesar denies hand in Haryana riots. He blames Nuh's Congress MLA. Deputy Chief Minister Dushyant Chautala though blames the organizers for the violence. आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना हुई। Backlash of Haryana violence as we see now in Delhi and UP and Delhi sees protesters now on the streets demanding justice. VHP and the Bajrang Dal conducting flag marches in Noida as protesters hit the streets of East Delhi as well. Another shot in the arm for the centre in the parliament after BJP and the YSRCP TDP may back the Modi government on the Delhi ordinance as well as a no-trust ward.
US charges former President Donald Trump with conspiracy to fraud the country and witness tampering in 2020 Capitol Hill riots case. All right, let me take you through all the top developments coming in on the Haryana Nuh violence. Haryana's Nuh at this point remains gripped in tensions. 3 days in a row, curfew has been extended. Around 41 FIRs have been registered. 116 people have been arrested so far. In Nuh alone, at least 5 people were killed in the violence. Nuh's violence has rocked Gurugram as well. Shops set ablaze, vehicles burnt. The mob ransacked shops belonging to the Muslim community. At least 7 stores have been set ablaze. Cops have conducted a peace flag march. Right-wing Hindu groups, VHP and the Bajrang Dal, now staging a protest against Nuh violence at various places, including the Delhi-Haryana border in Badshahpur. Security has been beefed up at border areas amid the protests. They've also planned a protest march from Manesar as the situation remains fragile in Mewat region. Monu Manesar, the cow vigilante who's been accused of murder, who's at the center of violence and at the epicenter here, claims that he wasn't present in the yatra and that the violence was stoked by Nuh's Muslim leaders, including Congress's Mamang Khan. Amid communal flare-up in Nuh, Haryana Deputy Chief Minister has come out in support of the people of the region, blames the rally organizers for chaos in Haryana, says they did not give proper estimation of the crowds who would be joining for their procession. Now, after Haryana's Nuh, Gurugram's Badshahpur is currently on the edge. India Today has accessed an FIR now that blames nearly 700 people, a strong mob, that were chanting slogans, carried out illegal weapons and appealed. In fact, the police now appealing for peace at this point, but the FIR details are quite serious. We believe the FIR suggests that a mob of nearly 700 chanted religious slogans, shot at one of the police officers, and also held nearly 40 people hostage in Ram Temple. Security has been beefed up within the region. Prohibitory orders have been extended in several areas. 116 people have been arrested so far. At least 6 people are killed. Now, those belonging to the Muslim community, we believe in Badshahpur, were attacked. Their shops were burnt, set ablaze. The mob ransacked their belongings and their community members. In fact, we see at least 7 shops, we believe, have been set ablaze, with the RAF now conducting a flag march in Badshahpur, the real violence-gripped region. पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। जो दोषी लोग थे उनको पकड़ा जा रहा है, उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं। नूह में 41 FIR है, उसमें 116 आदमी पकड़े गए हैं। इसके अलावा नूह में अभी 90 आदमी और भी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है और जो संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुड़गांव पुलिस पर पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 15 FIRs रजिस्टर्ड करी गई हैं। ऐसे सभी दोषियों के खिलाफ जो अलग अलग ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में आगजनी के अंदर जो संलिप्त पाए गए हैं। इसके अंदर जो अभी तक 8 एक्यूज्ड को अरेस्ट करा गया है और 30 ऐसे जो लोग हैं, व्यक्ति विशेष हैं, जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करी गई है। इस वक्त मैं नल्हड़ शिव मंदिर के बाहर मौजूद हूँ। 31 जुलाई को इसी शिव मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी और उसके बाद यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी। अब आज तक इंडिया टुडे के पास नल्हड़ पे उस दिन जो हिंसा हुई थी उसकी FIR की कॉपी हाथ लगी है। FIR
सुरक्षा में यहाँ पर तैनात पुलिस कर्मियों ने ही दर्ज कराई है। एफआईआर में काफी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये शिव मंदिर है जहां से जलाभिषेक की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर जब हिंसा हुई थी उसके बाद से यहाँ पर आईटीबीपी की कई टुकड़ियों को इस मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है। एफआईआर में काफी चौंकाने वाला खुलासा पुलिस कर्मियों ने किया है। पुलिस कर्मियों ने बताया है कि जब यहाँ से शोभा यात्रा शुरू हो रही थी तो ये जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, इन पहाड़ियों से, आसपास की पहाड़ियों से और आसपास जो खेत हैं उन खेतों से 700 से 800 लोग, जो भीड़ थी, उपद्रवी भीड़ थी, उनके हाथ में लाठी डंडे, अवैध हथियार थे। वो धार्मिक नारे लगाते हुए शिव मंदिर के पास जो यात्रा चल रही थी उसे रोकने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जो शोभा यात्रा के साथ सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी होते हैं, वो जो 600 से 700 की उग्र भीड़ थी, जिनके हाथ में लाठी डंडे थे, अवैध हथियार थे, उससे लगातार पुलिस पार्टी पर और यात्रा में शामिल लोगों पर जानलेवा हमला करना शुरू कर देते हैं। पुलिसकर्मी जो शोभा यात्रा में शामिल होते हैं वो एक के बाद एक भीड़ को रोकने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन भीड़ रुकती नहीं है। लेकिन एफआईआर में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो खुलासा ये हुआ है कि ये जो खेत आप देख पा रहे हैं मंदिर के आसपास और ये जो पहाड़ी देख पा रहे हैं, इन पहाड़ी इलाकों से जो उपद्रवी हैं, 600 से 700 के लगभग जो उपद्रवी थे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अवैध हथियारों से फायरिंग करते हैं। इस हमले में जो ये शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है, इस हमले में कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई थी। उसके बाद जो पुलिसकर्मी है वो तकरीबन 3 से 4 हजार के लगभग जो यात्री थे शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए, ये जो सामने की तरफ मंदिर आप देख पा रहे हैं, उस मंदिर में पुलिसकर्मी सूझबूझ दिखाते हुए सभी यात्रियों को उस मंदिर में कैद कर लेते हैं। मंदिर में 4 से 5 हजार यात्री कैद होते हैं और जो आसपास की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से लगातार इस मंदिर और आसपास की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। ये जो इलाका आप देख पा रहे हैं, इस इलाके में कई गाड़ियां खड़ी होती हैं। उन गाड़ियों की आड़ लेकर पुलिसकर्मी भी जवाबी फायरिंग करते हैं और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर कोहराम मचता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे जलाभिषेक में शामिल जो गाड़ियाँ थीं उसको उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। एफआईआर में ये भी लिखा हुआ है कि जब यात्रा निकल रही थी और उपद्रवी आगे बढ़ रहे थे, तब उपद्रवियों ने पेट्रोल बम से भी हमला किया था। तो एफआईआर में काफी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जो शिव मंदिर है उसके आसपास की पहाड़ियों से, खेतों से 600 से 700 की उग्र भीड़ आई, जिनके हाथ में लाठी डंडे पत्थर और अवैध हथियार थे और लगातार वो शोभा यात्रा पर, पुलिसकर्मियों पर हमले कर रहे थे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, मेवात, आज तक। Well, those are some really important points that Arvind Oja has brought to us. What the FIR says and suggests, I'm going to break that down for you here. A quick look at the complaint that's been filed. We know that there are nearly 41 FIRs that have been filed in the Nuh violence case and, of course, even the surrounding areas. But the one FIR that India Today has accessed, of course, speaks about that very day when hordes of people took shelter at the Nalhar Mandir due to the violence that erupted. So, breaking that down for you, we're seeing the FIR that speaks of a riotous mob who allegedly chanted pro-Pakistan slogans and moved towards the Nalhar temple. The FIR speaks of the mob firing at police officers who were guarding the area, and stones were pelted. In fact, one police officer was also killed in the attack. The mob were armed with illegal weapons. Now, that's precisely what the question here is. Where did they access illegal weapons? We believe that the rioters on both sides had weapons, and illegal ones, of course, illegal ones. AK-47 also, some of them had brandished, is what we hear. Of course, the police is investigating on that to verify those statements and the complaints that have been filed. But from the FIR that we bring to you here, Shiv devotees who were part of that Shobha Yatra were the ones who were particularly targeted. The riotous mob fired at the Shiv temple as well while that Yatra was on. So these are elements of the FIR that we're bringing to you as the mob, we
believe, gher out the Ram temple, and nearly 40 pilgrims were held hostage inside. One cop was also shot dead. Now, this is one of the FIRs that the insides of which we're bringing to you. There are nearly 41 FIRs that have been registered so far in the Haryana violence. Now, let me cut across to a lot more as we bring to you. In fact, we hear that the rioters had gathered and they were pre-planned about this attack. What we hear is that there was a lot of planning that was done weeks ahead, knowing very well that this yatra is going to be passing the areas which are Muslim dominated. So the question is, why wasn't intelligence reports taken seriously by the police? Now here, as I show to you here, a lot of the mobs there fired at the police officers, stones were pelted at police officers, and this is precisely what the FIR really suggests. So now, at this point, we know that the FIR that has been filed says that the mob responsible belong to both communities, but largely targeting, at this point, the reference is towards one community that largely speaks of their attempt to attack a Shobha Yatra. But of course, the Muslim side has their story saying their mosque was burnt down, their imam was killed inside the mosque. So a lot more that needs to be uncovered. It's the police to investigate the matter. जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई हैं, ये अकस्मात हुआ नज़र नहीं आता। वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है, जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाह रहा है। कि मेवात का जो इतिहास रहा है, ये इतिहास हमेशा प्रो इंडिपेंडेंस हो, प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, हमेशा इस देश की अखंडता और एकता के साथ रहा। और आज नहीं, जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था तो भी मेवात के लोगों ने उस समय के शासकों के साथ खड़ा होकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई में काम किया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जब देश भर से पलायन चल रहा था तो महात्मा गांधी जी के आग्रह पे सब लोगों ने रुककर इस देश को और मजबूती से कैसे बढ़ाया जाए योगदान दिया है। जिस व्यक्ति की अगर सोच इस तरह की है तो सोच का कुछ नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्यपूर्ण है, शांति से निकल रहे एक धार्मिक जुलूस पर जिस तरह से हमला होता है, पथराव होता है, गोलियां चलाई जाती है, लेकिन ये केवल नूह में नहीं होता। इस तरह की कितनी घटनाएं राजस्थान में होती है। आपने देखा होगा करौली में भगवान राम के रामनवमी के जुलूस पर किस तरह से सुनियोजित रूप से हमला हुआ। हमले के बाद हमलावरों ने पत्थर फेंके, कई गाड़ियां भर करके पत्थर ऊपर छतों पर रखे हुए थे। उनको कौन संरक्षण दे रहा था? किसके दबाव में पुलिस मौन और चुप थी? ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो ऐसा लगता है कि हुआ है, क्योंकि जो है ये ब्रजमंडल की जो यात्रा थी ये कोई पहली बार नहीं निकल रही है, ये पहले भी निकलती रही है। लेकिन सोची समझी साजिश के तहत जो है ये हमला किया गया है, उसकी पूरी जांच चल रही है और जांच के तहत जो भी इसके अंदर दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी सजा जो है उनको दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट कहा है और पल पल की जानकारी को हासिल कर रहे हैं। पुलिस जाँच कर रही है, जो कोई भी इसके अंदर संलिप्त हो, चाहे किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, किसी भी जाति वर्ग से क्यों ना हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अगर और दुरुस्त होता तो मुझे लगता था कि कुछ हद तक इसके ऊपर जो है बहुत समय पर काबू पाया जा सकता था। हरियाणा भी अब मणिपुर की तरह बदल रहा है। क्यों हरियाणा के अंदर ये वायलेंस हुई? ये जो वायलेंस, सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था मेंटेन करना। सरकार ने कानून व्यवस्था बिल्कुल मेंटेन नहीं करी। इनके खुद उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे से चूक हुई है। इनके केंद्र के मंत्री राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि हाँ, ये ऐसी स्थिति हुई है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा साजिश इसके अंदर हुई। इनके गृह मंत्री कह रहे हैं कि इसके अंदर इंजीनियरिंग हुई है। इनके विधानसभा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि एक साजिश रची गई है। तो अगर इनको सब कुछ मालूम था तो क्यों जानबूझ के हरियाणा को जलने दे रहे हैं? All right, now Monu Manesar, who was linked to killings of two alleged cow smugglers in Bhiwani this February, is now back in the news after communal violence erupted in Nuh, where
6 people were killed. Now, violence was triggered after rumors of Monu Manesar himself attending that VHP Yatra surfaced. While speaking exclusively to India today, he's claimed that he wasn't even part of that rally and blames it on the Muslim side for carrying AK-47 rifles and that they were the ones who stoked violence in the Muslim area of Nuh. He accuses Congress MLA Maman Khan of instigating crowds. मोनू, सीधा सवाल पर आते हैं कि नूह में जो भी हिंसा भड़की है उसमें आपका नाम सामने आ रहा है। मोनू, ये जो भी नाम ले रहे हैं, जो आपने वीडियो देखी है, उस वीडियो में कोई भड़काऊ बयान या कोई भी भड़काऊ चीज उसमें तो है नहीं। लेकिन जो भी गो तस्कर है, जो वहां पे क्राइम करते हैं, ये सब उनका करा धरा है। साइबर क्राइम थाना फूंक दिया उन्होंने, सब उनकी बदौलत है। पर जो पिछली साल जो घाट मीका का इंसिडेंट हुआ नासिर जुनैद वाला, उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव था। फिर ऐसे में आपका वीडियो आना उसने उकसाने का काम करा है। कई जो आपके वीडियोस पे रिप्लाई आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके वीडियोस ने जो है वो उकसाने का काम करा है इस यात्रा में? कोई उकसाने का कार्य नहीं किया, ना मैं उस यात्रा में गया, क्योंकि हमारे अधिकारीगण थे उस यात्रा में, मैं था ही नहीं। हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हैं, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी सीधा फायरिंग की गई है। तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? हमारी हिंदू बहन बेटियों पर सीधा फायरिंग, और ये हिंदू समाज बिल्कुल नहीं सहेगा कि एक मुस्लिम बाहुबल्य क्षेत्र में एक तरह से पूरी तरह घेर कर गोलियां चलाना, जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं और मेरे साथियों से मेरी बात भी हुई है कि 47 जैसे अधिक मतलब आधुनिक हथियारों से भी गोलियां चलाई गई हैं, लॉन्चर भी चलाए गए हैं, जो हमने सुना है, हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने बताया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लेकिन अब ये जो 5 मौतें हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते? क्योंकि आपका वीडियो आया था और प्रशासन जो है उसको पता होने के बावजूद भी पुख्ता इंतजाम नहीं करे, तो क्या ये आपके भाषण को जिम्मेदार माने या प्रशासन की लापरवाही को माने? इसमें सारा जिम्मेवार वहां के मुस्लिम विधायक। कौन है ये मुस्लिम विधायक? आपने देखा होगा, उनकी न्यूज आ रही है, मामन खान है और कई विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मतलब मुस्लिमों को कह रहे हैं मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। लड़ाई लड़नी है तो जंग पे जाओ ना, यहाँ पे क्या लड़ाई लड़े हो? तो आप वहां उस यात्रा में थे या नहीं थे? एक आखिरी सवाल मेरा आपके लिए था, क्या वहां आप जाने वाले थे, आपको रोक दिया गया? आपने क्यों लास्ट टाइम पे प्लान कैंसिल करा? मेरा लास्ट टाइम पे प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इसलिए था, मेरे से प्रशासनिक अधिकारियों का, मेरे अधिकारियों के पास मैसेज आया था और मेरे पास भी मैसेज आ गया था कि भाई साहब आप जाओगे तो वहां पे मतलब माहौल बिगड़ सकता है। तो मैंने सोचा कि हमारे मतलब यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, हमारे मंदिरों में पूजा होनी चाहिए। तो हम इसी वजह से नहीं गए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तो वहां पे माहौल खराब हो सकता है। सोशल मीडिया के द्वारा कोई सिलेंडर फोटो लगा रहा है कि हम बम से उड़ा देंगे, कोई बम का फोटो दिखा रहा है हम उड़ा देंगे 47 से, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। All right, now Bajrang Dal, the VHP have upped the ante against riots that broke out in Nuh. Amidst the already tense atmosphere, situation has escalated further with Hindu body groups staging a protest in the national capital. The protesters even blocked national highways on Badshahpur border. Delhi police officials stated that permission was not sought for any rally or meeting at a public place. Bajrang Dal leaders and the VHP workers have hit the streets of the national capital and adjoining areas of Noida, Uttarakhand's Dehradun and Haryana's Panipat, calling it in fact, this security has now been beefed up across North India. Delhi and Noida has been put on high alert. Not just this, family of the victim who was killed in the violence stormed the streets of Panipat seeking justice. At least 6 people were killed in the riots that rocked the state of Haryana. Among them, at least 2 of them were home guards and 4 civilians. जो हमारा लड़का गया था परसों से सेवा में गया था, देश सेवा में, और बजरंग दल से जुड़ा हुआ है 1 साल से। बहुत अच्छा लड़का था, किसी चीज़ का ऐब नहीं था, बहुत अच्छा था, परिवार में अकेला था। और हमने न्याय चाहिए, जांच चाहिए, सख्त कार्रवाई चाहिए, सख्त से सख्त चाहिए। All right, some big update coming in as the Supreme Court has stepped in to review the situation in Haryana and Uttar Pradesh as pleas have been filed asking for intervention. Now, the Supreme Court says and directs the centre to ensure no hate speech
happens at any of these rallies conducted by VHP and Bajrang Dal. Supreme Court says if needed, additional forces should be deployed and asks for rallies to be videographed as well, that these rallies must be videographed, no hate speech should be allowed, and if needed, more security must be called in. The next hearing would be on the 4th of August. This is a big update coming in as the Muslim side had approached the Supreme Court asking for intervention, claiming that rallies are being held across. This is, of course, in fear that they have knocked on the doors of the apex court. And what we know here is that the VHP and the Bajrang Dal are carrying out indeed rallies across the national capital, different parts, almost to the periphery of the national capital, different border points. We see the Bajrang Dal and the VHP have gathered in large numbers as the Supreme Court, observing the situation, directs the centre to ensure that there are no hate speeches being made at these rallies. Supreme Court says, if needed, additional forces should be deployed and asks for rallies to be videographed. Says that these rallies must be videographed. If any hate speech is delivered, then that should be clamped down. Rallies can go on though. The next hearing is on August 4th on Friday. All right, this is a big green signal, it appears, coming in from the Supreme Court. On one hand, the Supreme Court says that no hate speeches should be allowed. On the other, it also signifies that the VHP and the Bajrang Dal can carry out their protest. As we know, the Delhi police had restricted gatherings anywhere in the national capital. Protests were banned. And now we hear the Supreme Court saying that hate speeches should be avoided, but more or less looks like the rallies can go on. Kanu Sharda, tracking court for us, gives us more. Kanu, please tell us, what did the Supreme Court say? We believe a direction has been given to the centre to ensure hate speeches are not delivered and these rallies must be videographed. But it also suggests that protests and rallies of this nature can be allowed. Yes, Navina, the rallies for now can take place. There were 23 rallies which were supposed to happen in Delhi NCR today. Major of them have already been done as informed by the petitioners in the top court. So 5 to 6 rallies which are expected to happen during the evening hours in the sensitive areas of Delhi. The centre has been told categorically to give adequate security forces over there and to record every rally. Use of CCTV was recommended by the Supreme Court and also the videographing of the entire event. The court also went on to state that the earlier order of the top court, which categorically made it clear that no hate speeches can happen targeting one community, should be adhered to, and notices have been issued to the state of Delhi, Haryana and Uttar Pradesh, where these all kind of VHP Bajrang Dal rallies are being held right now. So, very clear direction from the Supreme Court that no hate speeches can happen, and this is because the Supreme Court has already decided on it. The advocate appearing on behalf of Centre has told that the law and order situation will be taken care of, and all other facts of the cases, including the Nuh violence which happened yesterday, all the reports will be handed over to the Supreme Court on August 4 when the matter will be heard again. All right. Kanu, on whose plea has the Supreme Court given that direction? We believe multiple pleas have been filed before the Supreme Court. Give us an understanding on those who have sought the top court's intervention. Nabila, these are the Muslim side who is the original petitioner in the main case, where they have alleged in the past also. Since 2022, there were some hate speech cases which have been occurred in the entire country, and the matter was ongoing before the Supreme Court. In 2023 also, a similar order of no hate speech should be given to one community, targeting one community, was passed in the past also. So Supreme Court today has just reiterated that the orders passed in 2022 and 2023 should be adhered to, and there should be no hate speeches. This is and the law and order situation needs to be monitored very carefully. All right, thank you very much, Kanu Sharda, for joining us on that. As we hear
a clear direction from the Supreme Court to avoid any hate speeches. This is a direction gone to the centre to ensure additional security forces to ensure that these rallies don't flare up, no hate speeches are made, and more importantly, videograph these rallies just to contain any inflammatory speeches. That apart, this suggests that rallies can go on. Supreme Court hasn't really put a stop to these protests and rallies. Delhi police had restricted the protesters from assembling, but it appears the Supreme Court's order now, in a way, paves the way for these protesters to come out on the streets. All right, we are slipping into a short break. On that note, we'll be coming back with a lot more on Haryana's violence and the state that still simmers. In fact, the top court will be hearing the case on 4th of August. This is when the case will be taken up yet again. Several pleas filed with the top court. The Muslim side has knocked the doors of the Supreme Court, saying that they feel threatened and there are rallies being conducted, and this is going to really flare up the situation. Communal tension could flare up a lot more than already is. The Supreme Court, hearing the matter with immediate effect, took it up on urgency and has said that has very strictly directed no hate speeches can be made, but also did not put a stop to any of the rallies that are being currently pulled off. Along the border areas of Badshahpur, Faridabad, we see protesters who assembled. हमने जो है लास्ट 2 डेज में कर्फ्यू भी लगाया था टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. उसी कड़ी में जो है 14 पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ स्टेशन हैं आज की डेट में. 12 कंपनियाँ डिप्लॉयड हैं, 2 कंपनियाँ रिजर्व में हैं. साथ ही साथ हमारे हरियाणा पुलिस की भी ऑलमोस्ट 20 कंपनियाँ यहाँ डिप्लॉयड हैं. हमारे पुलिस जो हमारा पुलिस विभाग है उसमें डिस्ट्रिक्ट एसपी के अलावा जो है हमारे 6 और आईपीएस ऑफिसर्स हैं हु हैव बीन डिप्यूटेड ऑन हियर ऑन वेरियस ड्यूटीज़. साथ ही साथ जो है मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा और डीजीपी कार्यालय द्वारा जो है इसकी समय समय पे समीक्षा की जा रही है. उसी कड़ी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इम्प्रूवमेंट देखते हुए हमने जो है आज निर्णय लिया सुबह कि कर्फ्यू का जो टाइमिंग्स है इसको हम आज रिलैक्स करेंगे. 3 से 5 बजे तक के लिए रिलैक्स करेंगे. एंड गोइंग फॉरवर्ड डिपेंडिंग ऑन के आज की जो है व्यवस्था कैसी रहती है उसके हिसाब से आज शाम को हम कॉल लेंगे कल और आने वाले समय के लिए. तो एज़ फार एज़ जो नए ऑर्डर्स हमने करे हैं उसकी कड़ी में ये हैं. इसके पश्चात अगर आपके कोई इसमें सवाल हैं और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन संबंधित पार्ट है वो आप जो हमारे सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं श्री वरुण सिंगला जी, आप उनको एड्रेस कर सकते हैं. सर आपने बताया उसकी टाइमिंग में रिलैक्स जो भी देंगे आप जी, क्या टाइमिंग है? क्या आज हमने 3 से 5 बजे तक का जो है रिलैक्सेशन दिया है और इस 3 से 5 बजे तक की समीक्षा हम शाम को करेंगे और कल के जो टाइमिंग्स होंगे वो अकॉर्डिंगली भी डिसाइड करके भी लेट. कंडीशन क्या होगी सर और कौन-कौन से इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है क्योंकि पूरे नूह में तो नहीं लगा हुआ? जी नहीं, कर्फ्यू सभी 4 सब डिविजन्स में लगा हुआ है. 4 सब डिविजन्स में जो है ये हम 3 से 5 बजे की जो है रियायत देंगे आज और इसी रियायत के चलते इसकी समीक्षा करके कल अगर समय में कुछ हमें तब्दीली अगर करनी होगी तो वो करके हम आपको टाइमली इत्तला करेंगे. कंडीशन क्या होंगे सर? कंडीशंस यही होंगे कि जी जैसे कर्फ्यू में रहता है कि मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, तो अब ये कर्फ्यू जैसे अगर हम लिफ्ट कर रहे हैं तो लोग अपनी एसेंशियल चीज़ों के लिए कोई दवाई है, कोई आपकी ग्रोसरीज़ हैं, उस टाइप का कोई सामान आपने ख़रीदना है, कोई आपने अनाज ख़रीदना है, कोई किसी ने दूध चावल ख़रीदना है, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो जाके और दुकानों से ले सकते हैं. 144 वाली धारा जो है वो प्रोहिबिट करती है कि 4 या 5 से व्यक्ति से अधिक जो है इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वो अभी भी लागू है. तो वो चीज़ हम इंश्योर करवाएंगे कि लोगों का एकत्रित होना जो 144 धारा जो उस चीज़ को प्रोहिबिट करती है वो चालू रहे. सर स्कूल कॉलेज का कब खुलेंगे और इंटरनेट सेवा कब बहाल होगी? तो इंटरनेट सेवा फ़िलहाल 3 दिन के लिए जो है बंद की गई थी 31 तारीख से, तो कल उसकी भी समीक्षा करके अगर उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव रही तो उसको भी जो है हम वापस लेने को ऑर्डर करवाएंगे. स्कूल कॉलेज खुलने का भी समीक्षा जो है कल या परसों की जाएगी. इस हफ्ते तो बंद ही रहेंगे. प्रॉब्ली फ्राइडे को या सैटरडे को इस पर कॉल ली जाएगी ताकि अगले हफ्ते में इसको सुचारू रूप से खोल सकें. सर कर्फ्यू में ढील का जो मुद्दा है, दुकानें खुलनी भी तो जरूरी है जी, सामान लोग लेके कहाँ से जो पाएंगे? तो इसकी इसकी जो हमने मीटिंग सभी कर ली थी जिसमें हमने मार्केट एसोसिएशन, मंडियों से जो हमारे दूध के जो बूथ हैं जो वीटा से हमारी सप्लाई फरीदाबाद से होती है, तो उनको हमने सुबह ही ये दिशा निर्देश दे दिए थे कि प्रॉपर स्टॉकिंग कर ली जाए, प्रॉपर अपने जितने वेंडर्स हैं उनसे संपर्क साध लिया जाए
ताकि जब दुकानें खुलें तो लोगों को जो है समयबद्ध तरीके से सामान मिल जाए। इसी कड़ी में जैसे जैसे आगे और डील मिलती रहेंगी तो सुचारू रूप से चीज़ें और अपनी दिशा पकड़ती रहेंगी। अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर, कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं, कितनी टीमें लगी हुई हैं? देखिए अभी तक कुल 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं विभिन्न मामलों में, और मुख्यतः 4 थानों के अंदर ये एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक एफआईआर हमारी सिटी तावड़ू और बिछोर में भी दर्ज हुई है, और कुल अब तक 116 लोगों की प्रीमा फेसाई जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके ऊपर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और आगे हम लगातार हमारी टीमें इसमें हमने गठित की हुई हैं। एसटीएफ भी हमारे साथ हैं, हमारे लोकल सीआईए पुलिस भी हैं, और जो और आईपीएस ऑफिसर्स यहाँ डिप्लॉयड हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉर ensuring the apprehension of these criminals involved in these activities। तो उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को और जो अभी तक की एप्रीहेंडेड लोग हैं उनकी इंटेरोगेशन डिटेल्ड में की जा रही है। सभी एक्यूज्ड के लिए आज हमने पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई किया है, अभी ये प्रोसेस चल रही है। आज शाम तक हमें ये क्लियर हो पाएगा। मैक्सिमम एक्यूज्ड का हमने सभी का पुलिस रिमांड अप्लाई किया है ताकि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें कि किस प्रकार से ये लोग संगठित हुए थे और किस प्रकार से ये अपराध कारित हुआ था। जितनी एफआईआर हुई है उन एफआईआर में ज्यादातर एक बात ये कॉमन है कि जो जिन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी थी, जिन्होंने अपने बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है कि एक ग्रुप आया 600-700 लोगों का ग्रुप, उन्होंने एक तरीके के नारे लगाए और पुलिस के ऊपर भी अटैक किया है, पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की है। ऐसा भी कई उसमें आया है कि कई गोली लगी, कई पुलिस कर्मियों को हुई। तो क्या अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में लग रहा है कि ये अचानक से हुई हिंसा है या पुलिस को टारगेट करना ये सब कुछ पहले से प्री प्लान था, ये साजिश थी? और किस किस तरह के वेपन का इस्तेमाल किया गया सामने से? देखिए अभी ये सब चीज़ें कहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इनकी हमने पहले धरपकड़ की है और रिमांड पीरियड आज हम रिमांड ले रहे हैं। रिमांड के बाद ही हमें पूरी बात क्लियर हो पाएगी जब हम मैक्सिमम एक्यूज्ड का इंटरोगेशन कर पाएंगे कि प्रॉपर क्लियर पिक्चर क्या है। तो अभी इसमें कमेंट करना अर्ली होगा। और वेपन्स जहाँ तक बात है इसके अंदर इसकी विषय में भी जांच की जा रही है कि ये वेपन अवैध थे, वैध थे। जिस भी तरह के वेपन थे इनको रिकवर भी किया जाएगा। अगर वैध थे तो उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रोसेस शुरू की। नहीं, ये नंबर तो ये तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो वेपन्स रिकवर होंगे वो वेपन्स के बारे में मैं कह रहा हूँ कि वो वेपन्स कितने हमारे लीगल, जो भी लीगल भी होंगे उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे, जो इलीगल होंगे उनकी रिकवरी की जाएगी। बड़ा सवाल है, हिंसा से पहले 30 तारीख को ही तमाम वीडियो वायरल हो रहे थे अलग अलग कि वहां पर पहुंचना है। क्या ये जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं थी? पुलिस प्रशासन कहाँ थी? फोर्सेस कहाँ पर थे? और जिस वजह से ये हिंसा इतनी बड़ी हो गई, क्या पुलिस सो रही थी सर? क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी? भड़काऊ जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, इस तरह की बातें थी, तो क्या उनकी भी कहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है? क्या उनकी भी कोई गिरफ्तारी हुई है? खासतौर पे जैसे बिट्टू बिजरंगी हैं, उन्होंने कुछ गलत अल्फाज कहते हैं कि मैं ससुराल जा रहा हूँ, कई चीज़ें हैं। लेकिन अपने क्या नाम में मोनो मानेसर वाली बात थी, उसने कहा कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, तो वो नहीं पहुँचे, वो अलग बात थी। तो क्या इनकी भी बातें दोनों तरफ से उनको भी चेतावनी दी है, खासतौर पे जिसकी वजह से भड़का है या हालात दिख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि इस तरह की यात्राएं पहले भी मेवात में हुई हैं और बहुत पीसफुल तरीके से यात्रा कंडक्ट हुई है। पुलिस फोर्स हमेशा से मुस्तैदी से काम करती आ रही है और पूरी डिप्लॉयमेंट हमारी इस बार भी थी। करीब 800 के करीब टोटल मैन पावर पूरी यात्रा में डिप्लॉयड थी। क्योंकि यात्रा का स्पैन लंबा था तो जाहिर सी बात है कि फोर्स जो है अलग अलग एरियाज में डिप्लॉयड थी। तो पुलिस ने पूरी तरह से अपनी कोशिश की थी कि किसी भी तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इस तरह के पहले भी बहुत सारे इश्यूज हुए हैं जहां पर पुलिस ने इसी प्रकार से मुस्तैदी से काम करते हुए और लॉ एंड ऑर्डर को बचाया है। लेकिन समटाइम्स थिंग्स जो है वो जिस तरह का रिएक्शन यहाँ से आया उसमें ये वायलेंस हुई है और यही हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये किस प्रकार से हुआ। वायरल हो रहे हैं, ऑडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कह रहा है कि यहाँ मंदिर के पास पहुंचिए, वहां पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तमाम मैसेज आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, तमाम चीज जो वायरल है। क्या इसकी जानकारी आप लोग तक थी या नहीं थी? सर यात्रा संवेदनशील इलाकों से निकलनी थी, इनपुट आप लोगों को आ रहे थे, लेकिन जिले के दोनों बड़े अधिकारी छुट्टी पे थे, तो ये क्या एक्शन लेने में देरी नहीं हुई इस चीज से? क्योंकि हम खुद मौके पे थे, हमने देखा हिंसा को शुरू होते हुए और अंत तक हम देखे तो एक्शन होने में काफी डिले हो गया। लोगों का आरोप है कि 25,000 लोगों का आने का दावा था, सिर्फ 800 लोगों की फोर्स क्या ये पूरी थी?
नहीं, मैं जवाब देता हूँ इस चीज़ का कि जैसा कि मेरे साथी वरुण ने बताया कि इस टाइप की और भी यात्रा जो है यहाँ पे कोई पहली दफ़े नहीं है कि इस टाइप की यात्रा हुई है। पिछले साल भी यात्रा हुई थी, इस कड़ी में इस साल भी इस टाइप की यात्राएं हुई हैं। इस टाइप की यात्रा जब होती है तो पूरे रूट को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाई जाती है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए जाते हैं। परंतु ये जैसा कि इन्होंने बताया, ये जांच का विषय है कि एकदम से ऐसे कैसे फ्लेयर अप हो गया कि इतने व्यक्ति वहाँ पे पहुँच गए। ये ज़रूर हम मानते हैं कि जैसे हमारी पीस कमेटी की जो मीटिंग है, इस जैसे जितनी भी इस टाइप की रैलियां जो होती हैं उससे पहले पीस कमेटी मीटिंग्स भी होती हैं। तो इसमें भी 27 तारीख को पीस कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें कि दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। कुल लगभग 30 से 35 व्यक्तियों की उसमें भागीदारी थी। और ये कोई पहली पीस कमेटी मीटिंग नहीं है। हम ऑलमोस्ट एवरी फोर्टनाइट या 15-20 दिन में एक हमारी रेगुलर मीटिंग भी होती है। इन एडिशन टू जो ये किसी अगर इसी यात्रा के अगर संबंध में मैं कहूँ तो पीस कमेटी की मीटिंग भी हुई है, उसमें भी सारे विषय जो हैं डिस्कस हुए हैं। उसमें भी जो लोगों ने बातें रखी थी वो भी डिस्कस हुई हैं। फिर यात्रा जिस प्रकार से हमने बताया कि इस प्रकार की यात्रा पहले भी हुई हैं और उसी के चलते उसी की कड़ी में जो है सारी तैयारियां और कार्रवाई इसमें की गई। अब ये जांच का विषय है कि एकदम से जो है ऐसे कैसे एक इंस्टेंस एक जगह पे कैसे फ्लेयर अप हुआ, ये जांच चल रही है। जैसी जांच का उसमें कोई वो आएगा तो हम आपके साथ रखेंगे। जी। लोकल लोग हैं या ये दोनों पहलू जो हैं ये इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं कि इसमें आउटसाइडर्स भी थे या यहाँ पे लोकल लोग भी थे। 116 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं अभी तक, क्या कौन है वो लोग, क्या उनकी पहचान हो पाई है और कितनी उसमें महिलाएं हैं, कितने उसमें पुरुष हैं? अगर आप इस पे थोड़ा सा क्या इनका आपराधिक बैकग्राउंड है जो पकड़े गए हैं कुछ लोगों का? देखिए, आपराधिक बैकग्राउंड का भी चेक टाइम लगता है आपराधिक बैकग्राउंड को चेक करने के लिए। उनके हमें कई सारे पोर्टल्स के ऊपर प्लस वो जिस जगह के रेजिडेंट हैं उस थाने के भी हमें उसके रिकॉर्ड चेक करने पड़ते हैं। तो आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक हमारे पास उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और इसमें महिलाएँ नहीं हैं, इसमें युवा वर्ग है और सभी लोकलाइट हैं। तो अभी इसके अंदर बाकी लोगों की जो भूमिका है, जो बाहर से बात की जा रही है कि बाहर के जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है। सभी टीमें इसमें जो हमारी CIA की भी हैं और जो STF की भी हैं वो पूरी तरह से इसमें हर एंगल को जांच कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है हम आपको पूरी नाबालिग बच्चे भी दिखाए गए हैं कि आप नाबालिग बच्चों की गिरफ्तारी दी है क्या? तो किस तरीके से वीडियोस में दिख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी जो अरेस्ट हुए हैं वो उसमें हमारे जो मेल एडल्ट्स हैं वो अरेस्ट हुए हैं और बाकी जो भी इन्वॉल्व होंगे, चाहे नाबालिग बच्चे भी हैं, जिनकी भी भूमिका निकल के आएगी, वो सभी उनकी गिरफ्तारी है। सर, आपका कहना है कि आपकी 800 लोगों की तैनाती थी, 800 आपका पुलिस बल था। नलहड़ मंदिर की जितनी वीडियोस आई हैं, हम खुद उस मंदिर के अंदर मौजूद थे। नलहड़ मंदिर की FIR में भी पुलिसकर्मियों ने ये लिखवाया है कि किस तरीके से खेतों के जरिए और पहाड़ी के जरिए टारगेट किया गया, मंदिर को फायर किया गया, एक तरह के धार्मिक नारे लगाए गए और वहां पर जो हवाई फायरिंग हुई उसमें आपको लगता है कि आपकी पुलिस फोर्स वहां पर मंदिर में बिल्कुल भी नहीं थी? शुरुआत में बहुत गिनती के पुलिसकर्मी वहां पर थे, जहां पर इतने सारे इस यात्रा से जुड़े हुए लोग और बाकी की जनता थी, वो चारों तरफ से घिर चुके थे और जब उन्हें निकाला गया वहां से, बहुत बाद में जाके निकाला गया, तो भी बहुत गिनती के वहां पे कमांडोज थे और बहुत रिस्क में रख के लोगों को बाहर निकाला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बता रहे हैं कि जो मंदिर की जो बात कर रहे हैं आप, मंदिर से यात्रा शुरू होकर फिरोजपुर झिरका तक जानी थी। तो ऐसा नहीं है कि पूरी पुलिस फोर्स जो है मंदिर पे ही डिप्लॉयड थी। पुलिस फोर्स पूरे रूट पे डिप्लॉयड थी। और जो आप बता रहे हैं, जब ये व्यक्ति वहाँ से निकाले गए थे तो उस दौरान ऐसा नहीं है कि वहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद नहीं थी। उस दौरान वहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद स्वयं मौजूद थे। उस दौरान वहाँ पे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के 2-3 SPs मौजूद थे। वहाँ हमारे सिविल प्रशासन के SDMs मौजूद थे। वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे बसें पहुँचाई गई। तो ऐसा नहीं है कि जो है पर्याप्त मात्रा में वहाँ, परंतु जैसे आप समझिए कि पूरा रूट पे जो है पुलिस प्रोवाइड की जाती है, कोई एक स्पॉट पे प्रोवाइड नहीं की जाती। वो ये था कि यात्रा वहाँ से शुरू हो गई और फिरोजपुर झिरका तक जानी थी। सर, पहली हिंसा हुई और देखते ही देखते 15 से 20 मिनट में हिंसा कई और जगहों पे हुई। तो क्या आपस में कोई कनेक्शन है? जो अलग अलग जगहों पे जिन लोगों ने, जिस भीड़ ने हिंसा की, आपस में कोई कम्युनिकेशन था इनका? नंबर 1। नंबर 2, कितनी PCR कॉल उस दिन पुलिस ने रिसीव की और सर कितनी देर तक हिंसा चली? ऑफिशियली कब तक पुलिस ने कंट्रोल किया?
देखिए ऐसा है कि अगर आप बात करें कि उस वक्त पे जो इंसिडेंट्स जिस तरह से हो रहे थे, पुलिस जैसे जैसे कॉल्स आ रही थी, आई डोंट हैव द फिगर ऑफ द नंबर ऑफ कॉल्स एज ऑफ नाउ, तो उस पर जैसे जैसे पुलिस के पास इंसिडेंट्स की रिपोर्ट आ रही थी, पुलिस ने तुरंत उसके ऊपर एक्टिविटी करी है। जहाँ जहाँ पुलिस संभाल पाई, अपने पुलिस बल के साथ हमारे सभी जितने भी फोर्स थी, डीएसपीज थे, उन्होंने पूरी मुस्तैदी से वहाँ पर मोर्चा संभाला था और एडिशनल फोर्स के लिए उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट प्लेस की थी। दूसरे जिलों से भी फोर्स आई थी और इसी प्रकार से पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया गया था। आपस में कनेक्शन जिन जगहों पे सर हिंसा हुई थी, क्योंकि कई जगहों पर एक साथ हिंसा हुई थी। देखिए मैं बार बार आपसे यही तो हमारा इन्वेस्टिगेशन का एक प्रमुख जो विषय है कि ये लोग जब जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं, ये किस प्रकार से किसकी कॉल पे इकट्ठे हुए हैं और किसने इनको मोबिलाइज किया है और किस प्रकार से आपस में इंसिडेंट्स कनेक्टेड हैं, ये एक बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसके बारे में आज कमेंट कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मानते हैं ना कि कॉल किया गया, लोगों को मोबिलाइज किया गया। देखिए वो तो देखिए ऐसा है कि सोशल मीडिया के ऊपर, जैसा कि अब जो विश्लेषण में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने कॉल की, दोनों तरफ से हुई, तो ये तो जांच का विषय है ही कि कौन व्यक्ति किस तरह की कॉल से जो इमोशन, किस तरह की कॉल के ऊपर जो है व्यक्ति जो वहाँ पर इकट्ठा हुआ या वो खुद से मोटिवेटेड था, वो एक्यूज्ड के इंटेरोगेशन के दौरान ही आएगा कि वो किस प्रकार से मोटिवेट होकर वहाँ पर वो इस तरह की इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए। All right, cops of Haryana, they're trying to establish on the security forces that have been deployed and, of course, revisiting what really happened. A lot of questions raised, a lot of answers given. But even at this point, we're seeing Haryana, the state, still simmering. I'm going to slip into a short break. We'll be right back with a lot more on the angles on these communal clashes. In politics, everyone has an opinion, but I have the data. Whose stock is rising? Whose graph is falling? Track India's political stock exchange. Unmatched, unmissable data analytics. The only show on News TV where numbers do the talking. India's most credible poll tracker. The Political Stock Exchange with Rahul Kamal, only on India Today. Diet sodas, sugar-free tablets, artificial sweeteners. Do all of these give you a sense of assurance that you are staying away from sugar and that these are healthy alternatives? Well, it is not that simplistic as you think it is. Each of these artificial sources of sugar are unhealthy. Let us break this down for you. Diet soda is a go-to for people who love the taste of regular soda but can do without the sugar and calories. An average can of regular cola may contain a whopping 37 grams of sugar, and consuming too much sugar is linked to outcomes like obesity and poor heart health. So it makes sense that you may seek out a sugar-free alternative. But while drinking diet soda does help people reduce their sugar intake, this simple act can also expose a person to other ingredients that may be linked to some other health problems. The acidity in certain types of soda can lead to tooth erosion. Drinking excessive amounts of diet soda made with caramel coloring may result in teeth turning yellow. Some research suggests that artificially sweetened drinks are associated with a greater risk of obesity. If you opt for diet soda that contains caffeine, you may have trouble getting some much needed shut-eye at night. Diet soda is void of calories and sugar. Certain varieties can contain phosphorus in the form of phosphoric acid. This mineral, though important, can play a positive role in bone health, but consuming copious amounts of phosphorus can negatively impact the calcium-phosphorus ratio in your body. When the sugar increases in the blood, that means when the blood glucose increases, then it leads to many comorbidities like obesity, diabetes, fatty liver, then risk of cancer, heart attack also increases. There are mood alteration leading to irritability, then there's sleep disorder, and many more things can happen.
have come out very strongly against what has happened in the railway compartment, the cold-blooded murder of 4 people, and then what's happened in Nuh Hindu-Muslim violence. Let's get it clear. You have called the railway compartment incident a terror attack. Have you jumped the gun? Because the FIR is very clear. It says there is no communal angle. At least no communal angle is specifically mentioned in the FIR. Should one be more cautious in the times in which we live before suggesting it is a communal crime? The reason I have called it a terror attack is because this was a man who was in uniform, and he had first assassinated or murdered his superior AS officer who belonged to the tribal Meena community. Then he went into 3 different railway compartments and identified Muslims who were having beard or wearing a cap, and then shot them dead. In fact, there is a video still available wherein this man who he shot, who's cringing in pain, who's turning from right side to left side, subsequently he died. Unfortunately, he's from Hyderabad, a place called Bazar Ghat. So this man went around 3 compartments of the railways, identified Muslims with their attire or with their beard, and shot them dead. And in a video he says that is desh mein rehna hai to Yogi, Modi or Thackeray. Now, unfortunately, the government of India wanted the Twitter to remove my tweet, and unfortunately the Twitter had succumbed to the government pressure tactics, and that tweet of mine has been removed from, it cannot be seen in India. No, that is because again these are very sensitive. No, Mr. Owaisi, that's because these are very sensitive issues. You know, this is clearly a killing that needs investigation. No one doubts about it. It could well be a hate crime. You could be right that it could be a hate crime. The only point is, in the times in which we live, one has to be a little cautious. That's all I'm saying. Well, Rajdeep, whatever times we live in, we have to say the truth clearly and loudly without mincing words. I will reiterate again that it was a terror attack done by a person who was radicalized and who had become extremist because of the conducive atmosphere of radicalization and extremism that has been created by the ruling party in last 9 years. And that is why we see that this man has no fear. He's standing at a dead body with his licensed weapon. Welcome back. Now, the question here is, who's really triggered the violence in Haryana? There's blame game over riots in the Nuh region between cow vigilante Monu Manesar and the Congress MLA from the Nuh region, Maman Khan. A video has now emerged where Maman Khan, speaking months ago in the Haryana Assembly, speaks of how, or rather he openly threatens to target Monu Manesar if at all he comes anywhere close to the Mewat region. This video has now gone viral as the BJP has launched an all-out attack at the Congress, claiming that Amit Malviya of the BJP cites the video to claim proof that Congress has been behind instigating riots in the Mewat region. Remember, Haryana government has defended the cow vigilante Monu Manesar, the man who's been accused of killing 2 people, who's still absconding. Haryana government says it wasn't Monu Manesar who instigated the crowds. In fact, Monu Manesar spoke exclusively to India Today, and he says that this is a Congress MLA, Maman Khan, who sort of instigated his constituency members to attack while the procession was on. Monu has claimed that Maman has triggered the crowds and he is wholly responsible for the violence that broke out. आप बैठ जाइए, डर जा तू, जरा जी बैठो, बैठ जा, इतना बड़ा नहीं है अभी, तू बैठ जा अपना। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवासियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ?
अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। भाई डट जा रे, बच्चा बोलिए क्या होगा भी मेरा। ये किस आधार पर हथियार दे रखे हैं आप लोगों ने? क्या मुसलमानों को मारने के लिए दे रखे हैं आपने? ये जो 5 मौतें हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आपका वीडियो आया था और प्रशासन जो है उसको पता होने के बावजूद भी पुख्ता इंतजाम नहीं करे, तो क्या ये आपके भाषण को जिम्मेदार माने या प्रशासन की लापरवाही को माने? इसमें सारा जिम्मेवार वहां के मुस्लिम विधायक। कौन है ये मुस्लिम विधायक? आपने देखा होगा, उनकी न्यूज आ रही है, मामन खान है और कई विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मतलब मुस्लिमों को कह रहे हैं मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। लड़ाई लड़नी है तो जंग पे जाओ ना, यहाँ पे क्या लड़ाई लड़े हो? Now, in communal violence, it's really the poor who ultimately bear the brunt. They suffer the most, and that's what we see here in Badshahpur. As a series of shops were burnt down. One of those shop owners speaks to India Today. Really had no fault of his. He got caught in the violence. Shreya Chatterjee, India Today's correspondent, brings us more. एक बार अगर आप बताएंगे कितने बजे के आसपास की घटना है? 3 बजे। 3 बजे के आसपास। कितने लोग आए थे? 10-12 आदमी आते थे और वो मारकूट कर रहे थे। मैं तो यहाँ था नहीं, न पता 2-4 मिनट बाद उन्होंने आग लगाकर चले गए। पुलिस से कंप्लेन की आपने? यहाँ पे पुलिस भी आई थी या नहीं? पुलिस भी आई थी। आई थी। हाँ, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, लेकिन रात को मेरे को बुला के ले गए थाने को। हाँ। वहाँ पे उन्होंने जो कुछ लिखाया और अपने पास। क्या बोला आपको? कंप्लेन करेंगे, आगे कार्रवाई होगी आपकी? अल्लाह बेहतर जाना, होगी ना होगी। मुझे तो लिख के मेरा एड्रेस पैसा रख लिया, मुझे तो कुछ दिया नहीं, ना कुछ बताया। कितना सामान होगा यहाँ पे? सामान बहुत था यहाँ, कूलर भी थे, रजाई गद्दे भी थे, थान भी थे। सारे आपके सामान यहीं पे थे? हाँ, सारा सामान, मेरे कपड़े लत्ते सारे सब कुछ जल गया मेरा। कितना रुपए का सामान होगा? अरे बहुत रुपए का सामान था। मैं तो रात दिन यहीं रहता था, मेरे तो घर भी कुछ ना, मेरा तो इसमें यहाँ जो कुछ था। अरे इसमें तो 3 लाख का नुकसान है, क्या करूं बताओ। Slipping into a short break on that note, coming up on the other side as the death toll in Haryana now reaches 6. The communal riots, we hear that police deployment has been placed in abundance at this moment. So cow vigilante in the meanwhile, Monu Manesar, as he speaks to India Today, denies his role in the riots. While you have at the same time, Chautala, who is a deputy of Haryana, who blames the organizers of the yatra for not estimating the crowds that would arrive. A lot of blame game continues on who's responsible. Stay tuned, we're going to come back. Do you have a sweet tooth that you just can't help? The more you consume, the more you want. And that is how sugar gets us hooked. But for those wanting to break sugar addiction, there is hope. There are ways to do it, and there are several alternatives. First of all, let's tell you all about sugar and how much you'd actually end up consuming. Adults are to consume 5 teaspoons a day. That's how much women should consume. Men should consume 9, kids not more than 3 to 4. Let's now take a look at how much we're ending up consuming. Men and women are consuming about 22 teaspoons a day. Kids are consuming 24. Cut sugar from your diet and do yourself a favor. There are several advantages of sugar reduction. It will reduce your acid reflux. It controls irritable bowel syndrome. It reduces joint pains, brings down anxiety and fatigue, also tackles migraine. How then can you bid goodbye to sugar? Make a decision to do it now. Quit cold turkey. No added sugar in anything whatsoever. Go sugarless in your drinks. Tea and coffee without sugar. Reduce starch. Go for non-starchy vegetables like mushrooms, onions, green beans. Manage your stress. Well, if you do, your cortisol levels will be in check
hunger, cravings will be in check. Get good sleep for lesser hunger pangs and better management of cravings. Here are the foods to pick and choose from if your cravings won't leave you. Go for a piece of fruit. Berries are rich in fiber and sweet. Sugar-free gum or mint is a great way to control your sugar cravings. Yogurt is a healthy snack that is high in protein and rich in calcium. Dates are the dried fruit of the date palm tree, which are highly nutritious and very sweet. Sweet potatoes are nutritious, sweet, and very filling. If you're craving something sweet, Are you worried that artificial intelligence will render you jobless? A United Nations agency assembled a group of robots at a news conference recently to address the concerns of human beings. 9 robots posed upright along with their creator at the podium in Geneva for what the International Telecommunication Union billed as the world's first news conference featuring humanoid social robots. The agency invited reporters to ask the robots questions that sparked discussion about the future of artificial intelligence. In one of the answers that could trouble our politicians, the robots suggested that they could be more efficient government leaders. I believe that humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency and effectiveness than human leaders. We don't have the same biases or emotions that can sometimes cloud decision-making and can process large amounts of data quickly in order to make the best decisions. When asked about the rise of humanoid robots, they advised caution. That's a difficult question. I think it depends on how they are used and what purpose they serve. We should be cautious, but also excited for the potential of these technologies to improve our lives in many ways. Organizers said the event was meant to showcase not just the capabilities but also the limitations of robotics. To showcase the capabilities and how these technologies could support the UN SDGs, the Sustainable Development Goals. While robotics are not yet as mainstream as, say, generative AI, we wanted to demonstrate AI in action to you. In a world's first. This is the world's first press conference with 9, actually, we have an extra one, AI-enabled humanoid social robot. The event was part of the AI for Good Global Summit, meant to illustrate how new technology can support the UN's goals for sustainable development. Artificial intelligence has entered uncharted territory, and the world has started recognizing its abilities. Bureau Report, India Today. Oh, sorry.
You are watching India Today. Communal flashpoint at Delhi's doorstep. Amidst the flames and rioting. India Today reporters fearless on ground. एक्सक्लूसिव विजुअल कि कैसे पत्थरबाजी इस समय यहाँ चल रही है, माहौल पूरा तनावपूर्ण हो चुका है. Facts, questions and first-hand reports. The charred vehicles that lie testimony to the kind of attack. Amount of arsoning that happened is proved from the visual that you right now see. 100% accuracy amidst the blaze. Police officers are combing in the area and that is why the situation is under control. We track the face of every story. इन तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है. ग्राउंड जीरो से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं. This is the kind of situation you see on the ground in Gurugram. India Today, India United. Very good afternoon and thank you for being with us here on India Today. I'm Chaiti Narula getting you all the top stories. Let's begin this broadcast with the top headlines. Haryana FIR mentions unspeakable riot horror, says riotous mob chanted pro-Pakistani slogans, mob fired at cops, pelted stones. Death toll rises to 6 in Haryana riots case. Car vigilante Monu Manesar denies hand in Haryana riots, blames Congress MLA. Deputy Chief Minister Dushyant Chautala blames organisers for the violence. जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया. कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना हुई. Backlash of Haryana violence in Delhi and UP districts. Top court asked centre to ensure no hate speech in rallies. Orders videography of the rallies. Another shot in the arm for the centre in Parliament after BJP and YSRCP. TDP may back Modi government. TDP to back government on Delhi bill and no trust war. US charges former President Donald Trump with conspiracy to fraud the country and witness tampering in 2020 Capitol Hill riots case. Let's now take you to the top developments coming in from violence-hit Nuh. Haryana's Nuh remained gripped in tension for the third day. Curfew has been extended. Around 41 FIRs have been registered and 116 people have been arrested till now in Nuh alone. At least 5 people were killed in the violence. Nuh's violence has rocked Gurugram as well. Shops set ablaze, vehicles burned. The mob ransacked shops belonging to a particular community. At least 7 stores were set on fire. Cops conducted peace flag march. Right-wing Hindu group VHP and Bajrang Dal are staging protests against Nuh violence at various places including Delhi-Haryana border in Badshahpur. Security has been beefed up at border amidst protests. They've also planned a protest march from Manesar as situation remains fragile in Mewat. Monu Manesar, car vigilante and lynching accused, who's at the center of this violence, claims he was not present at the yatra and that the violence was stoked by Nuh's Muslim leaders, including Congress's Maman Khan. Amidst the communal flare in Nuh, Haryana Deputy Chief Minister has come out in support of people of the region, blames rally organisers for the chaos in Haryana, says they did not give proper estimation of the crowd to district administration.
Well, after Haryana's Nuh, Gurugram's Badshahpur is now on the edge. India Today has accessed the afire that blames 700-strong mob. They were chanting religious slogans. They carried out illegal weapons. Police appealed them to maintain peace, but they continued the stone pelting. They also fired upon policemen using illegal weapons. One policeman was shot in the abdomen and many were injured. They also held hostage 40 pilgrims in Ram Temple. Security has been beefed up. Prohibitory orders have been extended in several areas. 116 people have been arrested and at least 6 people were killed in the Nuh violence. Shops were burned, vehicles set ablaze by mob last night. The mob ransacked shops belonging to a particular community and at least 7 shops were set ablaze. RAF conducted flag march in Badshahpur as violence gripped the region. देखिए, अभी तक कुल 41 FIR दर्ज की गई हैं विभिन्न मामलों में और मुख्यतः 4 थानों के अंदर ये FIR दर्ज हुई हैं। एक FIR हमारी सिटी तावड़ू और बिछोर में भी दर्ज हुई है और कुल अब तक 116 लोगों की प्रीमा फेसी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके ऊपर गिरफ्तारियाँ हुई हैं और आगे हम लगातार हमारी टीमें इसमें हमने गठित की हुई हैं। STF भी हमारे साथ हैं, हमारी लोकल CIA पुलिस भी हैं और जो और IPS ऑफिसर्स यहाँ डिप्लॉयड हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉर ensuring the apprehension of these criminals involved in these activities। तो उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को और जो अभी तक की एप्रीहेंडेड लोग हैं उनकी इंटेरोगेशन डिटेल्ड में की जा रही है। 144 वाली धारा जो है वो प्रोहिबिट करती है कि 4 या 5 से व्यक्ति से अधिक जो है इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वो अभी भी लागू है। तो वो चीज़ हम इंश्योर करवाएंगे कि लोगों का एकत्रित होना जो 144 धारा जो उस चीज़ को प्रोहिबिट करती है वो चालू रहे। सर, स्कूल कॉलेज का कब खुलेंगे और इंटरनेट सेवा कब बहाल होगी? तो इंटरनेट सेवा फिलहाल 3 दिन के लिए जो है बंद की गई थी 31 तारीख से, तो कल उसकी भी समीक्षा करके अगर उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव रही तो उसको भी जो है हम वापस लेने के ऑर्डर्स करवाएंगे। स्कूल कॉलेज खुलने का भी समीक्षा जो है कल या परसों की जाएगी। इस हफ्ते तो बंद ही रहेंगे, प्रॉब्ली फ्राइडे को या सैटरडे को इस पर कॉल ली जाएगी ताकि अगले हफ्ते में इसको सुचारू रूप से खोल सकें। नूह में 41 FIR है, उसमें 116 आदमी पकड़े गए हैं। इसके अलावा नूह में अभी 90 आदमी और भी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है और जो संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुड़गांव पुलिस पर पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 15 FIR रजिस्टर्ड करी गई हैं। ऐसे सभी दोषियों के खिलाफ जो अलग अलग ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में आगजनी के अंदर जो संलिप्त पाए गए हैं। इसके अंदर जो अभी तक 8 एक्यूज्ड को अरेस्ट करा गया है और 30 ऐसे जो लोग हैं व्यक्ति विशेष हैं जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करी गई है। Congress and INLD targeting the BJP government in Haryana over the Nuh violence, alleging that the ruling combination has failed on the law and order situation. Listen in to all the political reactions that are trickling in at the moment. पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। जो दोषी लोग थे उनको पकड़ा जा रहा है, उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं। जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई हैं, ये अकस्मात हुआ नज़र नहीं आता। वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहता है। कि मेवात का जो इतिहास रहा है, ये इतिहास हमेशा प्रो इंडिपेंडेंस हो, प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, हमेशा इस देश की अखंडता और एकता के साथ रहा। और आज नहीं, जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था तो भी मेवात के लोगों ने उस समय के शासकों के साथ खड़ा होकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई में काम किया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी
जब देश भर से पलायन चल रहा था तो महात्मा गांधी जी के आग्रह पे सब लोगों ने रुककर इस देश को और मजबूती से कैसे बढ़ाया जाए योगदान दिया है। जिस व्यक्ति की अगर सोच इस तरह की है तो सोच का कुछ नहीं किया जा सकता। असले आए हैं, दोनों समुदाय के पास असले अगर थे, जिस तरह से हम वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, तो ये इंक्वायरी की बात है कि इनके पास असले क्यों आए और क्यों इन्होंने इस तरह का वातावरण पैदा किया। वो इंक्वायरी बताएगी कि कौन दोषी है। तो कानून व्यवस्था हरियाणा सरकार का एक जिम्मा है और इंक्वायरी हरियाणा सरकार करवाएगी। उसी के बाद पता चलेगा कि कौन कौन इसके अंदर किस तौर के ऊपर लापरवाह थे और किस तौर पे कौन कौन लोग दोषी थे। दुर्भाग्यपूर्ण है, शांति से निकल रहे एक धार्मिक जुलूस पर जिस तरह से हमला होता है, पथराव होता है, गोलियां चलाई जाती है, लेकिन ये केवल नूह में नहीं होता। इस तरह की कितनी घटनाएं राजस्थान में होती है। आपने देखा होगा करौली में भगवान राम के रामनवमी के जुलूस पर किस तरह से सुनियोजित रूप से हमला हुआ। हमले के बाद हमलावरों ने पत्थर फेंके, कई गाड़ियां भर करके पत्थर ऊपर छतों पर रखे हुए थे। उनको कौन संरक्षण दे रहा था? किसके दबाव में पुलिस मौन और चुप थी? हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो उनके आंखों के सामने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से 100 किलोमीटर भी नहीं है, उसके अंदर है। वहां पर इतनी गड़बड़ी चल रही है, लोगों को जाके मार रहे हैं। ये कहाँ का रोल है? अरे दिल्ली से नजदीक राज्य में भी ऐसा होता है तो वो कोई उसका संज्ञान भी नहीं लेते। और ये दूर की बात तो अलग है। हरियाणा भी अब मणिपुर की तरह बदल रहा है। क्यों हरियाणा के अंदर ये वायलेंस हुई? ये जो वायलेंस सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था मेंटेन। आपको पता है पिछली फसल में उसमें सिर्फ ये सुविधा थी कि कोई किसान उसकी फसल का नुकसान हो जाए तो वो उस पर क्लेम भरता था। और पिछली फसल का सारा क्लेम वैसे इस वर्ष भी हुआ, सैकड़ों करोड़ रुपए। Haryana continues to remain on the edge, and Manohar Lal Khattar is about to address a press conference to answer a few very critical questions after Gurugram's Badshahpur is also now on the edge. We have also accessed the FIR that is blaming 700 strong mobs that were chanting religious slogans, carrying out illegal weapons, and many questions that the government in Haryana needs to answer on the back of this failing law and order situation in the state of Haryana by the BJP-led government. In fact, Home Minister Amit Shah has also spoken to Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar, and he is about to speak to the press, answer some very, very critical questions on this. Security has been beefed up. There are lots of prohibitory orders in several different areas across Haryana. In fact, till now, 116 arrests have been made. 6 have been killed in nerve violence alone. In fact, we're getting you more details as to how one police officer was shot in the abdomen. Many were injured. They were also held hostage. 40 pilgrims in Ram temple were held hostage too. Listen in to Manohar Lal Khattar. किसानों के लिए बनाया गया था कि उनका जो किसी भी नेचुरल कैलामिटी के कारण से जो नुकसान होता है, फसल का नुकसान उसमें रजिस्टर करते थे। बाद में ध्यान में आया कि आखिर फसल के अलावा भी नगरों में कुछ व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, कोई उनके औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कोई मकानों में भी इस प्रकार का नुकसान होता है। चलो कैलामिटी के कारण से जो नुकसान होता है फसल का नुकसान उसमें रजिस्टर करते थे। बाद में ध्यान में आया कि आखिर फसल के अलावा भी नगरों में कुछ व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, कोई उनके औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कोई मकानों में भी इस प्रकार का नुकसान होता है। तो ऐसे सब लॉस भी मूवेबल इमूवेबल सब प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस भी इसमें अगर एंटर होगा तो उसका फिर असेसमेंट के भी तौर तरीके हैं। कुछ हमने जो ये होती है इंश्योरेंस की सर्विस उनके माध्यम से कराएंगे और कुछ असेसमेंट डीसी की कमेटीज़ जो हैं वो करेंगी। तो दोनों असेसमेंट के आधार के ऊपर उनको मुआवजे की कुछ राशि, उसका एक परसेंटेज वो हम कुछ तो डिक्लेयर पहले से है, कुछ आज डिक्लेयर करेंगे, उसमें से वो राहत उनको दी जाएगी। और अब बाद में आज ही जो एक विचार हमारा बना है कि जो नूह में
जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियाँ फूकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज़ बचती नहीं है। अन्यथा बहुत लोग बाद में शिकायत करते हैं कि फलां का तो जो है असेसमेंट हो गया, मेरा रह गया। इसलिए हमने ओपनली सबको कहा कि आपका जो लॉस हुआ आप अपना दर्ज करें और बाद में फिर उसकी असेसमेंट का काम डिप्टी कमिश्नर और जो बाकी एजेंसीज हैं उसके माध्यम से कराया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसका असेसमेंट करके लोगों को राहत पहुंचा सकें। इसलिए ये पोर्टल जो है इसका एक्सटेंशन किया गया। पोर्टल तो पहले से बना ही हुआ है क्षतिपूर्ति, लेकिन उसको एक्सटेंडेड वे में उसका जो ऑपरेशनल जो उसका दायरा है वो बढ़ाया है। तो ये इसके बाद मैं समझता हूँ कि एक बार प्रेजेंटेशन देखेंगे तो कोई प्रश्न होगा तो उसमें करेंगे। धन्यवाद सर। प्रेजेंटेशन के बाद दिखा दें या पोर्टल ही दिखा दें। तो ये तो पुराना स्वरूप है, आपको याद है, पहला ये लैंडिंग पेज है उसका पोर्टल का। इसमें जब व्यक्ति अपनी बीबीपी आईडी भर देगा तो तत्क्षण उस परिवार के जो सदस्य हैं उन सबके नाम आ जाते हैं और फिर जिसके भी फ़ोन नंबर से वो OTP मंगवाना चाहें वो OTP भर के उसके बाद ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा नया स्वरूप है या एक्सपेंडेड वर्जन है ई क्षतिपूर्ति का, वो अभी इसके बाद आपके सामने आ जाएगा। तो कारण चुनना है कि आपका नुकसान क्यों हुआ, आग से, बाढ़ से, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहर, भूकंप, भूस्खलन, सामूहिक हिंसा, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी एक पर्टिकुलर रेफरेंस किया। तो कोई भी कारण चुन ले, मान लीजिए बाढ़ ही चुन लिया, तो क्षति का प्रकार बताएं कि आप पशु या पक्षी की मृत्यु या आवास की हानि या फसल खराब हुआ या व्यावसायिक हानि। तो जो भी आप चुन लें, मान लीजिए पशु पक्षी की मृत्यु चुन लिया, तो फिर इसमें आपने भरना है कि किस प्रकार के पशु की मृत्यु हुई है, क्योंकि सबके लिए कॉम्पनसेशन नॉर्म्स अलग है। और फिर ये भरना है कि कितने होंगे, बस आगे दिखा दीजिए, कुछ भी एक चुन के बस समाप्त करते हैं इसको। ये किस डेट को हानि हुई, फोटो अगर है तो फोटो अपलोड करेगा और ये कहेगा कि मैं सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा भरी गई जानकारी सही है। वो एक पटवा दिखाना था नीचे, इसको आप अगर ध्यान से देखें, हाँ फोटो है तो अपलोड करें, आवश्यक नहीं है। अब आप ये देखिए, जैसे ही ये सत्यापित कर दिया कि ये जानकारी सही है, व्यक्ति का काम खत्म। ना पटवारी ढूंढना, ना कानून को ढूंढना, ना डीसी को ढूंढना। जैसे सीएम साहब ने कहा जो असेसमेंट कमेटियां बनी, एनिमल हस्बेंड्री कौन, वो सब कंप्यूटर अपने आप पोर्टल पे जाएगा, सबके पासवर्ड है, वो क्लेम को उनको मैसेज आएगा, एक क्लेम आ गया, तो उसको देख के वेरीफाई करना, भरना। और फिर जैसे सर ने कहा जो कुछ नए आंकड़े दिए, जैसे अभी व्यावसायिक हानि का आपको भी नहीं मालूम है, तो वो भी मुख्यमंत्री जी नए सिरे से वो हरियाणा सरकार के राज्य के पैसे से जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के नॉर्म्स हैं वो सिर्फ रूरल एरियाज के लिए और एक कैप है, लेकिन उसको बढ़ा के अर्बन एरियाज को भी लागू करेंगे, स्टेट के बजट से करेंगे, वो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। धन्यवाद। ठीक है जी, ये प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देते हैं। और मित्रों, जैसा ये क्षतिपूर्ति का विषय है, पहला जैसे मैंने बताया किसानों वाले से हम शुरू करते हैं। तो जो हमने पोर्टल जिस दिन शुरू किया था उस दिन, क्योंकि उस दिन से वो भरने लग गए थे, तो 1 महीने का समय उस समय दिया गया था। तो वो 18 अगस्त तक अपनी जो भी क्लेम हैं, किसान की जो फसल खराब हुई बाढ़ के कारण से, वो उसमें भर पाएंगे और उसके बाद फिर उसका असेसमेंट करके उनको पैसा दिया जाएगा। जो बाकी सब है, वैसे तो 3 दिन से 4 दिन से इसकी जानकारी हमने लोगों को दे दी थी, तो बहुत से क्लेम इसमें बिना लॉन्च किए भी भरे जा चुके हैं, लेकिन आज इसको विधिवत लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें कोई समय हमने रखना है कोई, तो जो वो वाला है सर, फसल वाला, वो तो आपने 18 अगस्त कर दिया। हाँ, तो वही समय रहने देते हैं। हाँ ठीक है, तो 18 में भी आज अभी समय पर्याप्त है। और मैं समझता हूँ कि जो इस समय तक घटनाक्रम है उसके लॉस की जानकारी सबको अपनी है ही, और वो इसमें 18 अगस्त ही इसकी डेट हम रखते हैं, ताकि आज 2 तारीख है तो 16 दिन का समय और मिल जाएगा। फिर इसके बाद उनका सबका आकलन करके उनको दे दिया जाएगा। इसके बाद
जो हमने इसकी हर्जाने की राशि तय की है उसकी एक परसेंटेज जो हमने आपके माध्यम से लोगों को जो बतानी है उसमें दो प्रकार का है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी मकान यानी बिल्डिंग को छोड़ करके बाकी लगभग सारी इमूवेबल रहती है, मूवेबल रहती है। मकान है वो इमूवेबल है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का जहाँ तक विषय है उसमें यदि 5 लाख रुपए तक किसी का लॉस है, असेस्ड लॉस, उसका 80% अर्थात 4 लाख रुपया तक उनको दिया जाएगा। जितना लॉस होगा उसका 80%। 5 से 10 लाख तक 70%, 10 लाख से 20 लाख तक 60%, 20 लाख से 50 लाख तक 40% जो एडिशनल है उसका ये जाता जाएगा। और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक 30%, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक 20%, और ये सब मान लो 1.5 करोड़ तक भी हो जाता है, इससे ऊपर भी होता है। तो एक अपर कैप लगाइए कि टोटल 50 लाख तक और ये कंपनसेशन जो है इस लॉस का मिलेगा। इससे ऊपर मैं मान के चलता हूँ जो इससे बड़े जो भी लोग होते हैं सामान्यतया सब लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं। ये तो उस इवेंचुअलिटी में है जिसने इंश्योरेंस ही नहीं कराया है, ताकि ऐसे समय पर उनको भी एक मरहम जो है वो लग सके। तो यानी 1 रुपये से लेकर 50 लाख तक का लॉस इस परसेंटेज के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ तक के नुकसान के लोगों को ये लाभ उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। 1.5 करोड़ से ऊपर का है तो 50 लाख उसकी फिक्स राशि है। ये तो है मूवेबल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर कोई मानो व्हीकल है, उसका स्टॉक है, उसकी मशीनरी है, प्लांट है, तो ये सारे इस प्रकार के विषय हैं इसमें कवर होंगे। और जो बिल्डिंग्स हैं अर्थात जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें पहले से हमारी योजना चल रही है और उसी के अंतर्गत अगर 1 लाख तक का है तो वो कंप्लीट 100% देंगे, 1 से 2 लाख 75%, 2 से 3 लाख 60%, 3 से 5 लाख 50%, 5 से 7 लाख 40% और 7 से 25 लाख तक 30%। और इसको भी कैप किया है 25 लाख पर कि मैक्सिमम किसी बिल्डिंग का अगर कोई लॉस होता है, मानो उसमें क्रैक आया है, उसमें कोई फर्श टूट गया, उसमें दीवार गिर गई, उसमें टोटल भी गिर गई, तो भी मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का उसका लॉस ये हमने इसमें कवर किया है। अर्बन एरियाज की, हाँ ये अर्बन एरियाज़ की थी। ये जो सारा है ये अर्बन एरियाज़ का है। जो ग्रामीण क्षेत्र का है वो हमारा जो डिज़ास्टर फंड है उसकी स्कीम वो अलग से है। उसकी स्कीम है, कोई बताएंगे? जी है, हाँ वो बता दें, वो भी आपको बता देते हैं। उसमें जैसे पशुवार या घर के कच्चा के पक्का वो अपर सीलिंग से एक्शन में होता है। हाँ उसका शायद 1,20,000 रुपया मकान का हाउस का। लेकिन उसमें भी जो है मुझे लगता है थोड़ा राशि कम है और हम उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके आपको बताएंगे। ग्रामीण क्षेत्र वाला जो है उसकी राशि आपको बताएंगे जो पहले से तय है। लेकिन वो मैंने एक बार देखा है उसमें कुछ मुझे कम लगी। हाँ जो घर का है फुल्ली डैमेज्ड हाउस 1,20,000 पर हाउस, और अगर पार्शियली डैमेज्ड हाउस है जहाँ पे कम से कम 15% नुकसान हुआ है तो 10,000 रुपये प्रति घर पक्के घर के लिए, और झोपड़ी के केस में 8,000 रुपये प्रति घर प्रति झोपड़ी, और कैटल शेड 3,000 प्रति शेड। इसका विचार करेंगे, दोबारा से इसकी घोषणा हम करेंगे। हाँ ये कई साल पुराना है उस पर। हाँ 18 का शायद, कब का है? ये बाढ़ आने से पहले जो हमारा इस साल का रिवीजन भारत सरकार ने किया था वो। लेकिन एक बात ये है कि जो भारत सरकार की कंपनसेशन नॉर्म्स होते हैं अगर आप फसलों में देखेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा हम देते हैं अपने टैक्स से। तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इससे भी ऊपर स्टेट बजट से ले नहीं सर ने स्पष्ट किया कि इंश्योरेंस के उससे बाहर जिसका इंश्योरेंस किन्हीं कारणों से नहीं कराया गया। इसी प्रकार जैसे अब थोड़ा कंपनसेशन के ही विषय हैं एक दो जो पहले कुछ दिन पहले विचार आया था लेकिन वो घोषणा नहीं कर पाया था मैं।
जो कावड़िए जो हैं जिनका भी शिवरात्रि शायद 18 या 20 तारीख को थी जुलाई में जी, उससे पहले कुछ कावड़ियाज की डेथ हुई है एक्सीडेंट में, जो भी कुछ कारण रहे। पिछले बार भी हमने दिया था उसी पैटर्न पर, जैसे पिछले साल किया था उसी हिसाब से 2 लाख रुपया प्रति कावड़िए जो उसकी डेथ हुई, जो हरियाणा का रहने वाला है, ऐसे व्यक्तियों को 2 लाख, 24 लोगों की अभी तक हमारे पास जानकारी है, 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति प्रति कावड़िया, वो उसको कंपनसेशन हमने पिछले साल का जो तय किया हुआ है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से एक कंसेशन और मैं आज घोषणा कर रहा हूँ, वो है हमारा जो HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसे पिछले दिनों में बिजली के बिलों का एक विषय आया था, बिजली के पानी का, बिजली नहीं पानी का, तो 5% प्रति वर्ष के हिसाब से उन्हें पिछले 5 साल का 25% बढ़ा के बिल दे दिए थे। विचार करने के बाद ध्यान में आया कि ये गलती वास्तव में डिपार्टमेंट की है। उस समय 5% बढ़ाने का एक सर्कुलर निकाला, लेकिन उसकी डिमांड नोट कभी भेजा नहीं गया। हमने सारे रिकॉर्ड देख लिए हैं, वो फाइल में केवल बढ़ा करके छोड़ दिया, और अब आकर 5 साल का इकट्ठा डिमांड नोट भेजा। बहुत लोगों ने कहा कि आखिर एक साथ ऐसे 25% का रेट बढ़ाना उचित नहीं है, तो बहुत सुझाव आए अलग अलग, लेकिन अंतोगत तो हमने फैसला किया कि ये 5% की बढ़ोतरी जो 2018 में की थी, 18 से 23 तक, अब तक सारी फ्री कर देंगे हम। केवल अब से वो 5% आगे लागू होगी, पिछला 25% जो है उस बिल का वो सारा जो है वेव ऑफ कर दिया है। लगभग 42 करोड़ रुपए का इसमें HSV के ऊपर एक अलग से प्रावधान किया गया है उसमें। ये सब तो जो हमने compensation के नाते से। All right, that was Manohar Lal Khattar. You heard him right there on Haryana being on the edge and addressing a press conference on that front. We're stepping into a very short commercial break. Lots more coming up on the other side. Stay with us. You are watching India Today. India Today is at ground zero in Torbang, and the situation is so vulnerable. Simultaneously, there is accusation of using sophisticated weapons, but these young boys risking their lives and using these single barrel gun and double barrel gun. We love our land and our village, that's why we sacrifice our life. No one could ever imagine that in a state, in the same country, in the same district, we will ever see such situation which has become a battlefield, and I could say this is a war zone in Manipur. Grounded in journalism, on the ground reporting, only on India Today TV. North of China is witnessing the wrath of the rain gods. Fierce rain and flooding that have pummeled Beijing since the weekend have killed at least 11 people and several are still missing. Major flooding has forced the evacuation of tens of thousands of people. The torrential rains have caused havoc in the city, with rivers overflowing and submerging various areas. इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। आगे के लिए कुछ चीज़ें हमने जो और तय की हैं, उसमें एक ये तय किया है कि एक IRB की बटालियन नूह जिले में ही स्थापित की जाएगी। जो अभी 2 बटालियन भौंडसी में है, उसमें से एक बटालियन नूह जिले में जगह हमने देख ली है, लेकिन वो जगह बनने में थोड़ा समय लगेगा। उससे पहले किसी टेम्परेरी भवन में एक बटालियन में कितने लोग होंगे? 1000 लोग लगभग। तो 1000 लोगों की व्यवस्था वहाँ उसी ज़िले में कहीं ना कहीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी उसका मानो उपयोग करना हो तो उपयोग किया जा सके। हमने एक पुलिस में एनफोर्समेंट ब्यूरो अलग से बनाया है। उसके लिए 5-6 विभागों में, खास करके जिनमें टैक्सेशन की चोरी होती है, जहाँ कहीं थोड़ा इस प्रकार के विषय जो
जो लोगों के नाते भी, सरकार के नाते भी अनपॉपुलर हैं या जो एक किसी न किसी नुकसान को पैदा कर सकते हैं, इन चीज़ों को चेक करने के लिए पुलिस का एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग से सारा होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा। लेकिन एक इस प्रकार के जैसे माइनिंग है, जैसे एक्साइज टैक्सेशन है, जैसे पावर है, जैसे इरिगेशन है, तो इस प्रकार से 5-6 डिपार्टमेंट पहले विचार किए थे। लेकिन नूह जिले में जो ये काऊ प्रोटेक्शन एक बड़ा विषय है, वहाँ स्मगलिंग होती है, वहाँ गौ हत्या भी होती है। तो हम उस ज़िले में एनफोर्समेंट जो हमारा ब्यूरो है उसको काऊ ये जो सिक्योरिटी का जो काम है ये भी उनके माध्यम से कराएंगे और 100 जवान अलग से उस व्यवस्था के लिए वहाँ रखे जाएंगे ताकि ये समस्या भी आगे ना आए। और मैं तो खास करके ऐसे मुस्लिम भाई, जो बहुत लोग मुसलमान भी हैं जो यानी गोरक्षा के हित में भी बोलते हैं, काम करते हैं, उनका कोई उसमें विरोध नहीं है बल्कि सहयोग भी करते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच खुल करके उसमें इस मूवमेंट में साथ देता है। तो मैं तो ऐसे मुस्लिम नौजवानों को भी प्रोत्साहन के नाते से अलग से योजना बना करके भी उनको प्रोत्साहन देंगे कि मुस्लिम लोग भी अगर गोरक्षा में आगे आते हैं ताकि वहाँ किसी प्रकार का आपसी भाईचारा ये न बिगड़े, हमेशा हमेशा के लिए इन चीज़ों को हम ठीक कर सकें, तो इसका भी एक अलग से हम योजना बनाएंगे। मोटे रूप से आज के इस संदर्भ में विषय इतने ही मुझे आपके सामने रखने थे। कोई बात आपको लगती है तो ज़रूर इसमें पूछें। एक मेरा निवेदन जैसे जनता से रहता है कि सब लोग शांति कायम करने के लिए वो सहयोग करें, आगे आएँ, वैसे मीडिया से भी मैं अपील करूँगा कि हम जो भी विषय बातचीत करें, चाहे प्रिंट में चाहे इलेक्ट्रॉनिक में, उसमें कैसे हम शांति कायम करने में सहयोगी हो सकते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं अपने हाथ में, स्वतंत्रता के नाते से हम प्रोवोकेटिव भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक सारी चीज़ें स्पष्ट ना हो जाएं तब तक इन चीज़ों से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। क्योंकि मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत समस्याओं को हमारा खास करके सोशल मीडिया, इसके कारण से भी आकार उसका बढ़ता है। तो मैं उन सोशल मीडिया के भी बंधुओं से, चाहे यूट्यूबर्स हैं, चाहे सोशल मीडिया में इंडिविजुअल भी लोग करते हैं, कहीं ट्वीट करते हैं, कहीं बाकी करते हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें संयम ज़रूर बरतना चाहिए। ये भी अपील आपके माध्यम से मैं करूँगा। एक एक करके पहले एक एक करके। हाँ, हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। एक एक करके हाँ, रुकिए हाँ, एक एक करके। सामाजिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा कह सकते हैं प्रशासन का अंग होता है। ये सामाजिक सुरक्षा शांति बढ़ाने के लिए तो आपने वहाँ पर फोर्स भेज दी, आपने जैसा जान लीजिए बड़ी संख्या में आप फोर्स भेजी गई, लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा है उसके लिए सरकार क्या कर रही है वहाँ पर? क्योंकि जो लोग मारे गए वहाँ से ऐसी भी सूचना आ रही है जो वहाँ पे हिंदू रहते हैं वो भी वहाँ से पलायन कर रहे हैं, वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं डर के कारण से। क्योंकि जिस सुनियोजित तरीके से वहाँ पर हमला किया गया, एक शांतिपूर्ण जलाभिषेक जो कार्यकर्ता करने जा रहे थे या जो लोग श्रद्धालु करने जा रहे थे उनको बाकायदे घेर करके जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उसे एक व्यापक कह सकते हैं डर का माहौल है उस पूरे एरिया में। तो एक तो सवाल ये है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए की भावना को डेवलप के लिए आप क्या करेंगे, और दूसरा ये कि जो मुआवजे की अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई वहाँ पर, क्योंकि मुआवजे क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है बाढ़ आ जाता है, एक दिन के अंदर मुआवजा मिल जाता है, घोषणा कर दी जाती है, लेकिन जितना नुकसान हुआ है, 3 गाड़ियों का नुकसान हुआ है, कितना मुआवजा किया जाएगा, उन 6 लोगों को मुआवजा कितना दिया जाएगा,
इसकी अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। और दूसरा ये है कि मामन खान विधानसभा में सारे प्रश्न आप नहीं करोगे तो प्रश्न रह जाएंगे। मैं क्या करूं? एक देखिए, मैंने आपको पहले अपील की, मैंने आपको एक अपील पहले की कि हम विषयों को भी उसी ढंग से हाईलाइट करें ताकि समाज में कोई ऐसा विषय ना जाए जिसमें कोई बहसबाजी और बहुत बड़ा, आप कुछ भी पूछेंगे मैं उत्तर वही दूंगा जिसमें से समाज में एक शांति बनी रहे, आपसी जो विवाद की बातें हैं वो ज़्यादा न उभरें। इसलिए आप थोड़ा सा शांति करें, एक प्रश्न का उत्तर देंगे, चिंता मत करो। पहली बात आपने सुनिए, बैठ जाओ। पहली बात आपने कही है, अब सारा विषय सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए देखिए, अरे सुरक्षा सद्भाव दोनों बातें हैं। सुरक्षा में सद्भाव में से ही सुरक्षा निकलती है। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे, उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये एक तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई, अरे भाई, कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता जरूरी थोड़ी होता है। ये अलग अलग हर किसी का होता है, कोई बताएगा और कोई करेगा। आप धीरे धीरे चीजें देखेंगे, आपके सामने आएंगी। कल क्या होगा, आज चीजें प्रोसेस में हैं। प्रोसेस हमेशा कल्प्रिट जो है, दोषी जो है, उसको सबक सिखाने के लिए जो करना होता है वो करेंगे, लेकिन हम किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ। एक करके आपके जो विधायक हैं सत्यप्रकाश राव, उन्होंने आज कहा कि इसकी पटकथा तो विधानसभा में ही लिखी जा चुकी है। कांग्रेस के विधायक मामन खान, उन्होंने ओपनली चैलेंज किया था वहाँ विधानसभा के अंदर कि हम अब की बार जब होगा तो हम देख लेंगे। तो अब की बार उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं सत्यप्रकाश राव ने, कहा कि मामन खान ने पूरी पटकथा लिखी है और उन्होंने जो विधानसभा के अंदर लफ्ज बोले थे कि प्याज की तरह फोड़ देंगे, उसके बाद जब दंगे हो गए तो सोशल मीडिया पर जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा कि प्याज की तरह फोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं वो आपस में मिले हुए हैं। ये आपके खुद के पार्टी के विधायक सब नहीं, मेरी पार्टी के विधायक मामन खान नहीं है, जरावता है। देखिए, सब बातें ध्यान में हैं। सारी प्रोसेस जो हमने चलाई है उस प्रोसेस के अंतर्गत जिन की जो गलती है उनको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। इस समय किसी भी बात का इससे ज्यादा खुलासा करना ठीक नहीं है। Why is that your government has been unable to arrest Monu Manesar, who has emerged as the key villain in this entire episode? One, why is that? And second thing, you have said people from outside had also entered Nuh, who are also responsible for this arson, for this fighting. What are your thoughts? What is the investigation so far? Where is the investigation so far reached? Writers, they are from outside which part of the country? And you said there is a larger conspiracy you were looking at. So these conspirators were within the state or outside the state? देखिए, जहाँ तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए, मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए।
अब वो चूँकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है, कोई इनपुट्स हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। जहाँ तक दूसरा विषय आपका है आउटसाइडर्स का, चूँकि अब लगातार जितने सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चली हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारा जो साइबर डिपार्टमेंट है उसमें लगा है, जो वहाँ पर जो डंप मिला है टेलीफोन कॉल्स का, वो हमारे जो टावर्स होते हैं उससे मिलता है, उसके साथ उनके लिंक बनाए जा रहे हैं। अब लिंक बनाने के बाद ही पता लगेगा किसने किसको कितनी बार कॉल्स किए, उतना ही पता लगता है उस डिटेल कॉल में, इससे ज़्यादा पता नहीं लगता। लेकिन उसमें से इन्फ्लुएंसेस को निकलते हैं, वो इन्फ्लुएंसेस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसेस, और लगातार वहाँ जो सीसीटीवी कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको सबको ले लिया गया है, उसका एनालिसिस चल रहा है। इसी में से जो 116 लोग पकड़े हैं वो इन्हीं में से पकड़े हैं। 90 लोग जो डिटेन किए हैं वो उसी कारण से डिटेन किए हैं। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, इसका लगातार जो पुलिस फोर्सेज या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वो वहाँ हैं वो कोई हटी नहीं है, कर्फ्यू वहाँ लगा हुआ है और हम किसी प्रकार की कोई ढिलाई बरतेंगे नहीं। और इसमें चूँकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन से पहले कोई बात कह देना कई बार इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित करता है। इसलिए जो हमारा एक स्टैंड है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो हर हालत में उसको मेंटेन किया जाएगा। हाँ, एक मिनट प्लीज ऐसा ये इट्स नॉट सब्जी मार्केट। हाँ, क्या किसने कहा? ऐसा नहीं है। जो डिप्टी कमिश्नर और वहाँ चूँकि वहाँ के जो एसपी जो सुप्रीम पुलिस थे वो छुट्टी गए हुए थे, 10-12 दिन पहले विदेश के उनका कोई कार्यक्रम था, वो गए हुए थे और कोई इस तरह की उस समय की संभावना भी नहीं थी। लेकिन जब ये जानकारी यात्रा की मिली है तो डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं दोनों ही तरह की जो हमारी उनकी जानकारी उन्होंने हमें बताया है, दोनों ही पक्षों से एक दिन पहले तक उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उनको आश्वस्त किया गया कि भी शांतिपूर्वक निकलेगा, किसी प्रकार का कोई तनाव ऐसी बात नहीं होगी। लगातार उनका उसके ऊपर ध्यान था। लेकिन सडनली ये जो सारी चीज़ें चली हैं इसके बारे में सारी प्रोसेस में से जो जानकारियाँ मिलेंगी और जो जानकारी मिलेगी जिसके खिलाफ भी कोई इस साजिश को करने का कोई सूत्र मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लास्ट इस लाइन में लास्ट। हाँ, उनकी योजना जो हमारी सरकारी कर्मचारियों की योजना होती है उसमें 57 लाख रुपए का मुआवजा उसको मिलने के लिए पुलिस ने घोषित कर दिया है, वो उनको मिल जाएगा। चलिए कौन बोल रहे हैं? आपने कहा कि सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया था, ऊपर पत्थर भी रखे गए थे, मतलब कुछ दिन पहले या फिर उससे पहले उस दिन से ही पहले ये काम किया गया था, प्लानिंग की गई थी। तो खुफिया विभाग क्या कर रहा था? क्या सरकार के पास किसी तरीके की जानकारी आई नहीं थी? और अगर आई थी तो क्या कार्रवाई नहीं हुई? मेरा कहना है कि ये सारी बातें एक बार सारी जांच हो जाए, उस प्रोसेस के बाद ही सारी बातें बताना ठीक है। आज इस समय कोई भी बात बोलना, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना होगा। हमें चीज़ों की तहकीकात में जाने दीजिए, जाएंगे उसके बाद सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। एक मानेसर की जो वीडियो थी, मैं जाऊंगा ये होगा जो सोशल मीडिया पे थी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए भी प्रशासन आश्वस्त रहा कि कुछ नहीं हुआ। कुछ ना कुछ बड़े लोग रहते हैं, इंटेलिजेंस होती है, क्या इस एंगल पे भी जांच करेंगे? क्या फेलियर रहा? देखिए, जब चीज़ें चली हैं और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हो गई है, इसमें से नहीं कुछ होगा। और अगली सत्य बात ये भी है कि उस दिन किसी जगह पर कोई सोनू मानेसर के प्रेजेंस का या उसके आने का कहीं कोई विषय नहीं है। जब नहीं है तो अफवाहें और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन अफवाहों के कारण से जो वातावरण खराब होता है वो इसी प्रकार से होता है। हमारा अपील है, अभी भी अफवाहें बहुत चलेंगी, उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, उसमें जो चीज़ें सत्य होंगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक एक करके भाई, एक करके। वीडियोस आए हैं जो 2 दिन से आ रहे हैं, उसमें जो पथराव हुआ, जो कम उम्र के लड़कों का उपयोग किया गया है, अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो ये मतलब अगर देखा ये जानबूझ के लाया गया था कि ज्यादा पथराव करके इस पर भी कोई जांच सरकार करेगी?
हर पहलू पर जांच होगी और अगर कानून के नाते से जो जिसके खिलाफ कार्रवाई बनेगी वो जरूर की जाएगी, उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अब लास्ट एक ये हाँ ब्लैक शर्ट। सर गुरुग्राम में एमपी राहुल ने कहा है कि यात्रा वाले ही हथियार लेकर गए, ये उनका बयान है। देखिए उनका बयान किस आधार पर उन्होंने दिया है, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और अगर उनके पास कोई जानकारी होगी मैं उनसे बात करूंगा। रवि आपने बात की इस मामले में, आप कह रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखें, जो विपक्ष के नेता है या तमाम जो राजनीतिक दलों के साथ कोई बैठक करेंगे, क्योंकि एक राजनीतिक दल तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार की साजिश है, इसको कामयाब ना होने देंगे। इनेलो के नेता का छोटा का ये बयान है, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या अन्य जो नेता है वो शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन आप कोई सभी दलों की बैठक बुलाकर तो इस मामले में चर्चा करें। देखिए मेरा कहना है कि इस प्रकार के जो विषय होते हैं कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ करके इन चीज़ों का समाधान करना चाहिए। अब चूंकि चीज़ें सारी बहुत शांति की तरफ बढ़ रही हैं आगे, और शांति की तरफ बढ़ जाती हैं, स्थिति ठीक होती है, तो हम स्वाभाविक है अभी कुछ दिन बाद सेशन हमारा होगा, उसमें मिलने ही वाले हैं, और जो सुझाव कहीं से भी आएंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे। सरकार का काम होता है सभी के सुझाव लेकर के काम करना चाहिए। हाँ करें, हाँ जी सख्त संदेश की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा साहब भी बात कर रहे हैं, अनिल साहब की भी सख्त कार्रवाई करेंगे, तो क्या राष्ट्र को लगाने की तैयारी है जिन्होंने इतना उपद्रव मचाया पूरी तौर पर? जो कुछ करेंगे घोषणा करके नहीं करेंगे, करके तब बताएंगे। सर ऐसा है कि ये ऐसा भी आ रहा है कि पिछले कुछ टाइम पहले 5 गाँव में छापे मारे थे काफी बड़े, और उसी की बदला लेने की भावना से वहाँ के लड़कों ने या समाज ने ये कदम उठाया, पुलिस को भी निशाना बनाया और साइबर थाने को स्पेशल बनाया, तो इसके ऊपर आपने मैसेज मांगे कि बहुत बटालियन भी लगा रहे हैं, तो क्या डर खत्म हो गया था लोगों का? देखिए वो एरिया पुन्हाना का एरिया है, 14 गांव में हमने छापे लगाए थे, और आज भी ठीक संख्या में याद नहीं, लेकिन 100 के आसपास लोग अभी भी उसमें अंदर हैं, और ये नूह का एरिया एकदम अलग एरिया है। अब जब सारी तहकीकात होगी तो वो जो लड़के वहाँ पर ऑपरेशन कर रहे थे या जिस प्रकार का साइबर क्राइम कर रहे थे वो कितने इसके अंदर शामिल होते हैं वो जानकारियाँ सारी मिलेंगी, लेकिन इस समय एकदम ये कहना और लिंक जोड़ना मैं इसमें एक हाँ वो जांच कर रहे हैं, जांच सब करेंगे। हाँ सर जांच के लिए कोई आपने एसआईटी बनाई है सर? देखिए जितना बड़ा हमारा पूरा यानी पुलिस का टॉप वहाँ गया हुआ है, डीजीपी वहाँ बैठे हैं, एडीजीपी साइडी वहाँ बैठे हैं, हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह वहाँ बैठी हैं, हमारे वहाँ के जो आईजी हैं साउथ रेंज के वो वहाँ बैठे हैं। एसआईटी होती है, कोई एक आध घटना होती है और जिसमें कोई एक आध ऑफिसर के नीचे 2-4 लोग लगा के उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, ये सब लोग बैठे हैं, इनके बैठने के बाद कोई एसआईटी का वर्ष बचता नहीं। एक करके बस अब 2-3 हाँ एक मिनट अरे एक करके सबका मैं जवाब दूंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं, चिंता मत करो। सर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कह रहे हैं कि अधिकारी अगर एक्शन लेते तो इस तरीके की हिंसा ना होती, इनपुट था लेकिन पुख्ता नहीं था, इसकी वजह से एक हिंसा हुई है। विधानसभा अध्यक्ष देखिए ये अगर का विषय नहीं हुआ करता, घटना नहीं होती तो सब ठीक था, और जो घटना हो गई है तो कितने अगर लगा लो। एक वो आ गई बात सारी। एक मिनट भाई एक करके ना, ऐसा थोड़ी है। दोनों विधायकों द्वारा मोहम्मद इलियास और मोहम्मद खान द्वारा जो रोया गया था विधानसभा के अंदर, वो रोए थे, मोनू मानेसर के खिलाफ उनके द्वारा सबूत भी पेश किए गए थे विधानसभा के अंदर। उन्होंने कहा था कि मोनू मानेसर एक तरीके से थ्रेट है, जो लून जिले के अंदर जो है वो लगातार जो टीनेजर्स हैं, मुस्लिम टीनेजर्स हैं, उनके खिलाफ जो है वो ड्रग्स के केसेस जो है वो नकली ड्रग्स के केसेस उनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं, और बहुत सी कार्रवाई जो है वो गोरक्षा के कोई देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है। आखिर हम मानो सरकार के अंदर हमारा एक दायित्व है, पुलिस का अपना एक दायित्व है, जिस किसी को किसी इन्वेस्टिगेशन में संतुष्टि नहीं होती है, इसके आगे कोर्ट्स भी हैं, उनका कोई रास्ता उन्हें बंद नहीं किया है। कोई अगर सबूत देते हैं और हम कार्रवाई नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फर्जी आरोप प्रत्यारोप से हम सबको बचना चाहिए। हाँ चलिए एक सेकंड, मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, मुख्यमंत्री जी 11 साथियों के प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं, उन्होंने स्वयं कहा मैं और भी उत्तर दे, कृपया इनके पास माइक है और सवाल पूछना चाहते हैं वो अपना माइक ऑन छोड़ दें, अभी कर लें पर उसके बाद ना करें,
तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। जो लोग खड़े हैं और अभी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो थोड़ा सा इतना अपनी वो दिखाएं कि खड़े रहें, बोले मत। तो जब बैठ जाएंगे सारे तो मुख्यमंत्री जी समझ जाएंगे कि हो गया। देखिए, अगर कोई, मेरा क्या कहना है, अगर कोई ऐसी कंक्रीट ऐसा कोई विषय है जिसके बारे में कोई मुझे जनता को आपको बताना है, आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचानी है, तो विषय। कई बार हम भी विषय ऐसे पूछते हैं जिसमें से आप क्यों बोल रहे हैं? लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि लोग जो जा रहे हैं उनसे भी निकले लोग निकले हैं, सब क्या उनसे अपील करेंगे सुरक्षा के भाव को लेकर? क्या नहीं, मैंने बताया ना कि हमें सबकी सुरक्षा देने का हमारा काम है। हम सबसे अपील करेंगे कि शांति से वहाँ रहें और आपसी भाईचारे में जो वहाँ सब प्रयत्न हमारे हो रहे हैं, हम दोनों पक्षों के लोगों को बुला करके बातचीत भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि दोनों पक्षों के सारे लोग एक दूसरे के विरोध में, एक कोई ग्रुप होता है कई बार इस प्रकार का मिसक्रिएंट्स का, अब उसको समझाने के लिए भी कुछ लोग उसको समझाते हैं, कुछ अपने आगे बढ़ के गलतियां करते हैं। तो ये समाज के संतुलन बढ़ाने के लिए आपसी भाईचारे की बातचीत ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। मैं अंत में एक दो चीज़ें और बता रहा हूँ जो हमने निर्देश दिए हैं। पहली बात तो ये है कि इस प्रकार के मामले में जैसे मीडिया का विषय होता है, एक होता है, लेकिन कुछ लोग गैदरिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसमें स्पीचेस जो हैं हेट स्पीच देते हैं। हमने निर्देश दे दिए हैं कि अगर कोई हेट स्पीच देता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी ही है। हमने, कोई भी व्यक्ति हो, कोई हेट स्पीच दे, उसके खिलाफ कार्रवाई करो जो बनती है। All right, that is Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar answering questions to the press as far as the violence in Haryana is concerned. There's also a political blame game, as you know, and Haryana Chief Minister saying he's taking stock of the situation. He has given out all the answers to the press right now in this very important press conference that he just addressed. We're bringing you visuals on your screens right now of all that is happening across Haryana. We're slipping into a short commercial break. This remains to be our top focus. Viewers, stay with us. You are watching India Today. In less than 2 months from now, the new iPhone 15 will be on sale across the world. While Business Today TV had reported on Friday about the price of its high-end models crossing the 2 lakh rupee mark for the first time, BTTV has got hold of more details about the much-anticipated Apple handset. It's likely to have the smallest bezel yet and could be rid of the infamous notch. Apart from the all-screen upgrade, the iPhone 15 and 15 Plus will also come packed with major camera improvements, and the traditional Lightning connector will give way to the faster USB-C. Tech Today's Danny De Cruz has more on all the new features expected. Danny, take it away. The new Apple iPhones are coming soon. Most likely, they will be here by September. So a new report has leaked a lot of information about the iPhone 15 series. So let's start with the more affordable iPhone 15 and iPhone 15 Plus models. The biggest change coming to these models is that Apple will finally do away with the notch. Both the iPhone 15 and iPhone 15 Plus will get the dynamic island, which was last seen in last year's Pro models. The cameras are getting a massive upgrade too, along with the performance. And yes, gone are the days of Lightning port. All new iPhones will be getting the USB Type-C for the first time. Now on to the Pro models, in which Apple is replacing the shiny frame with titanium, so your new iPhones will be strong too. The displays will also be better because of thinner bezels, and Apple is giving the camera hardware a substantial boost. The performance alone will make the iPhone 15 Pro models a compelling upgrade. They will become the first smartphones to use a 3nm chipset. All these upgrades make the new iPhone 15 models a good upgrade, but you will also have to shell out more money. Some models may even cross the rupees 2 lakh price point in India. All right, thanks for that, Danny.
Chetan, I'd like to say we've never said we want to be asset light. The reason in 2014 was not because we wanted to be asset light, because if you remember, our original decision in 2014 was to do the investment ourselves. We were going to have all this Gujarat investment on ourselves, on our books. So we had no intention of being asset light. We became asset light because we got an offer from Suzuki, which when we finalized it, came out so much in our benefit that we said, okay, we'll not have these assets on our books, but we will get a lot of extra benefits by doing this arrangement. So asset light was never our intention. This arrangement was made to get extra benefits more than what any other company in the world gets. And we got those benefits. Right. Also, sir, what happens to the domestic market for Suzuki and Maruti both combined? Will Suzuki take a hit in any way, or will Suzuki's identity in India will be a little, diminished with this announcement, or are you looking at a separate plan for Suzuki? Maruti is a Suzuki subsidiary. The presence of Suzuki in India is entirely through Maruti. Okay, they have their own battery manufacturing plant, but otherwise their presence in India is actually all through Maruti. And anything which is done in the best interests of Maruti is also in the best interests of Suzuki. Both companies have to rise together. We can do things which will be in the benefit of Suzuki, but not in the benefit of Maruti. But that will ultimately hurt Suzuki in the long run. So Suzuki is very conscious of this fact. And this decision is a joint decision taken with the Suzuki management and us to make an arrangement which will be to the mutual benefit of both, but especially for Maruti and Maruti shareholders. Right. Okay. Also, sir, the big question that your shareholders would ask you, what should the shareholders do now? Are they in for some kind of troubles, or is this a happy news for them, sir? We will, after the board meeting discusses, the mode of buying the shares, go to the shareholders, explain to them what I'm talking to you about, the whole rationale of this, and what we think should be the best way of buying the shares from Suzuki. And then, of course, it's the shareholders' decision whether to support that or not, because we need a majority of the minority shareholders to support whatever recommendation we make. We cannot take all these decisions without the approval of the minority shareholders. So sorry. You are watching
India Today. Communal flashpoint at Delhi's doorstep. Amidst the flames and rioting. India Today reporters fearless on ground. एक्सक्लूसिव विजुअल कि कैसे पत्थरबाजी इस समय यहाँ चल रही है, माहौल पूरा तनावपूर्ण हो चुका है। Facts, questions and first-hand reports. The charred vehicles that lie testimony to the kind of attack. Amount of arsoning that happened is proved from the visual that you right now see. 100% accuracy amidst the blaze. Police officers are combing in the area and that is why the situation is under control. We track the face of every story. इन तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। This is the kind of situation you see on the ground in Gurugram. India Today, India United. Hello and welcome. This is a special broadcast that we are getting for you from the violence hit areas of Mewat and subsequently Sona and Gurugram. Now the Bajrang Dal and the VHP has upped its ante over the riots that took place in Nuh. Amidst the violence, the Hindu group is now protesting over the violence which is right now further escalated the tension in the national capital. Right there you can see in your visuals, these are Bajrang Dal Karyakartas, Vishwa Hindu Parishad Karyakartas who have blocked the Badshahpur Toll Plaza, which is the connecting point between the national capital and Faridabad of Haryana. And right there you have the Bajrang Dal Karyakartas sloganeering, holding Bhagwa flags and sitting on the road, literally blocking the lane which heads towards the national capital. Before this, there was another attempt done by the VHP Bajrang Dal Karyakartas to stop the movement of the traffic coming from the national capital towards Faridabad. Bajrang Dal Karyakartas, the VHP Karyakartas raising slogans and Jai Shri Ram slogans being raised. The toll plaza lanes have been blocked, you can clearly see, and the Haryana police remains mute spectator of the agitation which is unfolding on the toll plaza on the borders of the national capital. With video journalist Raja Kumar, this is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi. इस वक्त मैं नूह चौराहे पे हूँ, तो उसके बाद पुलिस यहाँ से किसी नई हिंसा की जानकारी नहीं मिली। उसके बाद हाँ, पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 22 एफआईआर अब तक नूह इलाके में दर्ज हुई हैं। और कल हमने देखा था कि इन तमाम इलाकों से जो ये सामने आप सारा, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त हिंसा हुई थी, तो इन तमाम इलाकों से पुलिस ने कई लोगों को डिटेन किया था। बाकायदा बस लेकर के पुलिस चल रही थी, साथ में बड़ी संख्या में पुलिस की टीम थी, तमाम आला अधिकारी थे, एडीजी यहाँ पर मौजूद थी और उन एक एक करके जो पहचान जिसकी हो रही थी उसको डिटेन किया जा रहा था। जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल रहे हैं या जिसकी पहचान हो रही है उसको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लगातार कार्रवाई जारी है। इस पूरे इलाके में अभी भी धारा 144 लागू है और दूसरी तरफ इंटरनेट सेवा यहाँ अभी भी बंद है। रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवानों की यहाँ पर कई बसें यहाँ पर आई हुई हैं और देखिए सब उतर के अपनी अपनी पोजीशन यहाँ पर लेते हुए, चूंकि इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि यहाँ पर उपद्रवी फिर से आकर स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। धारा 144 इस पूरे इलाके में लागू है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं और दूसरी तरफ एक बस दूर से जाती हुई दिखाई दे रही है जो कि हरियाणा पुलिस की है। वो भीतर अंदर की सड़कों के भीतर जा रही है, चूंकि अलग अलग जगहों पर तैनाती बेहद जरूरी है। वो कई संवेदनशील इलाके ऐसे हैं जहां पर इनकी मौजूदगी होना यकीनन मौजूदा
मौजूदा वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसी वजह से एक तरफ हरियाणा पुलिस की एक बस अंदर की तरफ दाखिल हुई है और दूसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के ये तमाम जवान इस वक्त यहाँ पर अपनी अपनी पोजीशन लेते हुए इस वक्त नूह में हमारी मौजूदगी है। और अलग अलग रास्तों से होते हुए जब हम यहाँ पर पहुंचे तो पूरी तरफ चारों तरफ सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। अजीब सी खामोशी इस वक्त नूह में खड़े होकर जो हम महसूस कर पा रहे हैं। आपको बता दें, इक्का दुक्का गाड़ियां जरूर चलती हुई नजर आ रही हैं। या तो यहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान हमें दिखाई दे जाते हैं या फिर यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान हमें नजर आ जाते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे इस पुलिस चौकी को जब परसों शाम को फूंका गया था तो फिर इसके अंदर की तस्वीरें क्या बोलती हैं वो आपको बताना चाहेंगे। आप देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा हिस्सा अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसको देखकर अब अंदाजा लगा पाए कि यहाँ पर क्या कुछ रखा हुआ था। जितने भी सामान थे, अगर आप महेश इधर से अंदर की तरफ आ पाए, जो भी सामान इसके भीतर था वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है, जैसा कि तस्वीरों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं। Bajrang Dal leaders and VHP workers hit the streets of the national capital, calling spade a spade. Security has also been beefed up and neighboring Noida has also been put on high alert. Not just this, the family of victim who was killed in the violence stormed roads of Panipat seeking justice. At least 6 people were killed in the riots that rocked the state of Haryana. जो हमारा लड़का गया था परसों से सेवा में गया था, देश सेवा में, और बजरंग दल से जुड़ा हुआ है 1 साल से। बहुत अच्छा लड़का था, किसी चीज़ का ऐब नहीं था, बहुत अच्छा था, परिवार में अकेला था। और हमने नया चाहिए, जांच चाहिए, सख्त कार्रवाई चाहिए, सख्त चाहिए। अभिषेक के ताऊ है, क्या मांग करते हैं अभिषेक के बारे में? इंसाफ चाहिए ना, जैसे मारा गया ऐसे उनको फांसी दो, चाहे मारो। हमने रुपयों की वो नहीं है, अगर रुपये देने हैं वो लेना है, बस हमारा ये इंसाफ मिलना चाहिए। अभिषेक कब से जुड़ा था? धार्मिक था कुछ, जैसे बजरंगी लगा रहे इसके पीछे? धार्मिक था, साल भर से जुड़ाया था। तो क्या मानते हैं ये जो दंगे हुए, ये जिम्मेदार कौन है इस चीज़ का? जिम्मेदार तो प्रशासन है। प्रशासन ने जब ये पता लगा भाई वहाँ ऐसा दंगा होगा, प्रशासन ने क्यों नहीं वो करी वहाँ? मेरे पुत्र में 5 साढ़े 5 बज गए जी। मेरे पुत्र ने मुड़ के मेरे नाल कोई गल नहीं करी, ना फोन चुक्या। मेरा पुत्र कला कमाना थी जी, मेरा पुत्र कला कमाना थी जी। सर, हमें जो है मांडीगढ़ हॉस्पिटल से सूचना मिली कि भादस गांव से कोई डेड बॉडी आई है, तो हम यहां से गए और जो है वहां हॉस्पिटल में जाकर के देखा तो वो हमारा भाई था जी। तो कहाँ कहाँ चोट लगी थी, कैसे उसकी मौत हुई, किसी ने बताया? उसके सिर पर चोट लगी थी और कुछ लाठी डंडों से जो है ना पैरों में, जांघों में भी जो है कि वार किया था। Monu Manesar, the accused in the alleged cow smugglers killing in Bhiwani this year, is back in news. Allegedly, there was a social media video that went viral where Monu Manesar suggested that he will be attending the rally that was taken out by VHP and Bajrang Dal in Nuh. He, however, didn't attend the rally. Exclusively speaking to India Today, Monu Manesar said the same, that he was not a part in the rally and that the rally was fired upon by AK-47 rifles. He has also blamed the Muslim MLAs of Nuh for the violence, which includes Congress MLA Mamman Khan. Listen in. मोनू, सीधा सवाल पर आते हैं कि नूह में जो भी हिंसा भड़की है उसमें आपका नाम सामने आ रहा है। मोनू, ये जो भी नाम ले रहे हैं, जो आपने वीडियो देखी है, उस वीडियो में कोई भड़काऊ बयान या कोई भी भड़काऊ चीज उसमें तो है नहीं। लेकिन जो भी गो तस्कर है, जो वहां पे क्राइम करते हैं, ये सब उनका करा धरा है। साइबर क्राइम थाना फूंक दिया उन्होंने, सब उनकी बदौलत है। पर जो पिछली साल जो घाट मीका का इंसिडेंट हुआ नासिर जुनैद वाला, उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव था। फिर ऐसे में आपका वीडियो आना उसने उकसाने का काम करा है। कई जो आपके वीडियोस पे रिप्लाई आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके वीडियोस ने जो है वो उकसाने का काम करा है इस यात्रा में? कोई उकसाने का कार्य नहीं किया, ना मैं उस यात्रा में गया, क्योंकि हमारे अधिकारीगण थे उस यात्रा में, मैं था ही नहीं। हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हैं, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी सीधा फायरिंग
की गई है, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? हमारी हिंदू बहन बेटियों पर सीधा फायरिंग, और ये हिंदू समाज बिल्कुल नहीं सहेगा कि एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक तरह से पूरी तरह घेर कर गोलियां चलाना, जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं और मेरे साथियों से मेरी बात भी हुई है कि 47 जैसे अधिक मतलब आधुनिक हथियारों से भी गोलियां चलाई गई हैं, लॉन्चर भी चलाए गए हैं, जो हमने सुना है, हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने बताया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लेकिन अब ये जो 5 मौतें हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आपका वीडियो आया था और प्रशासन जो है उसको पता होने के बावजूद भी पुख्ता इंतजाम नहीं करे, तो क्या ये आपके भाषण को जिम्मेदार माने या प्रशासन की लापरवाही को माने? इसमें सारा जिम्मेवार वहां के मुस्लिम विधायक। कौन है ये मुस्लिम विधायक? आपने देखा होगा, उनकी न्यूज आ रही है, मामन खान है और कई विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मतलब मुस्लिमों को कह रहे हैं मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। लड़ाई लड़नी है तो जंग पे जाओ ना, यहाँ पे क्या लड़ाई लड़े हो? तो आप वहां उस यात्रा में थे या नहीं थे? एक आखिरी सवाल मेरा आपके लिए था, क्या वहां आप जाने वाले थे, आपको रोक दिया गया? आपने क्यों लास्ट टाइम पे प्लान कैंसिल करा? मेरा लास्ट टाइम पे प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इसलिए था, मेरे से प्रशासनिक अधिकारियों का, मेरे अधिकारियों के पास मैसेज आया था और मेरे पास भी मैसेज आ गया था कि भाई साहब आप जाओगे तो वहां पे मतलब माहौल बिगड़ सकता है। तो मैंने सोचा कि हमारे मतलब यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, हमारे मंदिरों में पूजा होनी चाहिए, तो हम इसी वजह से नहीं गए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तो वहां पे माहौल खराब हो सकता है। सोशल मीडिया के द्वारा कोई सिलेंडर फोटो लगा रहा है कि हम बम से उड़ा देंगे, कोई बम का फोटो दिखा रहा है हम उड़ा देंगे 47 से, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। Accused in the killing of 2 alleged cow smugglers and cow vigilante, Monu Manesar has an ongoing feud with Congress MLA from Nuh, Mamman Khan. Mamman Khan had earlier openly threatened Monu Manesar that if he comes to Mewat, he will face the music. He had spoken about this while he was addressing the Haryana Assembly. आप बैठ जाइए, डर जा तू, जरा जी बैठो, बैठ जा, इतना बड़ा नहीं है अभी, तू बैठ जा अपना। ये मोनू मानेसर दिखाता है कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात के हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। भाई डर जा रे, जब बोलिए क्या होगा भी मेरा। ये किस आधार पर हथियार दे रखे हैं आप लोगों ने? क्या मुसलमानों को मारने के लिए दे रखे हैं आपने? ये जो 5 मौतें हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आपका वीडियो आया था और प्रशासन जो है उसको पता होने के बावजूद भी पुख्ता इंतजाम नहीं करे, तो क्या ये आपके भाषण को जिम्मेदार माने या प्रशासन की लापरवाही को माने? इसमें सारा जिम्मेवार वहां के मुस्लिम विधायक। कौन है ये मुस्लिम विधायक? आपने देखा होगा, उनकी न्यूज आ रही है, मामन खान है और कई विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मतलब मुस्लिमों को कह रहे हैं मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। लड़ाई लड़नी है तो जंग पे जाओ ना, यहाँ पे क्या लड़ाई लड़े हो? मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है, वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को